शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्रं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् म्यूजिक पाछळ के आकडा A very good morning to one and all. Good morning all. सुप्रभात सभी को। आज के इस नेशनल वेबिनार ओबेसिटी मल्टी मिरर अप्रोच में आप सभी स्पीकर्स का और वैद्यों का बहुत बहुत स्वागत है। आयुष दर्पण के द्वारा आयोजित इस ओबेसिटी मल्टी मिरर अप्रोच जो एक ओबेसिटी एक यूनिक टॉपिक है और ओबेसिटी की अगर हम बात करेंगे तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन के 13% जो है वो इसका प्रिवेलेंस रेशो है। तो इसी के चलते हमने इस विशेष नेशनल सेमिनार का आयोजन किया है। As you know all about the Ayush Darpan Foundation, so it is in Dehradun, Uttarakhand. Dr. Navin Joshi is the founder of this foundation. I request Dr. Joshi sir to welcome all the dignified personalities present over here for this obesity multi-mirror approach. So Dr. Joshi sir, please. Yes. Thank you, Madam Shilpa Yerme ji, for organizing such a good event. And as you all know that the lifestyle is very much problem during this era, and everybody is suffering from this metabolic disorder in which obesity is very common. So by choosing this topic, it is a very required topic, not only for our Ayurveda people, but also for the students and the doctors who are practicing in their clinics. So during the COVID era, we all know that this lifestyle related problem and obesity is a very common problem. So I welcome to all the dignitaries who are present here, especially Dr. Manisha Suryawanshi, Yoga and Obesity, who will deliver a lecture. Vidya Anuradha Roy, Vidya Meenakshi Randive, who will deliver her talk on physiological approach of obesity. Vidya Anuradha Roy, who deliver her approach on clinical approach of obesity in gynecology. Vidya Ballal, whose topic is obesity and menstrual disorder. And Vidya Manu, which will deliver her lecture on obesity approach through Ayurveda. Vd.Nilesh Deshmukh, who will deliver his lecture on obesity and integrative approach. Vidya Manisha Suryawanshi, Yoga and Obesity. Vd.Rajkala Patil on Panchkarma, a therapeutic strategy for obesity. Vidya Asokan, Obesity and Infertility. Vidya Avanti Nitsure, Child Obesity, Closer Look in Stri Roga. Vidya Nilesh Londhe, Obesity and Metabolic Disorders. And Vidya Santosh Suryawanshi, Ahara Sevan Kal Sthulata. So I welcome all of you on this Ayush Darpan platform, and I hope that your precious presentation will definitely enlighten our participants' knowledge regarding the obesity. As this program is live on Facebook page, as well as sometime after, it will be also broadcasted at the YouTube network. Ayush Darpan Foundation Trust is a trust which is organizing such an event on different social media platforms, as well as offline and online program. From March 2020, we are organizing these programs on the social media platform through the e-webinars. And this is the one of the webinar series which is now just going to air on both the social media platforms. So I request all the participants that
they can join these sessions. Ayush Darpan magazine is also in front of your this monitor. You just did the different editions of the Ayush Darpan as well as different the souvenir which was published previously. And I am just giving a very good news to all of you that Ayush Darpan journal is now both published now continuously regular published in the form of the e-magazine as well as in the form of the journal. So these are the activities of Ayush Darpan Journal, Ayush Darpan Foundation Trust. We are organizing different classes in which Vidya Silva Yerme is organizing very beautifully the Stri Roga Paricharcha classes in which the Google form is there. If you are interested, you can join that form in which especially the Stri Roga Paricharcha, Stri Roga, the different questions as well as the different questions as well as different problems related with the Stri Roga is solved directly, as well as there are so many classes in which the different classes and one webinar series is also you just observe that different classes in morning time, the Madhav Nidan classes in again the Stang Hriday, as well as the Stri Roga Paricharcha, different lectures. Yesterday, many of experts you observe that they delivered their lectures, especially on the Stri Roga series. So this is a very good platform. So I request all of you to propagate this platform on your social media links. And I also request all of you who are watching in Facebook as well as in the YouTube channel to propagate this link on your social media platform so that our work will more explode through you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much for your nice introduction and briefing all about the activities of Ayush Darpan Foundation. So without wasting much time, as we are very much eager to hear all the experts from all over India, I first welcome Dr. Meenakshi Randive, who is the professor in Kriyashari Department, Tilak Ayurveda Mahavidyalaya, which is the well-known Mahavidyalaya in Maharashtra. So I welcome Dr. Meenakshi Randive, who is the professor in Kriyashari Department and working since last 25 years in the department. She is MD PhD guide, also a very renowned speaker in the field of Kriya Sharir, and she has published various books, research articles. She has received an Excellence in Teaching Award, Best Research Article Award, Best View Article Award, and examiner for various PG and PhD exam. She is also a member of staff selection committee of different institutions, a resource person for research methodology workshops in the different institutions. So I think today's our speakers are very well in their experts in their area in the field of Ayurveda. So I welcome Dr. Meenakshi. Ma'am, please start your session. And once again, I welcome all the viewers and the Vaidyas of this session. Yes, thank you, madam. Good morning, all. Good morning, sir. Good morning, Yerme, madam, Joshi, sir. Thank you very much, Ayush Darpan Foundation, Joshi, sir, and you, ma'am, for giving me this opportunity to share physiological some views about obesity. Thank you very much, madam, and I thank all our viewers, our listeners. Can I share my screen, ma'am? You can share. Yes, one second. Sorry. Yeah. Is my screen visible to you? Yes, ma'am. Yes. Audible? Continue. Yes. Thank clearly. you very much, madam. Yeah, thank you very much, madam. My today's lecture topic is physiological approach of obesity. Madam has given me this topic, and I will be sharing only about the modern part of this obesity and the objectives of this 30 minutes, which I'll be sharing, will be what is obesity, epidemiological variants like age, gender, then diet, genetic aspect, what is the role of those in causing the obesity. Then leptin is a secretion secreted by a gene and its functioning hypothalamus, especially
in the appetite, regulating appetite, and assessment of obesity. And all these points I will be covering as per modern aspect. Obesity. One second, ma'am. My screen is fully visible to you? Yes, ma'am. Yes. You can maximize it. Just. Yeah, actually it is maximized. So can you see you are screen sharing? Yes. It is clearly visible. No issue, actually. Okay. Yes. Okay. 1 second. I'll just reduce thumbnail video. Should I reduce thumbnail video? Should I reduce okay. thumbnail yes, you video can. so that you can, ma'am. Yes. Yeah. Yes. Thank you. Yes. Thank you. Obesity is a principal public health concern and ranked as the 5th foremost reason for death globally. Overweight and obesity are one of the lifestyle illnesses, health concerns, and contributors to numerous chronic diseases like cancers. We can see the cancer has evolved, then diabetes, metabolic syndrome, and cardiovascular diseases. Actually, obesity, overweight, in these conditions, there are multiple toxins generating in the body, and which are called as oxidants. As we all know, nowadays we are talking more about antioxidants and oxidants. So oxidants are formed all in overweight and obesity. And these oxidants are giving rise to different pathological conditions like cancers, diabetes, and all these diseases. World Health Organization predicted that in 2030, there will be 30% of deaths in the world will be initiated with lifestyle diseases. So let us start thinking of this. Actually, this is late. Obesity has spread worldwide, but still there is never too late. So let's start thinking, let's start making awareness in people, in students about the obesities, and let's reduce this problem, burning problem. This can be prevented. All these diseases, obesity can be prevented through suitable identification and addressing of associated risk factors and behavioral involvement policies. So detecting and diagnosing obesity as early as possible is a crucial thing so that we can stop further damage. All this presentation, all this topic, I have taken it from Park Preventive Medicine, then Robbins Pathology, and WHO site, and Subir Chaudhary Physiology. This presentation, this topic is taken from these books. So defining the obesity, it is defined as abnormal growth of adipose tissue, especially adipose tissue, due to an enlargement of fat cell size, which is called as hypertrophic obesity. So enlargement of fat cell and increase in fat cell number. So size and also number increase. Hyperplastic obesity, which is called, and or combination of both. And it is always expressed in body mass index BMI. WHO still uses this parameter, and new parameters are also have come up. As per Robbins, he defines as a state of increased body weight due to adipose tissue accumulation, and that is of sufficient magnitude to produce adverse health effects. So this is obesity. Overweight is usually due to obesity, but can arise from other causes. For example, abundant muscle development, fluid retention. These are also other causes. Obese individuals not only has excess fat store, but uneven fat distribution in the body. 1 second, slide is not moving.
Yeah. Ma'am, just close it and share once again, so it will be Yeah, easy. yeah. Sorry. Yeah, 1 second. Yeah, 1 second. Yeah. A classification as per WHO, you can see this chart. You must have seen many times. Normal weight, it is given in the BMI. Normal weight is 18.5 to 24.9 average. Underweight, less than 18.5. Overweight, 25.2, 29.9, mild increase. Then obesity, greater or equal to 30, and obese 1, 2, 3. So severe obesity is greater or equal to 40. This criteria is given by the WHO. Now coming to the epidemiological determinants, in what age, gender, it is there, can be seen. Coming to first, age. Obesity can be seen at any age and mostly increases with the age. About 1/3 of obese adults have seen so since childhood. And it is well known that most adipose cells are formed early in their life. Slides are not moving. Okay, actually in front of me they are moving. Yeah. Is it? Now, gender? No. Gender? Epidemiological determinants? No, ma'am, no. Gender? It's not No? there. No. Because I it think is moving. you just Yeah, close it is. once again, because sometimes it happens due to internet issue. So. Okay, just check, ma'am. Please, once again. Yeah, see. Can you see this chart? No, This ma'am. chart is no. No. Can I go in new share again? Yes. You just close the PPT, stop sharing, and once again share. So. Okay. Yeah. Stop sharing. Okay. करके फिर से कीजिएगा. Okay. Once again, now share. Share the screen. Yeah. Yeah, is it visible, ma'am? No, 1 second. Please wait. Abhi, just move the slide. Yeah, can you see now? No, ma'am, no. Epidemiological determinants? No. No? Yeah, 1 second. Just try once again, ma'am, please. Yeah. Or otherwise you can determinants. Or otherwise I will talk. Yeah. Can you see, ma'am? Without PPT, you can. Without PPT, you can. Okay, ma'am. Age. So we have seen age in the childhood. It is seen, and as age increases, this also increases, and 1/3 of the obese adults we can see they are seen so their childhood, and this tendency remains there. Hyperplastic obesity is seen in the latter age, and which is very difficult to treat actually. Then gender. Women generally have higher rate of obesity than men, though male have overweight tendency than female. But obesity, the next step, is seen in women. In one study in USA, Framingham, men were found to gain the weight mostly between the 29 to 35 years of age, while women, they gain weight between 45 to 49 years of age, the menopausal age. BMI increases with successive pregnancies. This is also observation, and near about 1 kg per pregnancy. On the other hand, in developing countries, consecutive pregnancies at short intervals are often associated with weight loss rather than weight gain. The next factor, the genetic factor. There is genetic component in etiology of obesity. The twin study has been done. The twins, they reared in this similar environment, but still there was a weight gain. Weight was identical in both the twins. So there is a genetic factor definitely.
The profile of fat distribution, especially significant heritability, abdominal fat tendency, these have been seen in different studies they reveal. So genetic factor there is definitely playing a role. Physical inactivity, as we all are aware of this physical inactivity, it causes the obesity, overweight. Regular physical activity is protective against unhealthy weight gain. Sedentary lifestyle, sedentary occupation like teacher or working on computers, IT professionals, then inactive recreation like watching TV for hours. This type of lifestyles, they are prone to give the obesity. Physical activity and physical fitness are important modifiers and mortality and morbidity related to overweight and obesity. So physical activities and fitness should be there, should be maintained. We should try to maintain. Socioeconomic status within some affluent countries, in those countries, affluent, rich countries, it is seen that lower socioeconomic groups, obesity is seen there. Then familial tendencies, family, not only genes, but other their practices, eating habits are seen, the familial tendencies. Endocrine factors, they play important role. May be involved in occasional cases, example, Cushing's syndrome, growth hormone deficiency. So in such conditions, obesity is seen. Eating habits, these are very important. Eating in between meals, preference to sweets, refined foods, and fats. They are contributors. The composition of diet, periodicity with which it is eaten, and amount of energy derived from it are all relevant to the etiology of obesity. A diet containing more energy than needed may lead to prolonged postprandial hyperlipidemia and to deposition of triglycerides in the adipose tissue, resulting in adiposity. Energy dense, micronutrients, food, and beverages. These are the things. Psychological factors, they play important role. Emotional disturbances are deeply involved in etiology of obesity. Overeating may be symptom of depression, anxiety, frustration, and loneliness in childhood as well as adult life. So, exclusively obese individuals are usually withdrawn, self-conscious, lonely, and secret eaters, maybe. An insight into the circumstances in which the obesity has developed is essential for planning the most suitable management. So, we should see what is the cause. Then alcohol consumption is seen a positive factor in men. Ethnicity, ethnic groups, many industrialized countries are susceptible to develop obesity. Evidence suggests that this may be due to genetic predisposition to obesity that only become apparent. This may be predisposition, but if you expose them to affluent lifestyles, then it is prevalent. Then few drugs like corticosteroids, contraceptives, insulin, beta-adrenergic blockers, etc. promote weight gain. So drugs. So there are many causes. This is multifactorial, many causes. And if we see the cause and if we diagnose proper cause, then we can diagnose it properly and we can arrange the treatment or lifestyle changes. In few weight gain, we can arrange the lifestyle changes and this can be prevented to much extent rather going towards the treatment. So early stages diagnosis is very important. Now coming to the etiology, physiology, genetic, environmental, psychological, and disorder of energy balance playing important role in the obesity. Intake
and expenditure are finely regulated by neural and hormonal mechanism. In homeostatic condition, it is maintained intake of food and expenditure of energy, energy intake and energy output. They are maintained properly in homeostatic condition. And if homeostasis is disturbed, then this is disturbed. The body weight actually it is maintained in narrow range. This fine balance is maintained by an internal set point, or it is called as lipostat. It is internal set point, or it is called lipostat, that can sense the quantity of energy, adipose tissue, and appropriately regulate food intake as well as energy expenditure. So this lipostat, which is internal set point, which is set into the hypothalamus, it regulates this. Recently, several obesity genes are also identified. We will not go into genetics. A key player in energy homeostasis is LEP gene, and its product is leptin. So leptin, this unique member of cytokine family secreted by adipocytes, regulates both sides of energy equation, intake of food and expenditure. So LEP gene, its product is leptin, and this is maintaining intake of food and expenditure of energy with other factors. So this is important. The net effect of leptin is to reduce food intake and enhance expenditure of energy. So reduce food intake. Whenever the body is in homeostatic condition, this leptin is working properly. Body weight are complex neurohumoral mechanism that regulate energy balance. Mechanism, this maintaining the weight gain or weight maintenance is maintained by three components. The first one is afferent system, which is released, which generates signals from various sites like leptin, adipose tissue, especially, then ghrelin and peptide. Ghrelin is secreted by stomach, which is inducing of appetite, and peptide, which is giving satiety. And leptin is secreted by adipose tissue. So these are giving apparent sensations. Out of that, peptide YY, which is secreted, released postprandially by endocrine cells in the ileum and colon, and which gives satiety signal. Ghrelin is stimulating the appetite. The second is hypothalamus processing system known as central melanocortin system, which integrates the different types of afferent signals and generate efferent signals. So hypothalamus central melanocortin system is integrating both, taking afferent signals and releasing efferent. And the third one is efferent system that carries the signals generated in the hypothalamus, which control food intake and energy expenditure. The output of leptin is regulated by adequacy of fat storage with abundant adipose tissue. This leptin is regulated by adequacy of fat storage. It depends on that. Whenever there is a less fat storage, it will release less in quantity, so that appetite can be increased and man or person eats more. And when adipose tissue is proper or little bit more, then it will secrete more and it will regulate the appetite, so that energy consumed will be regulated. So this is the main mechanism. We will see few names of the peptides, then receptors, but the main key role is by hypothalamus, and this center get regulated mainly by leptin, and it depends on storage of fat in the adipose tissue. Stimulated, leptin secretion stimulated, and hormone travels to the hypothalamus, where it binds to leptin receptors on two classes of neurons. These neurons, one class of leptin sensitive neurons, produce the feeding inducing
which are called as orexigenic neuropeptides, neuropeptide Y, NPY, and agouti related protein. This is AGRP. And other class, this is the first which I have taken the names now, that is feeding inducing, and the other class of leptin receptors bearing neuron produces anorexigenic peptides. Alpha melanocyte stimulating hormone, alpha MSH, and cocaine and amphetamine related transcript. So other receptors are anorexing, and first one they are feeding inducing. Now, the actions of both these orexigenic and anorexigenic neuropeptides are exerted by binding to another set of receptors. These peptides they work by binding another set of receptors. The two most important being NPY receptor and melanocortin 4 receptor. Melanocortin 4 receptor is also called as MC4R. To which AGRP and these two, to which AGRP and alpha MSH and bind respectively. Leptin binding reduces food intake by stimulating production of alpha MSH. अभी अल्फा लेप्टिन में बताने वाली जो हो उसको मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि लेप्टिन बाइंडिंग अगर होगा, अगर उसने फूड इंटेक इंड्यूस करने वाला जो है उसको स्टिमुलेट किया, दैट विल कंज्यूम द मोर फूड, और उसने अगर इनहिबिट करने वाले रिसेप्टर को स्टिमुलेट किया तो फूड इंटेक विल बी रिड्यूस्ड. दिस इज द मेन फिजियोलॉजी. In individuals with stable weight, the activity of these pathways are balanced. Then where is the problem? When there is a pathology, there is the problem, and this balance disturbs. Leptin regulates not only the energy intake, but it also regulates the energy expenditure. How it does it? It stimulates the hypothalamus, and due to that, abundance of leptin increases physical activity, production of heat, and energy expenditure. Thermogenesis is probably the most important of the catabolic effects mediated by leptin through hypothalamus. Thermogenesis seems to be controlled in part by hypothalamic signals that increase the release of norepinephrine, means it will stimulate the hypothalamus to increase the release of norepinephrine from sympathetic nerve endings and in adipose tissue. So it will stimulate the nerve endings in adipose tissue, and in adipose tissue, fat cell express beta-3 adrenergic receptors that when stimulated by norepinephrine, these receptors in the adipose tissue, they are stimulated by norepinephrine. And what happens due to that? It causes fatty acid hydrolysis, and it releases the energy production from the storage. So leptin, what it does? It controls food intake and also it increases the activities. So this is the main physiology. In rodents, suppose mice, in the mice, disable leptin gene, अगर उसमें leptin gene को disable किया जाए, what will happen? It will increase his weight. These are the researchers. These mice fail to sense, उनमें leptin gene को disable किया है. What will happen? These mice will fail to sense adequacy of fat storage. तो उसका जो normal function है leptin का वो disable हो गया, and that mice will behave as undernourished and it will eat more. So this is the pathology. Mutations of leptin gene or receptor cause massive obesity in humans also. However, such patients are rare, though ये obesity जो है rare है. Mutations of MC4R gene, वो जो मैंने अभी बताया था, that will give the obesity. So leptin gene, MCR receptors, they will give the obesity. In few
people, there is leptin levels are high. So it is also called as leptin resistance. It can be seen in the obesity. When there is a obesity, when there is leptin levels are high in normal condition, it will regulate the weight. But where there is a leptin resistance, उसमें blood में leptin levels will be more, but obesity is seen. It is due to leptin resistance. So these are all the things which are playing role in the obesity, genetic makeup, then all other things. Then now coming to the assessment of obesity. Body composition is seen, like how is the body composition? The active mass, where muscle, liver, heart, this is called as active mass. Then fatty mass, fat, then extracellular fluid, blood, lymph, etc. And the connective tissue, skin, bone, connective tissue, etc. This is the body composition. Body weight is the accurate, it is not accurate measure of excess body fat, but it is widely used. And in statistics, we accept +2 standard deviation from median weight to the particular height is cutoff point for overweight, and +3 standard deviation for obesity. Normal weight जितना भी expect करते हैं हम, उससे +2 standard deviation is overweight and +3 standard deviation for obesity. We have seen the BMI also by WHO given, and that we can see. And even body weight is a measure of we can measure the fat, but that is not the actual, not accurate weight. Then for adult, few calculations can be seen. Body mass index, we have seen that, and it is calculated as weight in kg divided by height square in meters. Then Podendal index, in which height in centimeters divided by cube root of body weight in kg. This is also one index. Then Broca's index, which is also used, and it is very simple. It is height minus 100. Suppose a person's height is in centimeter 160, then minus 100. So 60 kg is proper weight for him. So this is a simple formula. Then Lorentz formula is also used. Copulence index, actual weight divided by desired weight. This is also taken. Then skin fold thickness, Herpendon's caliper are useful in this. Skin fold thickness. A large proportion of total body fat is located just under the skin. Since it is most accessible, the method most used is the measurement of skin fold thickness. The skin fold is measured, thickness is measured. It is a rapid and non-invasive method for assessing body fat. At different sites, the measurement is taken. The skin is taken into that Herpendon's caliper and it is measured. The different sites are mid-tricep, bicep, subscapular, and suprailiac region. In these regions, the skin thickness is measured with the Herpendon's skin caliper. The sum of these measurements should be less than 40 in boys and should be less than 15 girls. So if this means it is normal, and above this there will be excess fat. So this is also method. Only the drawback is of this method is poor repeatability. तो थोड़ा सा उस पर डिपेंडेंसी थोड़ा सा कम, उसका जो ये है स्टैटिस्टिक्स में उसमें थोड़ा सा कम होता है उसका वैल्यू, बट इट इज अ गुड मेजर ऑफ फैट अंडर द स्किन. It can be used, and in many researches it is used. It's a good method and even simple. Waist circumference and waist hip ratio is also measured. Waist circumference is measured at midpoint between lower border of the rib cage and iliac crest. It is unrelated to height
and correlates closely with BMI. So approximate index of intra-abdominal fat mass and total body fat, it gives waist circumference. And so with this, the risk factor, if it is increased, the risk factor of cardiovascular disease and other form of diseases we can sense. The waist circumference more than 102 in men, and women more than 88 centimeter. It increases the risk of metabolic complications. So these are few assessment techniques, and others are many other techniques are used. Total body water, total body potassium level, body density, measurement of fat cells. These are the other methods to measure the fats. So this is about, so I can conclude with this point that etiology, the causes are playing most important role in obesity. A good Vaidya or a doctor should see there only to best, he should rule out the hetus or causes of obesity and make the lifestyle modifications as per. If even with the modification of lifestyle, the weight is not controlled, then one should think of many Ayurvedic treatments are available and which has very good results. Nowadays, it has been established. So good Vaidya one should go to the Vaidya and take the proper treatment for obesity, overweight, so that other risk factors of the health and most dangerous diseases like cancers, diabetes can be prevented through Ayurvedic treatments. So here I would like to conclude the lecture, and I would like to thank our audience and Madam Shilpa Madam, Joshi Sir, Foundation. I'm thankful to them for giving me this, and I congratulate the foundation for arranging such a beautiful seminar and such a useful topic. Thank you very much, madam. If there are any queries, please you can contact me personally, and on my mail, I can give you I can answer wherever, if anybody has any doubt about this. Thank you very much, madam. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you very much. It was really Thank nice you, session because I think physiology is the most basic subject indeed, yes, and it is Thank having you. a role in every subject you, and every topic. So, yes, are there any questions, doctors? If there are questions, you can post in the chat box. After each session, we will have a question answer session. So it will be an interactive session because though it is a national seminar or webinar, but we often arrange interactive sessions on this platform. So I request all the doctors to post the questions regarding that particular topic. So we can take that questions after the session is over. So next, please post your questions if there are any. Moving forward madam, with our yes, ma'am. Madam, I can answer the questions. Can I take your permission and can I answer the questions afterwards? Yes, definitely. If there are, we can take in between the as we get time. We can take. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah. Yes. So moving forward with this our national webinar, obesity, a multi-mirror approach. I think obesity, just now, madam has told also that women's prevalence ratio is more in women's. And I think due to the life cycle of women, life cycle of the reproductive system, there are many issues concerned with the gynecology. And so I welcome with the Anuradha Roy for the topic like clinical approach of obesity in gynecology. Dr. Anuradha Roy, madam, is associate professor in the Department of PTSR, Faculty of Ayurveda, BHU Varanasi. So, madam is practicing and madam is in this field from last 15 years. She is a PhD in this MS Prasuti Tantra and Stri Roga. So, it's a great pleasure to, I think this is a very much important topic in today's era, much more important in every woman's life. So I welcome Dr. Anuradha, and we are looking. Lecture will be very much helpful to all the viewers and all the Vedyas.
in their routine practice. Yes, ma'am, please. Thank you very much, ma'am. Am I audible? Madam, am I audible? Hello? Shilpa, madam, am I audible? Yes, hello? yes, you are. Okay. Thank you. Yes, just for checking. Audible, ma'am, audible. Yeah. Thank you very much. Yeah. So at the very outset, I'd like to thank the Ayush Darpan organization for really putting up such a wonderful, topic of obesity, such a burning issue nowadays. And not only from nowadays, it's being a long back millennium problem which we are facing nowadays in different multimedia dimensions. So सबसे पहले तो मैं काशी से वाराणसी से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ for giving me an opportunity to share a few of my ideas and few of my way of looking into obesity, particularly relation to the gynecological aspect. Hello. Yes, ma'am. Continue, please. Continue. Okay. So this was all, and thank you very much to the organizing team, Joshi sir and Shilpa madam, for giving me an opportunity. So to start with, I will be talking about obesity and the gynecological conditions. My slides are moving or not? It is first slide, ma'am. Just it's first slide. Is first slides. Okay. Yeah, it's moving, ma'am. Yeah, it's moving. Yes. Okay. So just a second, ma'am. So whenever we come across any obesity patient, particularly in our clinics, so we come across a huge concern. A huge concern patient comes with to a clinic of, gynecology and obstetrics with a concern of fertility, with a concern of menstrual irregularities, breast concern. Puerperal conditions are also few of the concerns which they come across. PCOS is nowadays very much prevalent. Obesity and marital relation related issues, and also the social issue, as because it's being a taboo. So these are all the concerns which we face in our clinics. So in this 30-minute talk, we will be highlighting few of the facts and figures, the components of the obesity which are related to the reproductive health, and the obesity which impact particularly on the target organs, the endometrial blood flow, the ovary, ovarian follicle, and the oocyte, how they respond to the obesity, endometrium. And when we talk about the ARTs, how these ARTs going to, or it do respond to the obesity. And ultimately, when we talk about any clinics, a major group of this gynecology patient also are having bond issues. So all the pregnancy outcomes are related to this obesity, menopause, lastly. And the last thing which we are going to discuss is about the dietary impact of obesity on the reproductive health. So to start with the facts and figures, that obesity is a chronic disease which affects majority of the human population worldwide for the past few decades. And mostly it is seen that it is, associated with the metabolic disorders. And there are numerous and number of medicines which has been come out to be associated and to be helping obesity, but in a long run, few of them have been withdrawn due to the various side effects as heart disease and other conditions. But ultimately, which is the fact and truth, is that the non-pharmacological approach fighting this obesity is the major group which has to be highlighted, and it includes the food,
That is the intake limitation in the food intake, prevention of the, the energy engagement, and the increasing the physical activity. So these three non-pharmacological approach is true even today. And women with obesity are definitely having a high risk for the endometrial, ovarian, uterine, cervical, and the breast cancers. We are going to see in the coming slides. And increased BMI and the obesity are also being associated with various types of irregular menstruation, particularly anovulation and other, reproductive complaints which are coming to the clinics. And a recent meta-analysis on obesity and miscarriage also demonstrate the higher risk of miscarriages even with the patients of ART. So these are few of the facts concerned to obesity and the reproductive health. Now, effect of obesity on the reproductive system and particular an organ specific, if we say, now, first of all, we need to see what are the components of the reproductive health in relation to obesity, which are the, the important points which has to be noticed and has to be, known for that. The first component is the adipokine production, and the second is the lifestyle component. Now, before we go about the two things, first we have to know what exactly are these adipokines production, how these are going to produce and affect the particular target organ of the reproductive health. So if we see that adipokines are the signaling molecules, they are produced by the adipose cells itself, and their production varies as the variation in the adipose mass. This means as the mass is increased in a particular patient, these adipokines will also be more. Now, these adipokines, they may be important in obesity-related morbidity, and few of these adipokines which has been identified are the leptin, the tumor necrosis factor alpha, the interleukin-6, and the free fatty acid and adiponectin 8 to 10. These are few of the factors of these adipokines which has been pointed out and having a great role in the reproductive injury, I will say. So the abnormalities in these factors of adipokines may cause inflammation and the abnormal cell signaling, and which in turn, have an impairment in the cellular metabolism and function. Now, emerging evidences, they do have shown a link between these abnormalities in these adipokines and the abnormal reproductive function. For example, leptin may affect the reproductive function at the level of hypothalamus. We are going to see the pathway how this leptin is going to hamper the hypothalamus and the entire axis of hypothalamus, pituitary and ovarian, even the uterine axis, and both by providing the signal to initiate the reproductive maturation as well as to maintain the normal signaling of the entire axis. Now, this has been demonstrated in an animal model where the mouse are being made obese with the diet-induced obesity, and in which the hyperleptinemia causes the central leptin resistance and hypogonadism. That means any human or any living cell which has been exposed to the hyperleptin, for a long time, they causes hypogonadism. Now, variation in these adipokines between the stages of menstrual cycle, they do have the variation in the stages in the entire menstrual cycle, but that in which stage of this menstrual cycle and what variations do they take is still unknown, but it is possible that they may have the effect on the signaling of this hypothalamus pituitary ovarian axis, and which is important and needed for a normal oocyte recruitment as well as ovulation. And again, another work, they have demonstrated that the second one of this adipokine, that is the adiponectin signaling, may be important for the pre-implantation embryonic development and implantation. So the first factor, that is the leptin, it is hampering the ovulation
maturation, and the second factor, that is the adiponectin, they help in hampering the pre-implantation of this embryonic development. That means ultimately the pregnancy rate and the time for the pregnancy is being hampered. So it is again been seen that the elevated free fatty acid level are associated with the impaired oocyte maturation and the decreased chances of pregnancy. And the specific role for the various adipokines in the reproductive function are largely unknown, but the aforementioned examples we have just gone through suggest that they may provide an important link between the obesity and the pathologic reproductive function. So they do have a pathologic reproductive function. Firstly, if we say about leptin, the ovulation, the maturation and the rupture ovulation, and the second one in implantation window. Now, again, the second point, that is the physical activity, is directly related to the time of pregnancy. Now, what we see is that increased physical activity level were associated with the decreased time for pregnancy. This is very important. And even in obese women with a regular cycle, the time of pregnancy is increased compared to the women with a normal weight. This is again a very important point to discuss and to emphasize even in our clinical practice, that any patient who is coming to our clinic for infertility concern, the physical weight is a very important aspect to to be counseled and to be managed well, because these are not only going to hamper the ovulation but also the implantation. Then obesity and the impact of the endometrial blood flow. Now we are coming into the target organ specific. It has been studied and it has been seen that in this particular paper, if I refer to, it's from reproductive biology and endocrinology in the year 2013, which shows that the impact of obesity on the endometrial blood flow in women without polycystic ovaries. And the conclusion they have made is the obesity, that is BMI greater than 28, appears to exert a negative effect on the endometrial and subendometrial blood flow, which is based on a Chinese standard obesity mean, which shows, and this has been tried in ICSI outcome, that is again an ART. But our point here to highlight is that no doubt there is an endometrial and some endometrial blood flow difference which has been found in this particular study. But the important thing is that the group of patients were not PCOS. That means the ovarian functions were restored as per the inclusion criteria. But then also, because these patients were in the obese group, the study shows that there was an endometrial and some endometrial blood flow disturbances has been found. Now, the initial sign for obesity-related morbidity on the reproductive system in the practice, what we say is the patient coming with a complaint of anovulation, subfertility. And a recent translational work has demonstrated very important point that it's not only the BMI and the central body weight and the obesity which matters, but the quantity of visceral adipose tissue and the intrahepatic triglyceride content, which also have a very great role in predicting the metabolic risk as well as disease causing even in case of the female in the reproductive category. So this is very important. Now coming to CNS, that we have seen that the obesity has got a role on the CNS factors, but the exact pathway, how it does and how it hampers the entire axis is, they decrease the LH pulse amplitude and decreases the excretion of the progesterone metabolites. And because of that, in addition to causing the anovulation and an abnormal LH pulsatility, may affect the ovarian follicular steroidogenesis. We have seen exposure of some certain forms of this
fatty acids has done a hypogonadism. That means the steroidogenesis is being hampered. And ultimately what is happening is an abnormal oocyte recruitment, poor oocyte quality, the altered endometrial development, and lastly, the disturbed corpus luteum function. If we see entirely the reproductive function is being altered as because of this CNS alteration. Now, when we come about the ovary, ovarian follicle, and the oocyte, again, a study which has been conducted over the mice only, and it shows that a diet-induced obesity group of mouse model has been created, and the isolated ovaries of these obese mice and the second control group, non-obese mice, were isolated. That means they has been sacrificed, ovaries has been taken out, and they have been stained and seen for the apoptosis. Remarkably, when they have studied the ovaries which are being taken from the obese mouse, they demonstrated increased apoptosis in the cell of the ovarian follicle. I repeat, apoptosis particularly into the ovarian follicle. And the oocytes which has been isolated from the obese mice were smaller, and fewer oocytes were matured in comparison to that of the control group. Then we can understand the effect of this obesity on our ovarian function. Now, again, another study, Dr. Rapkers, he has shown that the high-fat diet is being associated with lipid accumulation into the oocytes, along with a marker of the lipotoxic response. Both of these studies are the Lancet studies, and they have proved the importance of, the obesity and this high-fat, consumption and the diet over the particular organ as well as the target structures. Now, again, to demonstrate a fewer, consequences of the factor, an experimental model where in vitro model obesity has been created, and the pre-implantation embryo, they have, embryos has been developed, and these pre-implanted embryos, they have been exposed with a large amount of this palmitic acid. This is again a fatty acid which has been detected in the uterine as well as the tubal fluid. So they have been exposed for the excess amount of this fatty acid, and this exposure have resulted into the abnormal embryonic expression, and particularly IGF-1. This is a genomic expression, and this receptor has been found to be abnormal, and which is responsible for insulin signaling in the embryo. And then they have carried forward this study, and they have transferred back this into a normal recipient mice, and this palmitic acid exposed embryos, when they grow into a normal recipient mice, but then also they have shown a growth restriction in the fetus. Meenakshi madam also have quoted that these fatty acids, they are responsible for growth retardation. They have experimentally evidenced that even though with the high BMI and this exposure into this palmitic acid, fatty acid exposure, when they have been transferred to a normal mice also, they have shown a growth restriction in the fetus, and the offsprings, they have demonstrated a metabolic syndrome. So coming to endometrium, is that the endometrium is yet another potential target for this abnormal obesity, and one model has been created again to study into the endometrium, where the donor oocyte models, the donor has been were not been able to conceive with its self oocyte. So what they have done is that they have taken the oocyte from outside another mice, and they have implanted into the donor oocyte. The researchers have evaluated the impact of this increasing donor oocyte recipient BMI on the embryonic implantation, clinical pregnancy, miscarriage rate, and even the chances of live birth. They have evaluated by increasing the
donor oocyte recipient BMI categorically, and they have found that they do have a relation between the BMI of this donor oocyte and the chances of embryonic implantation, retaining of this pregnancy, than chances of miscarriages. So these studies have yielded many conflicts, no doubt, but demonstrated a BMI relation and impact on the measures of reproductive success, and other demonstrating no effects. So there were controversies also in this study, but then also they got a relation between the two. Now, ART and obesity, when we have discussed that, yes, obesity do have factors having, ovulation factor also and implantation factor also, hampering both the conditions. Now we can have a question that how then in ART, the success rate is same as that of the non-obese category. The answer for that question may be that it is possible that in ARTs, the increased chance of miscarriage in such setup with obesity is maybe lowered by allowing selection of the better embryo, and therefore by reducing the chances of miscarriage. They pick up the best of the embryo. They improve the endometrial condition by administering all the supraphysiologic doses of gonadotropins, and by also alternatively allowing the correction of the abnormal oocyte metabolism through vitro cultures, and very selectively only they implant the selected embryos into that. But data supporting this hypothesis is yet to come. So we are lacking for that. This is just a hypothesis. Now, pregnancy outcome and obesity, if we see, there are many pregnancy risk factors which a patient encounters, starting from preeclampsia, gestational diabetes, fetal growth abnormalities, stillbirth, congenital abnormalities, and need or indication for the cesarean section. And this is true for even the in vitro fertilization group as well. Now, the obesity and menopause, if we say, that obesity do have a higher risk of endometrial carcinoma even in the perimenopausal and the menopausal group, that we know. The probable way for having that is the increased adiposity have an increased aromatase activity leading to the conversion of this androgen into the estrogen, and a persistent stimulation of this estrogen to the endometrium. It promotes the endometrial proliferation and transcription of this proliferative gene to have these carcinogenic changes. Now, the thing which is again very important is the dietary choice. And it has been evident with the studies that vegetable source of protein over the animal protein, and limitation or limiting the diet of by intaking the trans fat and the refined carbohydrate have shown to be associated with decreased risk of ovulatory infertility independent of BMI and the total caloric intake. This is very important, that independent of the BMI and the total calorie, how much a person is taking, if they are preferring the vegetable protein over the animal protein and limiting their diet with the trans fat and the refined carbohydrate, their chances for ovulation is more relatively than the other one. The dietary changes improves the ovulatory function in the anovulatory obese women. This has also been studied and proved and documented. Now, again, a term comes when we go through the reproductive, endocrinology and reproductive targeting over the obesity, that is the lipo toxicity. It's one of the mechanisms by which the fat intake may influence the target reproductive tissue. Now, what exactly it is that this process is being characterized by excess circulating long chain saturated fatty acid, which is produced by these adipocytes themselves. But where is the problem is that it's being obtained from the body also and from the diet also. But when these adipocytes can no longer store this long chain fatty acid, they start depositing it into the non-adipose stores
where we call the visceral deposition of the adipose cell. So there comes the point for the lipotoxicity, and these lead to an increased production of this reactive oxygen species O3, and which consequently is responsible for the mitochondrial dysfunction, and then the endoplasmic reticulum, and leading to the cell death. Now, reproductive tissue affecting this target organ, they hamper not only the oocyte maturation, but also the quantity of oocyte. So this is how this lipotoxicity have role over the target organ, ovary, as well as the endometrium. Now, again, an experimental model where being recently done, where the pre-implanted embryonic expression, and these embryos has been exposed to this, again, this palmitic acid, and these long chain fatty acids which are obtained from the diet are produced by these adipocytes, can result into the fetal growth restriction with subsequent post-delivery catch-up with the growth as well as the metabolic-like syndrome. So whether or not this work is representative of what is happening into the human condition, it's not known till now, but then also it suggests an implication for all the pre and periconceptional diet and obesity having a long-term lasting impact over the offspring. Now, here comes an opportunity for intervention, that obesity-related anovulation and subfertility may provide an important opportunity for the preconceptional intervention and improvements in the reproductive functions and outcomes. So here comes the role of Ayurveda to play about, and my entire background and introduction was all about, you know, highlighting the role of Ayurveda in this preconceptional intervention, and also the various ways to improve the reproductive functions. Now, thus, for the obese women, the preconceptional intervention may offer a potential for an impact and subsequent reproductive and pregnancy outcome rather than the intragestational intervention. So it's always better to get being intervented preconceptionally rather than the intragestational intervention. Now, coming to the definition, Madam has already gone through, so I'm skipping, but on an average, if it is BMI more than 30, we start coining it to be obese. If we say about Ayurveda, Nidan, Ahar, Vihar, Manas, and other, if we see the counterpart, the excessive lipid deposition, diminished lipid utilization, and as well as the diminished lipid metabolism. Diagnosis, Madam has detailed, so I'm skipping that classification. It can be Hina, it can be Madhyam, and it can be Adhik Stolya. This has been categorized according to the BMI. Then Upadrav, in Ayurveda, they have mentioned so many Upadravs which can be related to Stolya. And Chikitsa Sutra, they have emphasized on the Nitya Langhan therapy, Langhan even during the Shishir Ritu or the Shishir Kal. Vaman and Virechan has been advised according to the Vyadhi Bal and the Deha Bal, Langhan as well as the Rukshan therapy being primed for the management of obesity. Now, Samshodhan therapy, if we talk about Vaman and Virechan, is being given utmost important. Ruksha Ushna and the Tikta Basti has been emphasized. Ruksha Udvartan being one of the external therapy for Shodhan is being used. And two important things, that Praga Bhakta, that is intake of medicine before the meal, is insisted to be Karshyakara. So that is losing the weight. Among the Pancha with Kashai Kalpana, the Kalpa Kalpana is attributed to having a reduction in the fat, that is Karshyakara. Now, coming to the last phase of my talk, that is the OPD scenario. If I see that we mostly get two categories of patients. The first category is having a menstrual obesity with menstrual irregularities. One group
they may, be only on the oral management. The second group, oral management with the BMI control. And the third group, that is oral with Shodhan and the BMI control. And we used to get, even all of us, we used to get such type of, scenario in our daily practice, that in the first group where only the oral management is done, if the patient group is having a normal BMI, they respond well in the menstrual irregularities. If it is not, BMI is altered, then there is delayed response to only oral management. The second category of the patients, they are having a BMI control, only oral, the irregular, and they have a very irregular type of drug administration, then also they will get a delayed response. And the third category, where there is oral as well as the Shodhan therapy being conducted, and with the BMI control, they respond very well. This is the majorly, if I categorize the patient with obesity and coming to us with a menstrual irregularity. Now, the second complaint, the patient coming with obesity, the women also desiring pregnancy. So the first group, if I categorize with high BMI, difficult to conception. Now we know why there is difficulty in conception, as because we have seen entire, pathophysiology and the even the immunology and genetic expression, that how exactly it's going to hamper or difficulty in conception. Now the second group is moderately controlled BMI. They also moderately respond. And the third group, where there is a normal BMI and the patient, when otherwise they are, having all other things are normal, we see that they conceive very easily. So an opportunity for intervention. This is a repetition of my 23rd slide. I again want to emphasize the strength of Ayurveda in preconceptional intervention and improvement in the reproductive function. As because we are having a limited time, I cannot highlight entire of my presentation related to scientifically validating each and individual drug and measures which has been mentioned in Ayurveda for preconceptional management, as well as during the Masanumasi Garbhini Paricharya. But to highlight one just instance, that in Ayurveda for the preconceptional management, it has been quoted that for female, marsh is black gram. Marsh is something which has been given an utmost important and has to be taken for a long period of time. The scientific reason for that is, here, this is a paper which shows that the black gram do have this type of effect. And the black gram is a pulse. I'm just reading it out. Then the systemic review shows the effect of this black gram on lipid lowering action by this black gram having causes a significant hypolipidemic action. The second, this is again a Science Direct, paper which they have compared the black gram with that of the horse gram, and they have found that the black gram do have a very good anti-inflammatory factors as well as the antioxidant factors. So we know how this obesity is going to affect the entire system, particularly the target organs. Now we know that how this black gram or this marsh is going to correct it. Again, a study where exploring the potential of black gram flour as a fat replacer in biscuits. So my highlight here is as a fat replacer. The black gram has been used for fat replacer. This is again a Spinger paper only. And these all highlights the importance of this black gram over the hyperlipidemic condition. So you can understand, or rather we can understand
the importance of individual diet and ahar and vihar, which has been mentioned by our acharyas, particularly in particular time. So there are many things which need to be explored and has to be justified in today's context, in today's purview, so that we can reinforce the entire, system in today's purview. So with this thing, thank you very much. Once again, I hope I am on time, and these are few of the reading material. I am giving the slides to the organizer. If anyone is interested, they can take and they can just further go through. Thank you very much. Over to you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you very much. Are there any questions, doctors, please? Ma'am, can you tell little about the PCOD and obesity, a little relation with PCOD and obesity? Yes, ma'am. See, how we will look into that, please. See, PCOD is something which is again very common in our daily practice. Now, PCOD, if we, in context of obesity, if we see there are two categories. One group you will get where there is no obesity and the BMI is in controlled condition. And the second category of the patient will be having a altered BMI, that is obese with obesity. So in those groups where the PCOS patient are obese, I will say that this category of patient is rather easy to, not respond. In fact, easy to get the management protocol, because we know they are obese and we know the protocol that we have to give a proper shodhan to them first, deepen and then shodhan, and then we will have to go for the proper doshic management in those category of the patient. On contrary, for all those non-obese PCOS patient, it is difficult to manage, in a sense that sometimes they don't respond very well to the shodhan therapy. On contrary, the obese patient, even with a simple nitya shodhan procedure also, they start showing symptoms. Like menstrual irregularities will come back to its normalcy. When we say about, you have to reduce the weight for about 3 to 5 kgs over a period of time, they start showing the response relatively early than the other group. Okay, so patient also, they start satisfying more in this group rather than the other group. So this is how the things goes. And other things are almost same for both the categories. Only the shodhan procedures, if these are obese group of patients, we generally prefer starting from woman. But in the other, if it is they are not obese, that means if the kapha is in the samyak avastha, we prefer the virechan and then basti. But on the other hand, in the obese patient, we first try with the woman and then virechan and then basti. So this is how the things differ in PCOS patients. Yes, ma'am, definitely. Can you tell some medicines to reduce the weight? Yeah, as per reducing the weight. See, that's why I have, if you have noticed in my first slide only, many medicines have come and have gone. The only thing is that the 3 non-pharmacological things we have to understand. There is no specific medicine to reduce the weight loss, but yes, what my emphasis is that what my, in this today's presentation, that whatever our acharyas have quoted now, why they have told that 3 months before you want to, plan for conception, you have to take mash. So that is the reason. So these need to be reinforced. This needs to be in our practice. So these are the things. Yes, ma'am. One question is there. Yeah. I think you can see in the chat box also, Dr. Sunita is asking that
black gram cause obesity, as it is guru, black gram, urad, I think. Yeah. Kapavardak. Yeah, ma'am. Urad dal, bolte na. Black gram. Would black gram cause obesity as it is guru and kafavardak? Yes, yes. Black gram is mash. Mash, yeah, urad, yes. Madam, urad and mash is different. In Marathi, we say urad dal for that. See, mash. urad is white, no, without chilka. It's white. And black gram is entirely black only. Mash is black only, no, ma'am? It with chilka. Urad is different. Urad is without chilka, no, ma'am? It's white only, no? Yes. There also, I think it will be white only at your place. Yes. But black gram is with chilka, no? Yes, with chilka, definitely. So, and you see, we cannot say that, for example, anything which is having a quality, that doesn't mean that it will have an, for example, Yashti Madhu. Yashti Madhu is Vamanopag. But then also we give Yashti Madhu even in nausea vomiting, na? So we cannot say that Yashti Madhu is having a property of Vamanopag. It's being used for, having during the Vaman procedure. So how Yashti Madhu is going to help in nausea and vomiting? We used to give only, na? Even during pregnancy also we used to give. So it's not like that, that simple only one, one action doesn't mean that it will not help in other things. Our drugs is having a very dynamic kind of pharmacokinetic actions, no? So that is how it goes. So any other question? Yes, Dr. Sunita, is it okay? Agni Mandya and obesity. Yes. Yeah. Agni Mandya and obesity is quite, when there will be Mandagni, so all the, the entire digestion metabolism procedure will be hampered, and it will be at two levels, Jataragni level also, as well as at the cellular level also. So, in both conditions, there will be, the malabsorption at the central level also, at the molecular level also. So definitely it's going to, that's why, we give Agni, Deepan and Pachan, and Deepan Pachan doesn't mean it will only, help in digestion. It is something beyond that. It will help in cellular digestion also. So Agni Mandya at the level of cell, at the level of gut, both will, have a direct relation in malabsorption, and, when there is the proper conversion will not be there, obviously Meda Dhatu will be increased. Na? Yeah, ma'am. Yeah. I think can you tell something about the postnatal period? As I think many of the women gain weight during that period due to the diet pattern and the lifestyle. Any advice from your side? Actually, see, mostly what we see, the postnatal patient and those to whom we have conducted cesarean, they will come with a very reluctant and with a saying that madam वो तो ऑपरेशन हुआ है तो इसलिए तो काम नहीं कर रहे हैं ना, तो इसलिए सिर्फ बैठ के खा रहे हैं, बच्चे को देख रहे हैं, तो वेट गेन हो गया, और ऑपरेशन के बाद तो वेट गेन होता है. So there is a social framework कि ऑपरेशन हुआ है, अगर if there is a cesarean management, cesarean delivery, तो मतलब weight gain होना ही है. So first of thing, what we used to do in our in our hospital is that we when we discharge the patient, if they are normally delivered or otherwise if they are cesareanly delivered, both to start the exercise from when and which are the asanas they can start with. So we do advise them differently. And also the diet, what are the diet and the things which need to be taken and which need not have to be taken, that is also been advised. And also the way how we can engage them into the daily chores is that आप अपने बच्चे का
जितना काम है वो सब आप करोगे. This is how we engaged in them initially. We don't allow even the cesarean patient in the ward to, be taken care of Sasuma and Ma and other things. No. Once they are on walk, catheter is removed, then they have to manage their, self as well as baby of their own. So we start developing a kind of, workout even from the second day of post cesarean. If it is normally delivered, she have to start it as soon as she passes her urine, going to the bathroom and start doing the things. So this is how the things should start. There is no single medicines, no, where you can just give and reduce or control or, normalize the BMI. We cannot do that. This is all the non-pharmacological things which need to be emphasized and to be, done. So this is how it goes, I think. Definitely, ma'am. It's really a good suggestion, I think. So one just last question is there from Dr. Manisha. Varicose veins and obesity. Can you tell something about varicose veins? Varicose. Oh, yeah. I am not an expertise in varicosity, so I cannot comment on that, ma'am. Thank you. Yeah, definitely. No issue, ma'am. No issue. So thank you very much, ma'am, for the wonderful session. And now moving forward with our next speaker. Thank you very much. To invite. Thank you, ma'am. Thank you very much, Dr. Professor Asokan sir. And I invite Dr. Ajana Saxena, ma'am, who is the co-moderator of this session, to introduce Dr. Asokan sir. Yes, Ajana ma'am. नमस्कार मैम. नमस्कार को. और जैसे मैंने अभी आपने बताया, बहुत अच्छे से आपने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है. आयुष दर्पण को, शिल्पा मैम को, रवीन सर को बहुत 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 आभार आप सभी लोग का, हम लोग की नॉलेज बढ़ाने के लिए. और इसके साथ में अभी डॉक्टर अनुराधा का हमने लेक्चर सुना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव था और बहुत ही जिसे कहते हैं कि डीपली नॉलेज वाला था. एक बात बस मैं यहाँ बताना चाहूंगी मैम, क्योंकि आप थोड़ा सा उस साइड के हो, तो यहाँ जो माश और उड़द की बात हो रही थी अभी, तो जो उड़द है ना, वो काला उड़द ही होता है, लेकिन जब उसकी दाल बन जाती है और उसका छिलका हटा दिया जाता है, तो वो व्हाइट कलर में आ जाता है, लेकिन वो होता माश ही है. अगर वो उसकी दाल नहीं बनी होती, I just want to say the same thing. जी. और जब उसको दाल के रूप में हम यूज करते हैं, तो वो यार व्हाइट कलर में आ जाता है. बस यही एक डिफरेंस होता है. और सर की तो नाम ही काफी है, अशोका सर का तो हमारा नाम ही काफी है. उनके जो नाम लेके ही हम लोग जो है बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब लगता है कुछ और भी अच्छा सीखने को मिलेगा, नया सीखने को मिलेगा. सर के बारे में मुझे आज इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा गया है, इसका मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात पर. और सर के बारे में जो इस समय जो सर है, वो हम सब जैसे सभी जानते हैं कि सर प्रोफेसर का वर्क कर रहे हैं, और सर जो है पारुल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में है, जामनगर में. सर का ग्रेजुएशन जो हुआ था, वो सर का ग्रेजुएशन एलवे आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज मॉड विडरी से हुआ था, 2001 में हुआ था. RGUHS जो उनका नाम था वहाँ का. और पोस्ट ग्रेजुएशन सर ने प्रसूति तंत्र स्त्री रोग में ही किया है, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज तिरुवनंतपुरम केरल से किया है सर ने. और सर की जो डॉक्टरल की डिग्री है या PhD की डिग्री जिसे हम बोलते हैं, वो IPGT जामनगर से की है. और मैडम सर के गाइड रहे हैं मैडम, रेस्पेक्टेड मैडम प्रोफेसर लक्ष्मी प्रिया मैडम, जिनको हम लोग अक्सर सुनते हैं. और मैडम भी बहुत नॉलेज, मैडम की भी बहुत अच्छी नॉलेज, और सर उनके शिष्य रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है कि सर को वो सारी नॉलेज ट्रांसफर हुई होगी. प्रेजेंटली जो है सर इस समय प्रोफेसर की तरह वर्क कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया. और सर ने कम से कम अभी तक 20 PG मतलब पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों को गाइड किया है, और उनकी थीसिस लिखवाई है, उनका रिसर्च वर्क कराया है. और सर के अंडर में PhD स्टूडेंट्स भी चल रहे हैं, और सर ने अभी तक 8 PhD स्टूडेंट्स को प्रॉपर्ली गाइड करके उनकी थीसिस कंप्लीट करा दी है, रिसर्च वर्क कंप्लीट करा दिया है. सर हैज 52 पीर रिव्यूड सर के जो है लगभग 52 हो चुके हैं, और सर के इंटरनेशनल साइंटिफिक पब्लिकेशंस भी लगभग इतने ही हैं. और सर ने पिछले 13 साल से सर लगातार वर्क कर रहे हैं, और सर ने जो है I think madam voice is not there.
Are you there, Dr. Ranjana ma'am? Sir, Dr. Asokan sir, please start your session. I think madam is. Thank you. Thank you, organizers. Very good afternoon to the organizers, Ayush Darpan Foundation, Navin Joshi sir, and Shilpa Yerme madam. And thank you for inviting me. And it's nice to be with you. And I'm also thankful to Dr. Anjana Saxena madam for a brief introduction and a lot of praising. And बहुत praise कर लिया, इतना भी नहीं होना चाहिए अपने, ठीक है। धन्यवाद आपके लिए मैडम। और इसके साथ आज के टॉपिक जो दिया गया था, obesity in pregnancy and obesity and infertility. So I will try to take through the obesity in pregnancy, and in between I would like to say, because the treatment in postpartum and in infertility and in preconception care or period is almost similar. So the treatment aspect हम एक ही साथ देख लेंगे in Ayurveda. Whereas in case of the pregnancy, what are the complications which are occurring due to obesity? वो simple systematic sequence में समझाने की कोशिश करूंगा मैं। तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग ओबेस हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हमें ये समझना जरूरी है। So why is the obesity is a growing worldwide epidemic among women of reproductive age, including that of pregnancy or pregnant women? The increased prevalence of obesity has been accompanied by an increase in gestational weight gain. Not only increase in gestational weight gain, even in preconception period, it is a hindrance to conceive, and in the post-conception period, it is gestational weight gain will be abnormal, leading to multiple system involvements and relating to fetal outcome and maternal difficulties during antepartum, intrapartum, and postpartum. And maternal obesity has a deleterious consequences for both mother and child, and there is no clear universally accepted definition of obesity. ऐसा नहीं बोल सकते कि कुछ भी ओबेसिटी का WHO का जो क्राइटेरिया फॉर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज बताया गया है उसके आधार पर हम बोल सकते हैं, मगर इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच ऑफ आयुर्वेदा. Is it healthy for a mother to be a pregnant woman to be obese or not? What is the delimiting point? What is the optimum level of obesity which is permissible for her body mass index? However, a maternal weight gain, weight of 90 kg is considered as the upper limit of normalcy. Then the classification, if we go through the ICD classification 10, obesity, we come across a few technical terms which we need to know in our clinical practice. They are obesity complicating the pregnancy, childbirth, and the puerperam. What are the approximate synonyms which can be incorporated here? What are the maternal obesity leading during childbirth process? What are its interventions required, and what are its signs and symptoms? And obesity in childbirth process. So this is the ICD classification which speaks on the majoritically it classifies how it ICD classifies the obesity during pregnancy period. Then the guidelines for total and the rate of weight gain during pregnancy based on the pre-pregnancy BMI. We can say that the pregnancy is always associated in case of underweight girls. Usually we come across girls of rural population of India majoritically who are visiting Anganwadis, or those who are visiting the ASHA workers, or those who are being visited by the ASHA worker and not availing any facility provided by Government of India, are usually found in this category of underweight, 18.5. So range weight of 12.5 to 18 will be the BMI, and the total weight gain with the during first trimester and third trimester will be approximately in a range of the 0.51 per week. So there will be half kg weight increase per week, which need to be monitored, and an overall weight gain, total weight gain
in a normal BMI woman, that is approximately of 18.5 to 24.9, basing on their height ratio, will be around accepted range of 12 kilos or 12 to 16 kgs in pregnancy period in India. Whereas the urban population or in rural population who are genetically predisposed to have overweight prior to pregnancy or prior to marriage or prior to conception. So in such conditions, the overweight range of 25 to 29.39, 29.9 or below 30 BMI, for them a total range of weight gain which is permissible is 7 to 11.5 kg. So for a normal weight woman of normal BMI range woman, even up to 16 kg weight gain during pregnancy is permissible, but the optimum minimal cutoff is 11.5 total weight gain. Then in case of obese woman, more than 30 BMI, it is always advisable to cut their weight gain during pregnancy, which is a physiological process, very difficult to manage, to an upper limit of 9 kg from a range of 5 to 9 kg. So this is what a clinician or an obstetrician should focus on, the weight gain during pregnancy, which may happen, and how to plan for pregnancy if it is a planned pregnancy. So what pathophysiologies of obesity in pregnancy we need to know? Fetal origin of adult disease theory or Barker's hypothesis states that there is every possibility of origin of a disease, maybe an obesity is a part of it, or adipose tissue metabolic disorders is a part of it, or it is a multi-system involvement disorder. Obesity can also be an endocrinal origin, or it can be other systemic origin, or it is a lifestyle origin, or it may be stress induced psychological origin. So the origin of a disease to be traced if it is hampering the pregnancy outcome. So adult disease theory originating from the fetal life. So we have Panchamahabhuta theory and Matrajati Angavayava and Bhavas, which are responsible for the manifestation and non-manifestation, Bhava and Abhava of diseases. So manifestation or non-manifestation of the diseases, and this Bhava and Abhavata of the disease to manifest or not to manifest is told in a disease which is of Kapha dominance, that is nothing but Prameha by Acharya Charaka, while explaining the Prameha Nidana and Chikitsa. So Bhavata and Abhavata of manifestation of a particular condition. So fetal origin of adult disease theory we need to keep in mind, and we have to focus on this, either that the mother was obese leading to childhood obesity, that female child in her adulthood becomes obese, and later on in her adult and reproductive age she keeps on putting weight, which will lead her to high risk pregnancy. So this has to be kept in mind. So where we can break the chain, then dysregulation effects on dysregulatory effects on metabolic, vascular and inflammatory pathways, then obesity related insulin resistance leading to preeclampsia. So this is further going towards the metabolic error associated with obesity. Obesity may be a transient change during pregnancy. It may be a continuous systemic change which persists even after the delivery. So insulin resistance leading to preeclampsia, which may terminate with the pregnancy, or termination of the pregnancy, which may prerequisite termination of the pregnancy, or this insulin resistance may be carried as the diabetes type 2 diabetes mellitus inherited following the pregnancy period. Then maternal genotype, which is more prone to get the obesity related disorders or adipose tissue metabolic disorders. Fetal exposure to increased level of glucose, lipids, inflammatory cytokines, epigenetic changes, etc. need to be kept in mind while considering the pathophysiology of obesity in pregnancy. Potential issues in pregnancy which we need to keep in mind while analyzing the obesity is that preconception period
antepartum period, intrapartum period, postpartum period, and the neonatal period. So preconception period, we will go through one by one. These are the potential areas which we need to analyze. What is the significance of obesity? Failure to conceive in the preconception period, usually infertility or subfertility may be one of the commonest cause of the consequence of obesity. So failure to conceive, poor fertility, irregular menstrual cycles, which some speaker will be speaking on what are the causes of irregular menstrual cycles by later on by Vidya madam. Then PCOD and PCOS. Just we had an interaction on PCOD and PCOS, wherein obese PCOS respond well to the treatment when compared to the lean PCOS patients. Then because the obese PCOS is associated with kapha, anubandhi vata, and pitta dushti, whereas lean PCOS dhatu kshay janita, kevala vatika, and avarana janya, kevala vata avarana janya avastha of dhatus and doshas. So because of which the vatasya upakramaha will further necessitating the shodhana will not suit that particular condition. So the treatment should be in line with kevala vatika avastha and dhatu kshaya avastha, but niramikarana is a prerequisite. So that makes the treatment difficult. Why there is a difficulty is that kapha pramehi balavani haikaha. So that treatment principle, as well as that is Tula Prameha Chikitsa Prakarana, as well as Pramehe Tulya Dushyata. So that Prameha Tulya Dushyata Chikitsa Sutra is very well adopted in stula conditions of PCOS, which is easily. So Pramehe Tulya Dushyatvam. That is Sukhasadhyasya Lakshana. That is already accepted as Sukhasadhya Lakshana, and Shastras have told it. Then poor tolerance to coital activity. Some Javoparodaha, Krishravavayata has been depicted. Poor exercise tolerance, that is also Vyavaya and Vyayama. Asahishnuta is being mentioned because of exercise intolerance in those patients who are obese. Because of initiation will be difficult. To initiate the patient to go for exertional activity in a systematic way on day-to-day basis is difficult. Once it is initiated, patient will follow up, and the patient will respond to the treatment. So these things we need to keep in mind in obesity in preconception period. Then obesity in infertility. So I have restricted my topic of obesity in infertility to only to this slide. Kindly pardon. That's obesity as a cause of infertility, obesity as a result of infertility. Because why? The second statement may be a bit confusing. Why it is a result of infertility? We will see it. Then obesity as a cause of infertility is rasa pradosha vikara, we know. Then we know rasa pradosha vikara, if we analyze, we come across various disorders which are affecting the artava dhatu. So artava upadhatu. And thus in turn Rasarakta Poshana is affected, and in turn leading to manifestation of infertility or Vandhyatva. So Shat Prakara Vandhyatva can also be happen, or else simple Sapraja Praja Vandhya may also be observed in such condition. Then Medo Vruddhi. So it may also Meda Eva Upachiyate Na Upachiyate Itere Dhatavaha, because of which Dhatuksha Janita Lakshanas may be found, and in turn it may lead to Vata Vikara, leading to subfertility or implantation problems or disorders. Then psychological causes. Anyhow, it is very essential for Garbhadharana, so that when hampered will lead to the postural exertional variations or postural variations which cannot be adopted by a obese woman itself will be posing a problem of psychological stress, or the social withdrawal due to obesity, morbid obesity, leading to subfertility. Then Viruddhahara Janya, that is said to be Santana Doshasya Pravadanti Hetum, Viruddhamannam. So that Charaka Sutra, so that particular Viruddhahara Janita, that is keeping on eating, anxiousness as leading to eating disorders. So, or else because of use of uncongenial food habits and behavioral habits, Viruddhahara Janya Santana Dosha, we can observe.
It may be either go with the Bija Dushti, or it may be a Aharaja or Viharaja Dushti only. It may delimit itself to Aharaja Dushti and Viharaja Dushti. If left untreated, it may manifest as a Bija Dushti also. Then obesity as a result of infertility. People come across, when we come across people with infertility, subjects with infertility, couples, we know that they take many treatments. Maybe Panchakarma, because it is also said to be having iatrogenic effects, or else hormonal therapies, menstrual regularizers. So these may have an impact, ovulation induction. So this may have an impact on the hormonal imbalance of the woman, leading to obesity. So hormonal imbalance leading to obesity, eating disorders leading to obesity. Then during pregnancy, early pregnancy, what we have to monitor is possibility, the early pregnancy care. What we have to give is we have to plan for pregnancy. Then possibility of congenital anomalies that we have to rule out. Then occult type 2 diabetes we have to note. Gestational diabetes we have to note. Then pregnancy associated hypertension, spontaneous preterm birth, post-term pregnancy, multifetal gestation, obstructive sleep apnea, carpal tunnel syndrome, depression and anxiety. So these things we need to keep in. Early pregnancy losses possibility is more in case of obese woman when compared to moderate or mild obese woman. Then intrapartum complications. So the patient may have a prolonged labor and there may be need for operative deliveries, and induction failure may be associated with every case of obesity because poor bearing down efforts may be found. Pardon for the spell check. Then poor exertion tolerance, so will be found in case of obese woman. Preterm delivery may be found. Stillbirths may be found. Increased operative interference, difficulties with anesthesia and its related complications. Complications like shoulder dystocia related to macrosomia, maternal morbidity, mortality, and other thromboprophylactic conditions and antibiotic prophylactic necessitating antibiotic and thromboprophylactic conditions. Then effects on puerperal. There is an increased chance of puerperal urinary tract infection, postpartum hemorrhage, deep vein thrombosis, poor wound healing or infection, lactational failure, lesser breastfeeding rate, and postpartum depression. So nowadays we come across postpartum depression as a more manifested form of obesity because of the consciousness of the woman in the postpartum period to herself. Then neonatal issues like congenital anomalies, stillbirth, neonatal death, prematurity, large for gestational age, bronchial asthma in the neonate or the early infancy period, then childhood obesity, neurodevelopmental delay. So childhood obesity is one of the most common cause, or it is manifesting as multisystem disorders in the children in later in their life. Then pre-pregnancy management, how we can approach the preventive care or preconception counseling, evaluation and care, adverse effect of obesity on infertility, potential pregnancy complications, evaluation for obesity associated medical comorbidities, counseling about the benefits of weight loss before conception. So in addition to these discussions with the woman who want to conceive, we can advise her with diet and exercise and a behavioral modification with adjunctive medical therapies, bariatric surgeries if morbidly obese, and their risk-benefit ratio can be explained. To reduce the weight in childbearing age to less than that of 30, at an average loss of 5 to 10 kg will reduce the risk of
obesity related complications. So this is the observation found in clinical studies. So nice guidelines for nutrition and activity recommendation for preconception period, though lot many things have been explained there. Maintain a weight, healthy weight by eating healthy. So now Ayurveda doesn't allows or advises the use of weight and take. So you take 3 idlis, 4 chapatis, 3 rotis, etc. So such a menu is not told in Ayurveda. It says Ushnamashniya, Snigdhamashniya, Matravashniya, Kale, Hitam, Mitam, Chashniyat. So those depicts are to be kept in mind while selecting the individual nutritive quotient as per the labeling which is available in the market. So if we go with the nutritional advices, we can. At the same time, if the patient comes with the list of nutritional dietary as per dietitian's advice, we can tell, yes, definitely you go with it, but preferably you have to keep in mind that what is Hita according to the season, according to the health of and the habits in which or through which the woman has or the family has passed Jata Desha, Vardhita Desha, and Vyadhita Desha, according to which is congenial to them should be taken in Matra. So that should be emphasized than explaining about the individual nutritive quotient and its values and its research outcomes. So that will not be applicable to the patient. Patient will come after a month saying that I am eating as per norms, but I'm not losing my weight. So I want to discontinue the treatment. So this happens many times with us. So obesity and infertility, or obesity and pregnancy related complications. Then pregnancy management, first trimester, we know the screening is as good, and advising and screening properly is half treatment done. Baseline assessment, counseling, gestational weight gain monitoring. So we do monitoring of pregnant women's weight gain periodically. Usually we come across undernourished or malnourished women. Seldom we come across obese women. But if in the less exertional activity or desktop job, IT sectors, so we come across people who are having weight gain during pregnancy, morbid weight gain during pregnancy too. Then exercise to be advised. Then fetal aneuploidy screening, fetal congenital complications, cardiac anomalies and neural tubal defects, and timely referrals of the patient for tertiary centers if needed. Then maternal weight gain and BMI to be monitored, BP monitoring, early ultrasonography, gestational age, multifetal gestation if any, medication review, oral anti-hyperglycemic drugs discontinued if taken up for insulin therapy, diabetes screening, urine proteinuria, renal function test, platelet count, liver function tests, all are to be very rigidly monitored. Obesity and non-alcoholic fatty liver disease, if any related, should be noted, and bariatric surgery can be advised according to the opinion of experts. Then pregnancy management in second trimester, usually for obesity, low dose aspirin is advised. Then fetal USG, screening for gestational diabetes mellitus. Then with regard to the delivery and labor, equipments and instruments should be kept ready, and anticipated outcomes should be kept in mind, and anesthetic consultation and complications should be met with. Time and route of delivery should be prefixed, and termination of pregnancy can be done beyond 37 completed weeks, or if the baby is too or a morbid baby in such conditions. Then there is the intrapartum and nutritional and exercise programs have been planned, and it has been guidelines have been released. So providers to discuss eating habits and address concerns, increase fruit and vegetable intake of more 5 servings per day, discuss myths about how much and what to eat during pregnancy, educate the energy needs do not change for much for the first 6 months and then increase in last trimester approximate 200 calories per day. So these
again what I have told earlier, along with encourage moderate activity and reassure that activity will not harm the infant. Do aerobic and strengthening activities with the goal of staying fit. So here comes the role of exertional exercise therapy. Rather, patients fall into categories. Either they do routine core of activity as homemaker. There are the second category is either they go with gymnasia or they go with yoga and other aerobic exercises. So when those who are practicing pre-pregnancy yoga, advise them to continue the yoga sessions as such, with preventing such postural variations which may have an impact on increasing the intra-abdominal pressure. Except for that, all other things are allowed, including Shirshasana. Including Shirshasana or Sarvangasana, she can do, provided she is a pre-pregnancy yoga doing person or a person who is accustomed to it. Then do aerobic and strengthening activities with the goal of staying fit rather than reaching maximum fitness. So fitness is not the need there. So we need to be fit in pregnancy, not to gain weight. Start slowly and gradually increase the amount of exercise to goal of 30 minutes daily. Women should be able to exercise at the same intensity as prior to pregnancy without any harmful effects on mother or infant. So do not lose weight during pregnancy. So patients should be advised how to lose and how to not gain weight, so than losing weight. So that is to be imparted slowly into the mind of the person. Then keeping all these things in mind, let us see by name, because my other speakers are there to elaborate on these topics. What Ayurveda has spoken on Staulya Vikara, Ashtav Ninditiya Adhyaya, it has spoken. Viruddhahara Sevana, it has mentioned some. Atisantarpana Vikara has been elaborated, which requires Shodhana. Prame and Prabhuta Doshavastha has been the outcome of Atisantarpana Vikara. Then Prameha Vyadhi has been explained. Madhura Rasa Atisevana leading to Staulya has been explained. then Kapakara Ahara, as in Prameha, without exercise. Asya Sukha, Swapna Sukha, Dadhini, etc. Upavishtaka and Nagodara. So fetal and embryological nutritional deficiencies associated with abnormal lipid metabolism have been stressed by previous two the speakers. So here we get Upavishtaka and Nagodara as Sama Rasotpatti leading to nutritional deficiency or IUGR. So that also has to be kept in mind. Then Staulya Roga of Ayurveda comes under the heading of Medo Roga, which results due to dysfunction of Medo Dhatvagni, and Kapha Pradhanaja Vikara and Medo Pradoshaja Vikara, Bahudoshavastha and Santarpanajanya Vikara. So we have a lot of month-wise regimen which predominantly depends on the balanced diet of milk and Kshira Paka Vidhi, various Kshira Paka Vidhi, and Kshira, though it is a Tridosha Satmya Karaka, it can be processed in such a way that it is na Kaphavardhaka, na cha Kaphavardhaka. So that way we can modify it in the dravyas which are used can be modified in such a, for example, Yava Kshira or Yavodana is being indicated. So Yavodana is not contraindicated in pregnancy. So it can be indicated for the Ruksha and Ushna. Ruksha and Ushna nature of Yava and Laghu Guna of Yava is very well in par with that of pregnancy weight gain prevention. So it's not that Yava should be taken continuously, Yava should be taken, or barley can be used, or the type of Godhuma so can be used. So that is the discretion of the person to which they are satmya. Like the black gram discussion was going on. So that keeping in that in mind, so it is Yava and Godhuma are indicated in Stula Pramehi and Tusha Pramehi. So that we can assess use here also. Then pregnancy plate is a pictorial depiction. Is what hitam, Samiksha hitam ashniya. What is hita to that particular person? That should be selected.
and that is the role of family physician to select it, to advise this is favorable for you, this is uncongenial for you in this particular period. In addition to which, we have lot many drugs or single drugs best, because we don't prepare a compound drugs during pregnancy. So we can select some of the simple drugs which can prevent the secondary complications due to obesity, cardiovascular risk. Arjuna can be selected. Then it is antioxidant effect as well as rasayana effect is needed with dhatu pachaka effect or some dosha pachaka effect. Guduchi can be selected. So such drugs which are non-congenial, which are not contraindicated during pregnancy, can be adopted here also. For example, asana. So asana and khadira sara or khadira siddha jala and asana sara siddha jala is indicated in Vasanta Ritu. So Vasanta Ritu Charya can be adopted in case of pregnancy associated with obesity. So these are some of the pictorial depicts which are rasayana dravyas and as well as which are Isha Tiktarasa and Ati Tiktarasa Upayoga in pregnancy is contraindicated, so we can adopt accordingly. Then to generalize the treatment, we can take Udvartana, Kapahara, Vyayama, and followed by Ushna Abhyanga and Snana. Then Santarpanottara, Snehapanottara Vamana and Virechana, Lekhana Basti, Prameha Chikitsa, Asavarishta Pana, which is Shleshma Medohara, Kashaya Tiktarasa Prayoga, Kapha Medo Vilayana Chikitsa in pre-pregnancy and postpartum period, not during pregnancy. So then the use of Tripala, Lodhrasava, the Khadirodaka and Asanodaka, Arogyavadini Vati, Medohara Vidangaloha can also be used. Main demand is that I want to lose weight in the postpartum period. My advice, personal advice is wait for 6 months. Why is minimum exclusive breastfeeding is essential during first 6 months till the child becomes Kshirannada and Palashanadi are being begun. So till then, be patient. You can lose weight later too. So this we have to advise the patient. Early mobilization, as madam has told, everything is fine. Then lifestyle, mild physical exercises, routine light household work, yoga and pranayama like Siddhasana, Shavasana, Ujjayi and Bhramari and what not. It is again, so Bhastrika and the Kapalabhati. So these things cannot be done during pregnancy. So those things can be avoided. So Bhramari and Ujjayi and other Anuloma Viloma can be very easily adopted and done. So these are pregnant women doing yogasana in various postures like pregnancy in standing posture, yoga in standing posture, chest expander, which enhances the oxygen intake and perfusion in various tissues and makes the body more supple and gives her the possibility of giving a good bearing down efforts during normal termination of pregnancy. Then it stretches the pelvic floor muscles and it relaxes the woman. And if you can see the Balasana, cat cow posture or Balasana. So then Marjarasana. So these will relax the low back also, giving more strength and suppleness to the pelvic floor musculatures. Then meditation and some of the modified Shavasana postures which can be adopted during pregnancy for ease of sleeping and falling into sleep rather than sleeping purpose. Falling into sleep, those who are having problems, modified Shavasana can be advised in various postures. So contraceptions, use IUCDs may have oral contraceptives are supposed to have some failure rate in postpartum period, whereas IUCDs may be an option in postpartum period. So to conclude, in total, lifestyle changes including dietary and increased activity may help to limit the excessive gestational weight gain, but the optimal strategy remains unclear. Management principles are in line with preconception, antenatal, postpartum period, and aim at prevention of complications of obesity.
Gestational diabetes, hypertensive disorders, preeclampsia, eclampsia, and breathing difficulties can be managed suitably accordingly with Ayurvedic interventions wherever possible. Mode of termination may be usually be operative. These are some of the references. Thank you. And I acknowledge my Dean and Principal, Dr. Toshikane sir, Hemant Toshikane sir, and also all the organizers of Ayush Darpan Foundation and all researchers of Ayurveda for this opportunity. Thank you one and all. Sorry for taking much time. Thank you, sir. Thank you very much. Can you throw some light upon the oral contraceptives and then copper T? Is there any role of these contraceptives in weight gain? Because some patients complain with like that due to copper T, weight gain is there, and is there any relation, sir, correlation as per your? Actually, there is none. But oral contraceptives may have an impact of water retention, water and electrolyte imbalance that may lead to obesity. But as such, copper T doesn't creates any obesity related to postpartum in the postpartum period. Yeah. Okay, sir. And during pregnancy, is there any correlation like weight gain agar zyada hota hai to hypertension and all the issues? Is there any correlation, and how to deal with such issues? And just throw some light about preconception, obesity, and conception related issues. Yes. Within a few lines. Yeah. So preconception is, Ayurveda has told, elaborate, we know Shodhana as the essential factor for preconception care. So Rutukshetramba Bija Shuddhi. So Vamana followed by sequential order of Virechata and Basti is being mentioned. Vamana is said to be Saumya Dhatu Nirharana Krita Agneya Vritti, leading to Uttama Agneyatva in the Arthava. And Rasa Vishodhana, proper nourishment of Rasadhatu and Arthava, and in turn the endometrial bedding is also getting receptive to the implantation of the ovum. So fertilized ovum, that is the zygote. Then the second point is Virechana. Virechana is said to be imparting Pitta Shleshmahara effect. At the same time, Bijam Bhavati Karmukam has been told. So because of which the Virechana also helps in Pitta dominant conditions leading to infertility, or wherein Anulomana is essential factor, so that can be adopted. Then the next factor is Lekhana Basti. When in practice we see come across women with weight gain leading to irregularity of the menstrual cycle. Hope that will be discussed in the coming presentations. So that particular thing, when we advise the patient to lose a 3 to 5 kilo weight over a period of 6 weeks, all the problems related to the menstrual irregularities disappear. At the same time, ovulation also starts getting induced without any induction medicines. Spontaneous recovery of the Ardhavasrotas normal functioning. So Rakta Lakshanam Ardhavam Garbha Kritcha, the two quotients are reverted back to normalcy within fraction of 6 weeks. So that is sufficient than imparting all the medicines and lifestyles and every other thing into the field. Then the next is Lekhana Basti, or the Astapana and the Anuvasana Basti can be planned. Then following which we can give Nasya. So if there is a psychological role like eating disorders, sleeping disorders, or anxiety related disorders, which are the leading cause for HPO axis dysregulation, then the obesity, at the same time the fertility can be reverted back by such type of nasya, maybe beginning with Anutaila, Kshirabala Taila, or Phalagrita itself, or Kevala Grita, or Pumsavana Dravya. Like various Pumsavana Dravya can be selected for nasya. And Tikshna Nasyas may include Jyotishmati Taila also to some extent, if needed, then can be used. Shadbendu Taila, Nasya can also be used.
Then these are some of the Nasya Dravyas which we practice in preconceptional care for preventing the obesity. And Udvartana followed by the Abhyanga and Svedana. Abhyanga, Svedana and Udvartana repeatedly in sittings, if done, will augment the process of the Rasa Prasadana as well as Niramikarana and Medo Niraharana. So this aspect of treatment, along with some of the oral medication like Tripala Ayasa Prayoga, or we can give some of the Kashaya Rasa Dravyas which are Lekhana in nature. We can add some of the Pachana Kshariya Dravyas, Shivakshara Pachana, Churna, and we can give some of the Haritaki Prayoga like Vaishwanara Churna. We can give Sukumara Grita or Sukumara Tailapana, Tripaladi Tailapana. So these are some of the treatment modalities which are practically highly beneficial in imparting weight loss or obesity, anti-obesity treatment. So this is my thoughts on that preconception care in preventing infertility. So infertility in purview of immunological factor, infertility in purview of anovulation, infertility in purview of implantation defect, infertility in purview of recurrent abortions. So these all different aspects of infertility can be addressed by proper Shodhana Uttara Shamana Chikitsa. Thank you, sir. Very nice thought. Just a last question. Is there a great need to reduce the weight during pregnancy if the patient is overweight, or we can ignore the weight? As per your during pregnancy is only by the diet which we have to give, as well as the mild moderate exercise which we can advise. That need to be. Yeah. No need of Lekhan Basti and all the things. Yeah. Yes. Nothing can be done in pregnancy. Yes, yes, sir. Definitely. No, definitely. Lekhan Are there Basti, any nothing questions, can be done doctors? in pregnancy. Only thing is the dietary modification, behavioral changes like exercise. Yes, yes, definitely. Are there any questions, doctors, from your side? Shall we move forward with the next session? Okay. So thank you very much, Dr. Asokan sir. Nice session. Now I welcome Dr. Manu sir, Manu Rajgopal, and I would like to invite Dr. Joshi for introducing Dr. Manu sir. Thank you, ma'am. First of all, thank you so much to Dr. Asokan sir for enlightening us with modern as well as Ayurveda knowledge. Let us move forward. Next session is of Sthaulya and Ayurveda approach. तो जैसे कि चरक आचार्य ने सूत्र स्थान में बताया है, गुरु च अपतर्पणम चेष्टम स्थूलानाम कर्षणम प्रणेति. इस चिकित्सा सूत्र के बारे में और जानने के लिए मैं आज इनवाइट करती हूँ डॉक्टर मनु राजगोपाल सर को, जो कि MD PhD है एंड सर प्रोफेसर एंड HOD है फ्रॉम पारुल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा वडोदरा से. सर को कम से कम 12 साल का एक्सपीरियंस है सिखाने का, और सर PG एंड PhD स्कॉलर्स को भी गाइड करते हैं. Sir, we give you a warm welcome on this platform to enlighten us for Chikitsa Sutra of Sthaulya and Ayurveda. Welcome, sir. Dr. Manu, sir. Welcome, please. Continue. Thank you. Thank you all for a warm welcome. Hope my slides are visible. No, sir. No, not yet visible. Yes. Is it visible now? Yes, yes, yes. You just maximize it, I think. Now? Yeah, sir, it's visible, but it is better if you maximize. Actually, I have made this slideshow and the maximize the one. Okay, okay. Okay, then continue, sir. No issue. Okay. Is it visible? Okay. It is visible. Yes. Respected faculty members, I would like to begin my session with the Om Guru Bhyo Namaha, with the blessings and the guidance of my Guru and Acharyas and elders, parents. So I would like to begin my session.
So myself has been introduced Dr. Manu, presenting an obesity and Ayurvedic approach. These are all the contents. So we have just listened to Dr. Asokan sir being a very nice presentation regarding the gestation and the obesity. And these are all some of the basic concepts that I would be giving as a point of a graduates, what can be assessed and what can be done in the general practice. I am going to walk you through this, the basic concepts like what is the definition and introduction, and then what are the common etiological factors, that is Nidana, and how actually the Samprapti is derived, and what are the basic Lakshanas, and some of the difficulties with these Lakshanas, what the people with obesity they face, and what are some basic chikitsas and patyapatyas with regard to this. Generally, when we come to understand the concept, like how the obesity is understood. So obesity has a common term called as Staulya in our Ayurvedic terminology. And this has been defined like Medo Mamsati Vruddhatvat Chalaspik Udarastanaha Ayatopachayotsaho Narovati Stula Uchate. That means to say, when because of the accumulation of excess of Medas as well as Mamsa, Ativruddha, because of the excess accumulation of these two dhatus within the Sharira, which has not been properly utilized, then that is going to cause a kind of Chalaspik Udarastanaha. Spic region, that is the back region, and then Udara, that is the abdominal region, and Stanas, that is the chest region. So what happens in these particular areas? Ayatopachayo. So it is like there is no defined framework of the human structure, because Medas and Mamsa are going to accumulate in these areas in a very abnormal quantity manner. And that leads to, he says, Ayatopachayo utsaho naro stula uchate. They will, like, it is going to accumulate in such a way that they will not have that much of utsaha to live happily like others people, what they can do this. So this is how the condition is going to happen. So that is why they say that Meda Sevati Samruddha Saiva Aniladaya. So they start facing Anila, that is the Vayu Vikaras, and then other conditions because of this Kapha and Vata, they are going to aggravate and they are going to cause some complaints. So we should normally look into this. What is the generally people will have in their mind, what could be the probable causative factors. So a kind of nidanas that Ayurveda gives us, like for Atistula people, it is said that, see, it is like Ati Sampurna, Ati Guru Madhurase. So it is as it is, people who consumes Ati Sampurna, they eat a lot to full of their abdomen, full of their stomach capacity. People who consume Ati Matra Ahara, and then Guru Ahara, and high calorie diets, people who are having a lot of high calorie diets are also going to be easily prone for this. And Madhura Ahara, people who consume a lot of sweets on their routine, habituated to consume like this, are also at a high risk of developing this. Then it is said Shita Ahara. So people, the food which is all dominant with the cold diet is also going to contribute. Then Snigdha Ahara. If you consume a lot of oily diets, the processed, the things which are like, you have oil fried items are there, lot of ghee, butter, and such kind of oily foods are there, are also going to contribute. He says, Snigdhopayoga Avyayama. People, and whenever after consuming these many kind of food articles, and people who doesn't perform any regular exercise being one of the fitness mantra for all of us. But if that is not going to happen, then it is going to be leading into this kind of cases. Then he says, Avyavaya. So because of the not involving in expenditure of their dhatus, that is also going to contribute this. Divasopna, people who eat a lot and sleep a lot, whether it is day or whether it is night. Particularly people who eat a lot and immediately sleep during the day hours for hours together, that is also going to contribute in a large extent.
And if they are not going to perform their vyayamas, they are at a higher risk. Then harsha nityatva, people who are happy for all that moment, are not worried about the worldly things. So achintana, not at all worried about their many things like whatever is required in this, to achieve their goals. So without having any no worry, no hurry. So they are very happy people. And then he says, along with this, he says, bija sobhava. There may be some hereditary predisposing factors may also be there, which is going to cause. So what happens by these? So he says, next comes the process. He says, tasya hatimatra medaskino meda evopachiyate tate na itrada. So this is how there are some of the basic causative factors. So in terms of aharaja, in terms of viharaja, in terms of manasika, and in terms of some of the genetically predisposing factor. Then what happens on the process in general, the process of samprapti, how it sets in. He says, Medasavrit, our Acharya says that Medasavrita Margatvat Vayu Postu Visheshata. By all these kinds of activities, so sedentary habituations. So there is an abnormal increase of Vayu in the posture is going to happen. And Charan Sandukshayatva Agnim Aharam Shoshayatyapi. So this increased Vayu within the posture, that is going to dry up all kinds of food which has been taken in. Tasmatsa Shigram Jarayat Aharam. So Chati Kamshati. So whenever it dries up and eats away all the food which is consumed, again the person will start desiring for the more food. So Vikaran Chashnate Goran Kanschit Kala Vetikramat. The process continues over a period of time and they land up in a condition. So Etavad Upatravakaro Vishesha Dagnimarto. There is some difficulties for the Agni. There is some abnormal increase of Vata. Okay. Etauhi Dhata Stulam Vanadavo Vanamyata. So it just eats away all the kinds of just like forest fire eats away everything for by its burning ability. Even the Agni and Maruta will eat away all the food, and continuously it is going to nourish only the Medo Dhatu. This is how person land up with Atistula. So basically the Lakshanas are like Medo Mamsati Vruddhatma. Only the Medas and Mamsa is going to aggravate. So Chalaspik Udaradana. So it is seen in areas like Spik, Udara, Stana, and in proportionate quantity of Ayatopachaya. So there is no proportionate quantity of growth, and the growth of Narovati Stula Uchate. So it is abnormally going to accumulate and going to land up. And because of this, they land up with some difficulties. So what are those difficulties? Acharya says, Tata Atistula Prashayor Bhuyo Eva Pare Nindita Visheshaha. So they will have what kind of difficulties they face. Atistulasya Tavad Ayusho Rasaha. Their Ayush is going to reduce. Javo Purodaha. Their interest in the life is going to reduce. Krichra Vyavayata. They will have some difficulty in performing their sexual activities. Durbala. Overall strength will be less comparatively. Daurgandhya. There will be some kind of Durgandha will be coming out of their body. Sweda Badaha. Sweat is also not going to excrete from their body. Shudati Matrao. On top of it, they have to eat a lot. So they will have a lot of hungry. Pipasa Ati Yoga. There will also be Ati Yoga of the Pipasa. So these are what they are going to face. So the reason for them is that, so Ayushorasa is because of Shaitilya. So all the Dhatu Shaitilya, Saukumaryatvat, because of this Ayush is going to reduce, it says. Gurutvacha Medasu Javo Parodha. So because of their Sharira is being abnormally increased with the Medas, they will have less interest to perform the activities. Then Shukra Abahutvat, Medasavrta Margatvat. Because of these reasons, they cannot perform their sexual activities. So the slides are not moving, sir. I have changed this. See, this is the one, and this is the now. And so you can only see the first slide, Om Gurubhyo Namaha. It's not visible to others. Okay. So, 1 second, please wait. I think you may stop sharing option
And again, now it is visible. Yeah, it is visible. So now it says, and then Shukra Abhutvat, because of the Shukra Abhutvat and as well as Medasavarta Margatvat, because of the Medasavarta Margatvat, there is some Krichra Vyavahita. They will have difficulty in performing their sexual activities. Daurbalyad Dehadatu. So because of this, there will be the Durbalata of the Dehadatus. That is also going to difficulty in their performing their sexual activities. Then Daurgandhya, because of the Durgandhata. So Durgandha will happen because exclusively because of Medo doshas, which is going to happen there. So, and then it says Atisvedana, because of the Atisvedana, there is going to be Daurgandha is also going to be there. So then he says Medasa Shleshma Samsarga, Vishanditvad, Bahutvad, Gurutvad, Vyayama, Asahatvacha, Svedhavarodha. So Sveda Bhada is going to be there, Sveda Varoda is going to be there. Because of all this Shleshma and Medo, which is going to be accumulated in an exclusive manner. Then he says Tikshnatvad, The slides are not visible. Slide, I am not moving the slide. Please understand. Okay. It's okay. Yeah. I am explaining. So Tikshnatva, because of the Tikshnatva and of the Vata which is present in the Koshta, so that is going to cause Pipasat Yoga and Kshudati Matra. That is where people are going to develop Atikshuddha and Ati Pipasa. So this is how. So the Narma, I think now I have changed. Is it visible now? BMI slide. Yes, sir. Yeah. So normally, there are some kind of the difficulties they will have. So just already about what all the BMI and what could be the probable obesity, you have already been explained the previous faculties. So just to brief you, normally one should have a BMI, body mass index, of about 18 to 25 who can perform their physical activities with normal fitness. So if it is between 18 to 25, and if it exceeds more than 25, that is, I would say about 26 to 30, the person will be grouped under the overweight. They will have some kind of difficulties than the normal people to perform their activities. And when that limit is also crossed, when they fall between the 31 to 35, so the obesity is going to set in. When even that is crossed, if they are not careful about this, when they cross 36 to 40, so and above, they are all considered to be morbid obese. So this morbid obesity is going to set in where they mark them as the condition called stula. So and now we should think about the probable mode of treatment for them. So this Chikitsa slide is visible, madam. Is it visible? So Chikitsa slide I have shared. Yes. Normally the line of treatment, what has to be looked into. So our acharyas say, Guru cha apatarpanam cheshtam stulanam darshanam prati. So normally stula is one thing and the darshana is the other thing. So usually it is considered that Krishas are to be comparatively better than stulas because somehow these Krisha people can perform their activities, but not with the the stula people. So our acharya suggests that Guru cha apatarpana. So give some Guru ahara, but it says that which can do apatarpana. That means to say their body mass index, whatever is excess, has to come down. So to that extent, we have to give them apatarpana procedures in terms of ahara, vihara, and manasika bhava. He says krishanam brahmanarthancha. If they are krisha, you do brahmana. And then lagucha santarpana. So for them, lagu santarpana is also to be recommended. But for a person who is a stula, all kinds of karshana line of treatments, all in terms of aharaja, in terms of viharaja, in terms of manasika bhava, they have to be given this kind of treatment modalities. And he also says that vata jnani annapanani. So we also need to take that because vata is going to, because of this vata and agni, so they are going to eat more and more lot of food. So even the chesta is also need to be taken care to control vata as well as kapha. Shleshma medo haranicha. So any kinds of procedure you do, whether dosha pratyanika chikitsa, whether you do vyadhi pratyanika chikitsa, or whether you do ubhaya pratyanika chikitsa, you take care of in terms of ahara and vihara. So this is the line of actual mode of treatment. Just like for an example, suppose you want to
do the Shleshman Medohara in terms of ahara. Commonly, you can set in the aharas which are dominant with the madhu, which are dominant with the Ushna. Commonly, you want to set them with the vihara. You ask them not to do go for divasopna, but to do ratri jagarana. Okay, and manasika, you ask them to give a lot of the tasks which can make them worry about maybe the family responsibility, other responsibilities. So this kind of management we have to set in on a daily basis and observe on and off, and then make some modulation as per the patient condition. Then go for rukshoshnam cha bastaya stikshna, some kind of rukshaja, any kind of whatever the procedure you do, ruksha therapy and ushna therapy, which can modulate the Shleshman medas. And basti, which are tikshna, can be adopted, which can do the kaphameda vilayana. And he says rukshani udvartanani, some kind, udvartana, the body massage, the dry powders, which is also helpful for this. And he also says some of the dravyas, ahara dravyas for this. As the next slide says, like guduji and budramushta. So you can select some of the dravyas which are like guduji and then budramushta and then triphala prayoga. Triphala is one of the most common and well-known drug which helps in treating this patient with stula. Then takva arishta prayoga. Takva arishta prayoga is also considered to be one of the very primary and very good for humans for all kinds of disease. So especially he also indicates takra as well as arishta. Both of them are in kaphameda vilayana. So he says prayoga makshikasya. Madhu prayoga is also considered to be very good in this particular case. Then other drug of choice, simple drug of choices are use vidanga, use nagara, use kshara dravyas, which are very, very good. So the preparations of vidanga like medohara vidanga diloha, and then nagaradika shaya, and various ksharas like shivakshara pakanapurna, other ksharas, evakshara preparations can be made used. Then he says kala loha rajo madhu. So loha you can take loha churna is there, add with the madhu and give them. And then yavamalaki churna, the most simple and best thing. Yava and amalaki churna is there, is prayogo shreshta uchate, considered to be the very, very ideal one. Then bilva dravyas, panchamula dravyas, and kshaudra mixed with the kshaudra and given. And shilajatu, it's no doubt it acts as a rasayana. It does a lekana karma. And it is considered to be the simple and very best rasayana and the chikitsa for stolya too. So these are all the one which he considers. So we also side by side we have to look out for their even the care for their health. So at some of the patyas like Prashadika, Priyangu, Shamaka, Yava. So these are all the things. Podrava, Mudga, Kulatta. These are all can be given. Adaki, the Jaladanyas, and then Patola, Amalaka. So these are all can be used. Then Madhudakas. So keep on giving some Madhudakas is also very good for them for their daily balancing the condition. Then Arishta preparations. So for various Anupanartha it can be used to reduce Medo and Mamsa and the Kapha. So this is the primary things that we should have in our mind. He says Atisthaulya Vinashaya Sambibhajya Prayoge. That will cause Atistula to reduce. So Prajagarancha, so ask them to wake up in the night. Vyavaya, involve in them some kind of Vyavaya, and Vyayama and Chintana, they also help them. Staulya Nichanta Parikriyantam Kramena Abhipravade. This is the one, this is how step by step Aharaja, Viharaja, Manasika Bhava, caring with Patya and Apatya, and some of the Ahara, if required, some of the Shodhana, or if required, some of the Shamana has to be adopted. Lifestyle modification can be done, and that can gradually lead them for a healthy life. So I thank you all for joining our discussion, and I thank the organizers like Ayush Darpan, and I also thank our the institutional head, Dr. Sir, and Paral Institute of Ayurveda Management, and Dr. Asokan Sir, and other dignitaries who are there in this podium. Thank you.
Hello. Hello. Am I audible? Yes, sir. Hello. Yes, you are audible. You are audible, sir. Yes, yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Shilpa ji. शिल्पा जी शायद डिस्कनेक्ट नहीं। Okay, if there are anything that clarifications or the discussions can be made, 1 or 2 questions can be discussed if there are any. Okay, so there has been one question like, please explain about Basti Chikitsa specific in Stavia. Generally, we have to go with Lekhana Basti. You know, the Karshana, the Dravyas, which does Lekhana Karma, right? We can use Dravyas like Triphala Kashaya. We can use Dravyas like Madhu. We can use Dravyas like Gomutra. And we can use Dravyas like Shila Jatu. Okay, or Tamra Basma. These are all the things normally we have to select. Okay, based on the the person's build, based on their mental makeup. So we can give them, Yoga Basti for a period of 7 days, right? You can plan Anuvasana and Astapana. For Astapana also, you can select dravyas like Murchita Thaila, which is also a good the drug of choice for Lekana, or Panchatikta Gugulugrita, or Gugulugrita, right? So whichever the things like Tiktakagrita, Gugulu Tiktakagrita, they're all the one which helps in doing the Karshana. Okay, so this particularly balances the abnormal increase of the Medas, Shleshma, even controls the Vata, right, and helps the Agni also to be modified periodically. So in this way, step by step, we can manage, observe for their changes in the weight, changes in the physical, the features, and then accumulation of the fat, and then keep on modifying. This is not a 1 day or 2 day business. So it takes some quite amount of time and patience. As Charka himself says, people who are, Krishna is easy to handle when it comes to the matter of treatment, when it comes to the patients. So they should have a lot of patience. Even the physician should have a lot of patience, and things should continue. I think if there are no more questions, thank you organizers, and thank you all for joining. So my session ends over here. So the next, whoever the presenter is there can be taken over. Thank you. Thank you very much, sir. Are there any questions, doctors? प्लीज आप अनम्यूट कर सकते हैं और यू कैन आस्क डायरेक्टली द क्वेश्चंस इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस.
Yes, yes, Dr. Meenal, please. Yes, you can ask directly. Yes. Yes, Dr. Meenal, please unmute. Yes, please be fast. Yes, yes. Yes, ma'am. Yes, yes. Ma'am, there is one question. If any person is having sthalia and beside that she is suffering by Sandhivata also, what should be the line of treatment there? How we should treat that Sandhivat and the sthalia simultaneously? Yes. Because in Sandhivat there is a increment of Vata, and if we will go for that medicines, they are increasing the Madhur Rasa. And what will be the result of that on the sthalia? Yes, How yes. can we, Yes, how yes. can we Dr. Manu, handle? sir, please. Yes, yes. See, in this, this is how, as I told you, there are 8 different difficulties that has been posed in the treatment and lifestyle of these patients with staulia. So in this case, what we can do is, we can go in for Sthanika Chikitsa for the patients with stula as well as they are having Janasandhigata. So at that point of time, we should do Sthanika Chikitsa as well as Sarvadehika Chikitsa. Say, for doing Sthanika Chikitsa, you can go with the lepas of the dravyas which does Vata Shamana. So you can do it locally, right? So in that case, you give them which are Shula Prashamana dravyas like Nirgundi, and then do some Ushna Lepa dravyas. Okay. So Sthanika Bhinga, Sthanika Sveda, and Ushna Lepas, where you can do Shula Prashamana of the condition and care for their joints. At the same time, Sarvadahika, what you can do, select some dravyas like, so Triphala, for an example, right? So go for the Ruksha Udvartana, where some amount of Udvartana of the generalized thing you also do. At the same time, you take care of Sthanika as the joints is concerned. Meanwhile, you can ask them to go with like Madhudaka. Go with Madhudaka, right? So which does Lekana Karma, right? So Shamanasni Shamana Dravyas, Ushnodaka. Okay. So modify the dravyas you use, okay, internally and externally caring for the joint with the lepa, benga, and these things, and as well as Sarvadahika, go for a procedure like Ruksha Udvartana, right? So these are all the one which helps the patient to become better, right? Yes. Sir, can we use Aghrata for internal use in this patient? Just like Google Tiktaghratam or any other Tiktaghratam for internal use? Like for long term? internal use can only be better if you want to do them for Shamanartha, go with a minimal dosages, right? So which can be helpful, but not in a good way. So like if it has to be helpful, so take them in such a way that you take them for a Matra Basti or Anuvasana Basti, which will be more beneficial, right? So in that case, Google Tiktaghratam can be used, but use with the intention like what is the mindset of the patient and how much of the stula pramana patient is all about, and their lifestyle and convenience is all about. So if that is suitable, then you can, it is based on your yukti, you can adapt the utility of this Grita, Tiktaka Grita, either in Shamanartha or Shodhanartha. Okay, sir. Thank you, sir. Is there any question? Another question? Hello, sir. Yes, yes. Please be fast. Yes. सर सत्तू का जो यूज किया गया है यव का संतर्पणोत्य और अपतर्पणोत्य दोनों अध्यायों में, तो हमेशा मुझे तो कंफ्यूजन रहता है कि हाउ इट एक्ट्स लाइक संतर्पणोत्य में भी उसके योग दिए हैं और अपतर्पणोत्य में भी सत्तू का ही यूज दिया है, तो उसका थोड़ा कि मोड ऑफ एक्शन कैसे काम करता है वो समझ में नहीं आता. तो सर यू आर आस्किंग अबाउट सत्वा यव okay. See, Yava, if you Nityam Prayonjita, right? So Acharya Charaka says, just like Jangalan Madhu Nirasa. So these are a Nitya Prayoga Dravyas, right?
Human body is like, right from the birth till the death, the dhatu upachaya and apachaya keeps happening. And this medas, if it is not going to be a proper a baddha medas to produce the fitness of the body, in prakrita, shleshma is considered to be bala. If not, in vikrita it becomes various causative factors, whether it is prameha, whether it is thaulya. So in that case, utility of yava is a very great use. Okay. Primarily, I use this yava on a daily basis for most of my patients. Right? Whenever you come across kapha and pitta as dravya which are there in the patients, especially this has to be used very carefully in patients who are like vata pradhana. You need not have to use this. People with kapha and pitta, you can use it in a very regular and periodically observing for the patients. You can use this. I myself has found, a patient with stula as well as joint pain. I have given this yava with as a kshirapaka. Within 1 month, she has lost her 1-2 kg of weight, and she has become, subjectively, she has become very good, and she was very happy. Sir, and pain has reduced, right? For kshirapaka, sir, dosage, please. See, you can use like according to ahara dravya, like yes, you can just take 1 teaspoon of yava, right, and 1 cup of milk, and add 2 cups of water, and then boil twice it. daily. Yes, and you can give it in an early morning empty stomach. With a period of 1 month, there is some change. 2 months, there is some change. 3 months, there is drastic. Really, there is a good change, right? So in case of Santarpanavata, it is dominantly used. Apatarpanavata, it should be used in a very minimal quantity and with proper observation. It is always good to use in the daytime rather than going after the utility in the night times, because it will also induce as a diuretic. So better not to give in case after the evening. Exactly. Right? Yes. Sir, is it going close to Guru Apatarpan section? Yeah. Yes. It is. So if as it is explained in Santarpanatya Adhyaya also and Apatarpanatya also, so for Apatarpanjanya Vadis, Yava is also introduced. So is it means can we consider that after Agni is increased, then only we can use? Yes. As it is Guru. Yes. See, we have to be like the pramana will be less. Whenever we use it on a daily basis, as it is advised by Charaka himself. So pramana will be less to meet with the cleanliness of the srotas. Sure. And we should not increase vata. That is the concept. Okay. Thank you, sir. Thank you. So thank you very much, Dr. Manu Rajgopal, sir, for a nice session and discussion also. Thank you all the doctors. So moving forward with this webinar, I would like to invite Dr. Rajkala Patil, madam, who is the associate professor in the Department of Panchakarma, Faculty of Ayurveda, BHU Varanasi, and I congratulate ma'am. Just now she has joined the institution BHU, a very well-known institution in Ayurveda, Varanasi. Madam has published a book on Snehana, and she is also a PhD guided as she is invited as a speaker. She is a resource person and a researcher in the field of Ayurveda. I think it's a great pleasure to see madam here once again on this platform with the topic Panchakarma, a therapeutic strategy for obesity. I think Panchakarma is the best option as per according to Ayurveda in the obesity patients. So madam, please continue your session and welcome, and thank you, Dr. Rajgopal sir, once again. Yes, ma'am, please. Your slides are visible, ma'am. Dr. Rajkala. Yes. Am I audible now? Yes. Yeah. At the outset, Shri Gurubhyo Namaha. I welcome you all in this session of obesity. And at the outset, I would like to thank you, the Ayush Darpan Foundation, for giving me the opportunity to share my experience or knowledge of Panchakarma in the context of obesity. So I welcome all the dignitaries or who are present online or who are students or faculties and everybody who is there in this session. So coming to today's topic, the focus of this talk will be on what is the
obesity in purview of Panchakarma. As already the physiology madam or the Sri Rog Prasuti Rog, like Dr. Anuradha Roy, Dr. Asokan sir, Dr. Manu, already has given their views on the obesity. So I will focus my talk only with context or with in the purview of Panchakarma. So this will be there in this today's talk, and how to plan and execute Panchakarma in obesity. And there will be some clinical analysis of recent updates. So starting with the obesity. So as we are living in the epidemic of obesity nowadays, between 1975 and 2021, the worldwide prevalence of obesity has been tripled, primarily attributed to the intake of high-calorie diet and sedentary lifestyle. Okay, so definition of obesity already everybody has discussed, so I'm not going into the detail. Why I took it class 1, class 2, class 3? Because Ati Sthula is contraindicated for the Panchakarma. So that comes in the class 3. So there are some modifications we have to do. So that will be coming in the further presentation. So this is the obesity definition. And in reality, what is the obesity? It is the chronic relapsing disease with a higher risk of cardiovascular disease, infertility, impaired fecundity. Since lifestyle modifications alone are not often challenging, and it is limited for the maintenance of overweight or weight reduction. So in such cases, this panchakarma, or there are some obesity exerts upon fecundity, can be categorized as a hormonal, ovulatory, or ovarian and endometrial abnormalities. So what is the nidana and types of solia, what we get in the practice or in clinics? Okay, so there may be some genetic obesity, or patient will tell that in our clinics, patient will come that they will come in the 30s or 40s and they will tell, ma'am, my mother is obese, or we have the family history of obesity. So I'm I know that this obesity is because of that genetic cause. In such cases, what we can do, or what is the area of Panchakarma, is as in such cases where we know that the family is having the predisposition to obesity, we can go for the preconceptional shodhana, or we can tell that if the person or the patient is planning for a pregnancy, whether it is the male or female, we can tell them that you can go for Panchakarma for yourself. But to prevent genetic cause or to prevent the obesity in your kids, better you go for the Shodhana, both for the preconceptional Shodhana, to avoid this obesity. In this area also, Panchakarma is very, very effective. Not only the genetic obesity, in many autoimmune disease or many genetic disorders or many hormonal disorders, in that cases also, preconception Shodhana works better. Second is lifestyle induced. As we know, this is nowadays, this is the most focused cause of obesity, what we are getting. Because nowadays this sedentary lifestyle or work stress or overeating or not eating properly, not eating in the time, these all are the reasons for obesity. For that, what we have the solution in Panchakarma, at least we can plan for the seasonal Panchakarma. If we cannot follow the lifestyle in a whole year, at least we can go for the seasonal Panchakarma to get cleaned. So that means this whole for 9 months or for 10 months, from November to September, the patient can follow his lifestyle, whatever he can, or he cannot manage anything, he can continue that routine, but at least in October or at least in Sharada, he should undergo for the Virechana, which will prevent the further obesity or further
complications of lifestyle disorder. Or if the patient is having kapha prakriti, at least we can plan for we should plan for the vamana in the Vasanta Rutu. So there will not be further obesity or chronicity of the disease. So third most is the hormonal. Whether the obesity is of hormonal reason, routinely in menopausal females, it's obesity is because of the hormones. Or in some adolescents females or adolescents girls, the obesity is because of hormonal. There, for correction of hormones, that is dhatu samya, or like in Ayurveda, it is like agni samanya, or to correct the agni, dhatavagni, or jataragni, which is the cause for the obesity there, we should undergo or we should plan the panchaka. So that is the panchashodhana is indicated in the hormonal obesity. Then coming to the psychological, where many nowadays, this obesity is not because of the eating. The person will take, I will eat only one chapati in the morning and some dalia in the night, but still I am gaining weight. Because of the stress or because of some psychological conditions, he is getting that obesity. In such cases, drastic shodhana is not needed, but mild shodhana and takradhara, like the procedures, panchakarma, upakarma procedures, which will help the psychological area of the patient, that is helpful. And secondary obesity, if it is because of drug induced, many psychiatric drugs induce the obesity, many neurological, anti-neural or anti-epileptic drugs that cause the obesity. In such cases, when it is drug-induced obesity, the virechana or vamana, according to the prakriti and season, will help it. Then coming to the types of obesity according to the modern science, there are total 4 types of obesity, where like panchakarma is having a better hand. First one is metabolically healthy overweight, that is obese but metabolically healthy overweight. Second is metabolically abnormal obese. Third is metabolically obese with normal weight. And fourth is the sarcopenic obese. So when coming to the first, it's the absence of metabolic disorders like type 2 diabetes, dyslipidemia, hypertension. So that is the normal obesity, what we say. In such cases, there is drastic, like, of course, we have to see in context of panchakarma, first of all, we have to see what is the medo dhatu avastha, mamsa, whether it is the medo dhatu is involved, whether mamsa dhatu is involved, or only agni is involved. If it is because of mandagni only, the obesity is there only basti or some purvakarmas will be enough in such cases. But when there is a metabolical abnormality there with obesity, that is, there will be BMI or type 2 diabetes, dyslipidemia, or hypertension will be there. So in such cases, like panchashodhana, like vamana, virechana, basti, it should be planned. Then coming to the metabolically obese but normal weight. So BMI might be more than 25 with hyperinsulinemia or insulin resistance, where increased abdominal and visceral adiposity will be there. Atherogenetic lipid profile will be there. Unfavorable adipokine profile will be there, as well as hypertriglyceridemia and hypertension and higher level of oxidative stress is there. In such cases, panchakarma with basti and takradhara, we have to plan. Then fourth one is the sarcopenic obesity, where BMI will be less than or equal to 25, only more than 25 kg per m2 meter square, with low muscle mass, weak muscle, that is thula pramehi, kushaha pramehi. It's not like for sthaulya, but still this sarcopenic obesity we have to consider as a krusha sthaulya. Matlab krusha sthaulya, so sthaulya is not only for the muscle girth. So where strength or lack physical exercise, in that sarcopenic overweight or sarcopenic obese, we cannot go for the drastic shodhana or panchashodhana. There only yapana,
Madhutelic Basti or Lekhana Basti will be enough. Why I'm telling Lekhana Basti? After doing Lekhana Basti for many years, what we have found, Lekhana Basti never decrease the weight in kgs. It will act at the cellular level. So if a patient with hyperlipidemia is there, in that case, we can plan for the Lekhana Basti. But with Lekhana Basti, very less, 1 or 2 kg weight will be reduced. That will, like in other Bastis, it will be more. So that means it is acting on the Medo Dhatu. So role of Panchakarma in obesity. Already the previous speakers discussed about the some Panchakarmas in obesity. So coming this, I think this shloka also has been cited by some experts. So what is the most Panchakarma, as we know, this is the most essential part of obesity treatment. It can be used for the preventive, preservative, curative, or rehabilitative therapy in obesity. In text, it is written that Vatarnani Annapanani Shreshma Medo Harani cha Ruksha Ushna Bastayahascha Tikshna Rukshani Udvartanani. So one will go into the detail. In Langan Bruhani Adhyaya, Chatush Prakara Sanshuddhi is mentioned, or Langana is mentioned in the Bruhani or in the Saulya. So what is the indication of Langana is Prabhuta Shleshma Pittastra Malaha Bruhat Sharira Balinu. Why I quote this shloka here is it's very, very important when to go for Langana or when to go for Shodhana in Saulya. Whenever there is the Prabhuta Shleshma Pitta Asramala, if there is Prabhutata of Shleshma or Pitta or Mala, Sansrishta Maruta, with Maruta, and the Sharira, Bruhat Sharira, the Sharira Bala should be more, or Sharira is Bruhat. They are indicated for Shodhana. Though the patient is of Stula, but he is not having Bala, he is not indicated for Shodhana. So how this, what are the karmas is told in the, for Sthaulya? Shastam Ullekhana, Vamana is indicated. Virechana also indicated. Raktamokshana is also indicated. Svedana is indicated. Churna Pradeha, that is Udvartana, is also indicated. Rukshanna Sevana, that is also indicated in Sthaulya. Okay, this is why I told this quote this shloka is for Udvartana. They have specified the drugs also. What should be used for the Udvartana? Like Musta, Aragvada, Patha, Trifala, Devadaro, Shvadransha, Khadira, Nimba, Haridra, Twak, Vatsaka. These are having some special effect on the Sthaulya. That's why these drugs should be used for the Udvartana, Udgharshana, or Snana. So we usually use this for the not only for Udvartana, we use it for the Churnapinda Sweda, we use it for the Kashaya Dhara. Okay. So scope of Panchakarma in obesity. This is Purvakarma for obesity, as we were discussing the Udvartana, where we are not getting that medicines. In such cases, we use the Triphala Churna for Udvartana. It is having very good weight reduction property with Udvartana in obesity. In some cases, we use the Kulakulathadi Churna. In some cases, we use the Yava. If feasibility of the medicines is not available in some areas, there we use the Yava or Bajra or Juwar or Chana. So ultimately, choosing the powder for Udvartana or medicine for the Udvartana, we have to see the prakriti of the patient, season, and the skin sensitivity of the particular person. Okay. Routinely we go for the Ruksha Udvartana in most of the Sthaulya patient, but when there is the Sukumara or the Sthaulya patient is having sensitive skin, we usually go for the Kulakulutadi Churna, or we'll go for the Juwar Churna or Jawar powder
and we will add some very minimal tila taila in that to avoid any rash. Because in Udvartana, when you do the procedure, in some patients, there is a skin rash come. So in such cases, you can add the tila taila, which is also a ruksha property, or which will not increase or which is not having the bruhana property, that can be used as a additive in the Udvartana. What is the indication of Udvartana? It is written in the Ashtanga Hridaya, Mamsala Medura Bhuri Sheshmanaha Vishamagnyashya. So those who are having Mamsala Prakriti, or who are having the more Mamsa, those who are Medura or Meda is abnormal with Kapha Pradhanata, or Agni is Visham. So, or in person in whom we are planning for Shodhana or for Snehana, Snehapana, in such cases, this Udvartana is indicated. So usually, in all the patients where we plan the Panchakarma, if the patient is obese, or if the patient is having Sthula, or if the patient is having the chronic disease, or if the patient is having the diseases of muscle or the diseases of lipids. So there, without thinking anything, I first plan the Udvartana for first 7 days. What this Udvartana do, it is written like it is the Kafahara, Medasa, Pravilayana, Sthirikaranam Anganam. And we have seen its effect in many Sthola patient. If you start Udvartana and Bashvasveda for 7 days, 2 to 3 kg weight loss will be there in the first 7 days, including diet restriction. Like this is the part of Purvakarma of Panchakarma. So usually I advise Udvartana, Bashvasveda and diet restriction, or like Langhana diet. So in many cases, like we plan the Udvartana and all these things for the first 7 days, and 2 to 3 minimum weight loss will be there. And this weight loss will be on the machine, but patient will fall on the second, third day, patient will say there is a change in the inches, muscle inches, or muscle like length. So this is what Udvartana. Then coming to the Svedana, sorry for the spelling mistake. Coming to the Svedana, in Stholya, actually Stholya, Svedana is contraindicated, but we can plan the Svedana with some precautions. So Ruksha Sveda like Churna Pinda Sveda, Lavan Pinda Sveda, Valuka Sveda with mild Svedana we can do. Bashtra Sveda with Dashamula Kashaya. Niragni Sveda is told for Kapha Medo Vilayana. So Niragni Sveda can be used. Pinda Sveda on extreme requirement, although on exigency, Mrudu Sveda is advised for the Stholya patient. Dhanyamla Dhara can be used for the Purvakarma in the Stholya patient, which will aggravate or which will add on the effect of Rukshana in the Stholya patient, or Kashaya Dhara or Pijichil with Kashaya can be done as a pre-operative for Panchakarma, where in many Stholya patients, if you say you have to restrict this diet and you should come on this simple Mudga Yusha or Juwar roti or only plain chapati. So they always feel, or if you give some medicines, they will say, no, medicines I cannot take. So in such cases, we just give some simple kashayam for internal use, and other things we add the effect via the external therapies like Rukshana therapies. So these all are the Rukshana therapies which can be done in the Purva Karma of Panchakarma in obese patients. So Takaradhara, Ruksha Sveda, Taila Snehapana. This is Taila Snehapana is also a Shamana. It is the Shamana because it's like I told, if the over obese patient, in that cases you cannot go for the Shodhana. In such cases, what we do in pre-operative procedure only, we give the Taila Snehapana or Shamana with the Tila Taila, and we'll continue it for 7 days. So if with this 50 ml or 40 ml of Taila daily, patient reduces the weight.
So then we plan the Panchakarma, or then we plan the Shodhana Snehapana. After weighting loss for 5 to 6 kg when patient weight loss, then we plan the Panchakarma. So these are and some drugs for internal Pachana. Of course, everybody is talking about their specialty, but in Panchakarma, the Pachana is most important in every disease. In obesity also, it is very, very important which drug we are doing the Dipana Pachana or Langana. So Tikta Kattu Kashaya and Rukshagana drugs should be used for the Pachana in obesity. In that also, the associated dosha should be taken into the consideration. So Chitrakadi Vati, Ampachan Vati, Lavan Bhaskar Churna, Varunadi Kashaya, Patol Katurhanidi Kashaya, or Triphala Churna can be used for the Pachana, the obesity. So the experience of Chitrakadi Vati is in some patients with obesity also, if there is pitta is associated, the patient cannot take Chitrakadi Vati, or he may get acidity, hyperacidity, or he may get burning in the chest after taking this one tablet twice. So in such cases, when there is pitta is involved, there we can go for the Varunadi Kashaya or Ampachan Vati or Patol Katurunedi Kashaya. Okay, and where there is more snigdha is there or kapha is involved, there we can go for the Triphala Churna. If it is associated with constipation, we can go for the Triphala Churna in Dipana Pachana with the Chitrakadi, or if there is some Vibandha also, but that Vibandha is associated with Ajirna, there we can go for the Lavan Bhaskar Churna. And Varunadi Kasha, whenever there is obesity associated with diabetes, PCOD, or some like lifestyle disorders like type 2 diabetes or hypertension, in such cases, we can go for the Varunadi Kasha. So it will not vitiate it will not increase the other diseases which is associated with the obesity. So Varunadi Kasha is also a good choice for the Pachana in the obesity. So coming to the Vamana, like if the obesity patient is associated with Kaphanubandha, or the Prakriti of patient is Kapha, or the Desha is Anupadesha, or the Rutu is Vasanta Rutu, or where we can do the Vamana, that Rutu will be there. And if the Kala, like there should not be any Mithya Kala, or how now in Banaras it was, in winter season, the rainy season was there. If such Kala is not there, Kala is better. So it is having the proper Rutu Lakshanas, then only we can plan the Vamana. Otherwise, it will be complication. There will be the chances of complications or Vyapada. So in Saulya patient, for Snehapana, there are many drugs. There are Tela, there are Bhutas. So the Satmya of the patient, what is Satmya to that patient? Rutu, what is the Rutu when we are planning for the Vamana? What is the Kasmin Deshe Jataha? What is the Purusha form? The patient is from which Desha is also very, very important to select the Snehapana. Because these are the Snehas which we can use for the Snehapana in obesity patient. Tila Taila, mustard oil, Triphala Taila, Gugula Tiktakam Ghruta, or coconut oil. It may be the choices. But Tila Taila cannot be used for the patient who is having, who is not used to Tila Taila. If a coconut, like patient from the south, Kerala, we cannot plan the Tila Taila for him because it is not Satmya to him. So in such cases, we should go for the coconut oil for the South Indian patient, or if the patient is from middle part of India, we can go for the Tila Taila. But if the patient is from the north part of India, which they are used for they are Satmya for the mustard oil, in such cases, we should go for the mustard oil. Okay, and it is the Kapha Ruksha also, Kaphahara Ruksha. So for Snehapana,
And this Taila Snehapana cannot be practiced in the Ushna Rutus. So if the Rutu is not Ushna, if it is in the Varsha or if it is in the Sharad Hemanta, so there we can go for the Tailapana. We have to do Vamana, but the season is not having this, it is Ushna Rutu. So there we can go for the Gugulu Tiktakam Grita or Tiktagrita. Or if the obesity is associated with skin disease or some like SLE or some rheumatoid arthritis, so there we can go for the some Tiktagrita for the Snehapana. Then coming to the procedure of Vamana, on the day of Vamana, so Akantapana, there should not, the milk should, usually we give the milk for the Akantapana, but in obesity, we never give the milk for the Akantapana. There you can go for the Ikshurasa, Nimbakashaya, Madhya for the Akantapana. And in Vamanoshada, of course, Madanphala, Yashtimadu, Vacha or Pipali, you can add as a Vamanoshada. In Vamanupak Dravya, Yashtimadu Fanta only we use. For Samsarjana, the specification in Samsarjana for Sthaulya is we never go the routine Samsarjana for the Sthaulya patient. There we use as a Lajja or Mudga. Laja Santarpana or Mudga Yusha for the Samsarjana. So this is the specification for obesity. Then coming to the Virechana, how we will plan the Virechana in obese patient. So of course, Diprapachana we already discussed in detail. So coming to the Snehapana, there also we do the same choices we have according to the Rutu, Desha and Kala. We select the Grita. So that might be Triphala Grita, Indukantam Grita or Dadimati Grita. Why here Taila is not in such patient where we plan the Virechana? Of course, there is Pitta is involved or the Prakriti is Pitta Pradhana. That's why we are planning the Virechana. So routinely, we won't give the Snehapana with Taila in such cases. Usually we go for the Grita in such cases. So here the Abhyanga is for the after Snehapana, after getting Samyak Siddhi Lakshana. In gap days, there 3 days Snehana Svedana will be there. So in that also, there should not be any Druhana Sneha should be given. It is advised to go for the Tila Taila, Kottam Chukadi Taila or Pinda Taila to avoid the milligrams of weight gain. Then Virechaka drugs in obesity, of course, it is the Ruksha Virechana only we give in obesity. So Ichabhedi Rasa, Abhayadi Modak, Triphala Kashaya plus Trivritta Avleha or Trivritta Churna plus Triphala Kashaya. We usually give in obesity patient. Phalatrikadi Kwath we used for a Virechana or Nitya Virechana or Nitya Shodhana. Avipattikar Churna also we give for because it's also Ruksha Virechana. We give it with warm water. We never give it with honey in obesity patient. So these are the Virechaka drugs with special reference to obesity. Coming to the Bastis. So everybody was praising the Basti. Everybody was praising the Basti in the obesity or in the obesity. So what are the Bastis we can plan in the obesity? So of course, the Shodhana is indicated. So we need the after Vamana Virechana or after in Ati Sthula, if you cannot go for the Vamana or Virechana, so we can go for the Rudu Shodhana and then we can plan the Basti because Stoka Dosha Niraharana is possible with Panchakarma. So Shodhana Basti with Gomutra or Triphala Kashaya can be prepared. This Basti is according to what is the available in your area or what are the feasibility for the Panchakarma drugs in your theater. It depends on that. So Triphala Kashayam, Gomutra, in some cases Eranda Muladi Kashayam. This can be used for the Shodhana Basti or Dhanyamla as a Avapa. So Shodhana Basti can be prepared by the physician's choice, like according to his yukti. Then intakes Eranda Muladi Niruha is given, Lekhan Basti is given,
Churna Basti, the Chakrapani has told the Churna Basti as a Ruksha Basti. So this can be used, or we have seen a good result with Churna Basti in the obesity patient. With 3 days or 5 days, Churna Basti can be planned in the obesity patient. Takravasti, I think one study also we have they have done on the Takravasti. Takravasti can be practiced in the obesity for the cellular development or for the cellular cellular action of the action in the obesity. Then Madhutailik Basti, it is the most beautiful Basti in Sushruta, which is told like which is having the Napusak effect. It can be act as a Shodhana also, and it will not increase the Vata also. So that is the Madhutailik Basti, can be used in the obesity. So the detail of Lekhana Basti, as everybody was telling about the Lekhana Basti. So what is the speciality of this Basti is, here the Triphala Kvat is there with Gomutra, Palatrayam, and Shodram, that is Chatvari Palam. Yavakshar, there is Karshatrayam, and Niroha, this is the what Katu Tailas. For in the place of Taila, they have told to use the Katu Taila, or that is mustard oil. So when we administer this Basti or Lekhana Basti, if the Koshta is Mrudu, because the Ushakadi Grana, which is used as a Avapa and Kalka, it is having very Ushna Tikshna property. So at the outset, we have to take very precaution before planning the Lekhana Basti. And in Lekhana Basti, there should be Anuvasan in between the Basti. At least after 2 or 3 Bastis, we should have plan the Anuvasana. And if before planning the Lekhana Basti, the Koshta Pariksha should be done. If it is the Mrudu Koshta, we should not plan the Lekhan Basti. There we can modify this Lekhan Basti, or we can make it mild to avoid the complications. Triphala in Nasa, Triphala Nasa can be used in the obesity. One study has been done in NI Jaipur on that. So what are the precautions in Panchakarma we have to take while dealing with obesity? Most important is Bala of the patient, because as obesity is concerned, the Bala of the patient is very less. So those who have the more Bala, not only Sharir Bala, the Sattva Bala or the understanding of the patient, we have to consider in the Panchakarma. Because if the Sattva is less, there are the chances for complications in Panchakarma. So physical Bala and mental Bala is very, very important to consider in the Panchakarma. Otherwise, I would like to share one, we gave the experience once we gave the Triphala Lekhan Basti to one patient. I think I was in Jamnagar that time. And that was the female of 101 kg. And we administered the Lekhan Basti, and already previously we told her that there will be some burning or some irritation in the abdomen after giving the Basti. And she went to toilet and she was like, I don't want Basti after this. She was telling in the toilet only. She could not come out, and it was a severe burning for her, because the Basti was that was not too strong. It was so mild, but because her Sattva was not too good, her Bala was not too good. So this we have to take into consideration when we are dealing with the obesity patient. Or many times, like with after Svedana only, these obesity patients come, like they will complain like having some giddiness or uneasiness. So there we have to be very precautious. So Vata should not be increased in Panchakarma when we are dealing with obesity. So this care should be taken by the physician. Or Stoka Shodhana. Like in obesity, we never plan the Uttama Shodhana or Uttama Shuddhi. We usually do the mild to moderate Shodhana in obesity to avoid the complications. So classical practice with caution is mandatory in the obesity. So here are some researches on the obesity. Dr. Ashutosh et al., the effect and mechanism of Virechana Karma
over fructose-induced metabolic syndrome, an experimental study. It evaluates or shows that Virechana decreases in the fatty acid in the storage, like liver, kidney, heart, and muscle adipose tissue, can indirectly increase the insulin sensitivity in insulin receptor present at skeletal muscle. So this is what experimental study shows. I actually in clinical practice also we have seen that how Virechana is effective. Bijam bhavati karmukam, that means in till that level this panchakarma is effective or this Virechana is effective. So of course it will act on the fatty, it will act on the liver, kidney, heart, muscles, adipose tissue. So that is what this study also prove or evaluate. So I will not go into the pathophysiology of the obesity. So coming to the rationality of Vamana, of course, most of the texts prohibit the use of Vamana due to inability of the patient to bear the potency of medicine and therapy causing prana parodha. It is told in the text. Moreover, Ati Brahmana and Medamamsa Ativruddhi are mentioned as a predisposing factor for the Vamana Vapada also. So in such cases, we have to be very cautious or routinely what I plan. In such cases, I continue the Dipanapachana or Rukshana for the more than 21 days. So 5 to 7 kg weight loss once we get, and the sattva of the patient we try to increase, or bala of the patient also we will try to increase, or we plan or we will prepare the patient for the panchakarma or vamana, then we give the vamana, so vapada will be less. So in obesity like patients, the Dipanapachana or Rukshana is having very substantial effect, or it exerts the effect on the further Shodhana. So that is Purva Karma is very, very important in the obesity patient. So this is what mode of action. It is probable mode of action of Vamana in obesity. I think we are running with the time. So I will move it. We'll move on. This is the mode of action of Virechana. Virechana it is the clear indication of Virechana in Stolya. It not only act over Pitta, but also on Kapha, Vata and Meda. It removes the avrana of Vayu in Koshta and corrects the Agni Vaidunya. That's why this Virechana is indicated in Stolya. And how this Basti is act, its Niroha Basti has a great role in Stolya because the Rukshana, Sushruta has told, Bruhan Sulanam Karshayati. So the Basti is doing the Karshana of Sula. He told, like for Bruhana also you have to do the Basti, for Rukshana also you have to do the Basti, for Karshana also the Basti can be planned. So that's how this Basti, which is having Ushna and Tikshna, are considered to be more suitable or most for choice of the Sthaulya. So this is the mode of action of Lekhana Basti. Like Sushruta emphasized to consider patient of Agni Bala, etc. before planning the Lekhana or Karshana Basti. It helps to remove the obstruction of Meda, Kapha and Meda from Srotasa by its Virya and helps to elevate Visheted Vata and normalize the function of Agni and Vayu. That's how this Lekhana Basti is effective. Especially Lekhana Basti is a Katutikta Kashaya Rasa, decreases the Kleda, thereby it does the Dhatu Karshana, and Sukshma Guna, drug can reach the cellular level. So what are like leptin or adipose tissues and everything was like in morning we were discussing. So that's how this Basti is having very, like we could not do the researches and we cannot prove this, or it is very difficult to prove that how Basti is acting on the adipose tissue or how Basti is acting on the gut microbiota, or how Basti is acting on the obesity at cellular level, at hormonal level, or at psychological level. But with the classical evidence, we can understand like how this Basti is effective, or it pacifies, or it is more effective in the obesity.
So Nasya in obesity, that is Trifaladya Nasya Taila, is indicated for Nasya in Stolya. Like Shirovirechana can be used in patient of Stolya to alleviate aggravation of kapha and its related symptoms like moha, glani, zadya, alasya, and atinidra. Okay, so this is the indication of Nasya in obesity. And already we discussed this preventive role of Panchakarma. And it can be incorporated as a preventive measure, taking in consideration of bala of the patient and after proper assessment of the stage of the disease. As the patient is having tendency routinely, nowadays people are going for the gym. And once they leave the gym or they pause the gym activity, there will be weight obesity. So if I can surely tell that if the patient undergoes the panchakarma and he stops the procedure, or after completion of the procedure, if he take a rasayana for some 1 or 2 months, there will not be like increase in the obesity. Like I would like to share, like I was 75 kg, and after Videchana, it was came to the 62, 63, and it is maintained for the last, I think, 6-7 years. So that means there will not be recurrence of Stolya. So it can be used as a preventive. Like those who know, like they have the tendency of the weight gain or the obesity, they can go for the Shodhana, and they can prevent the further obesity. So one study, very good study, has been done by Dr. Sarvesh Singh NI, and the study was randomized comparative interventional pilot study was done to assess the effect of Lekhana Basti and Rechana Nasya in the management of Stolya, with special reference to obesity. And the methodology of study was in Basti group, Lekhana Basti in Karma Basti manner was given for 30 days, and Anuvasana Basti with Triphala Taila in the dose of 120 ml, and Asthapana Basti was given in the dose of approximately 960 ml. In Nasya group, Rechana Nasya on alternate days was given with Triphaladi oil Taila in the dose of 0.5 ml per nostril for total 28 days. And the result shows that Basti group was a better intervention in the providing relief. However, their intergroup standard deviation was low on most of the variable except the lipid profile. The results suggest that the Nasya Karma may be developed as a better practical approach in the obesity management. So if we can go for the detailed like cellular study of this research, we will understand that the indication of Nasya in obesity is having some particular cause. When there is cause is the hormonal or neurological, we can go for the Nasya will be the better. Whenever there is cause is related with Agni or Dhatu is involved in the Stolya, so the Basti will be the better option. Okay, so this already it is proven that Panchakarma based interventions such as Videshana Karma may influence microbiota and help in the management of obesity. Till that level, the studies has been done in Panchakarma. So there is one good study by Dr. Kadus has been done, like rectal administration of buttermilk processed with medicinal plant alters gut microbiome in obese individuals. So the study shows that it reduces the skin fold thickness on 16 days, which remain lower as compared to baseline till 45 days. Okay, so their findings suggest that buttermilk administration per rectum is effective for a specific period and may have to be repeated for sustained benefits. Okay, so now, am I audible, ma'am? Yes, ma'am, now audible. Yes. And slides are not visible.
visible as a Sansojan in obesity. It's okay. there. Okay. Yeah. So why this samsarjana in obesity is the heading of this slide? Because this routine samsarjana is not advisable in obesity. So there we can modify the samsarjana also as in the patient of obesity. So what we can use, like this is what is the ahara or what is the hitakar ahara stored in the obesity that can be used for the samsarjana also. So Priyangu Laja can be used for the Peya, Mudga can be used for the Yusha, or Shamidhanya as a Mudga can be used, or for the like a vegetable soup. Those who are not taking the Mamsarasa, we usually ask the Samsarjana with the like vegetable soup. So in that, which shakas are told in this obesity or Stolya Rogadhikara, that can be used as a vegetable soup. Okay. So for Mamsarasa, those who are taking this Rohita Matsya, which is healthy or which is hitkar in the obesity, can be used for the Mamsarasa. Or for vegetable soup like Patola, Patra Shaka, Shigru, which is available in the place where we are doing the Panchakarma, or Vartaka, Mulaka, Surasa, these are Ardraka, these are the healthy vegetables in the obesity that can be used for the samsarjana or vegetable soup. Okay, so with this short or I think elaborated Panchakarma in obesity, I would like to thank all the listeners who are connected from the different platforms. Because of I think there is no current is there. That's why there is slides are not visible. I would like to thank the organizer for giving me the opportunity to share my experiences of Panchakarma in obesity. And I thank Dr. Shilpa Yerme ma'am for introducing me. And I also thank you from my heart to Dr. Navin Joshi sir for giving me this opportunity and for sharing my I just wanted to share this Panchakarma experiences. So thank you all. Thank you for listening. If there are any questions, so the participant may ask or put in the chat box. Thank you all. Thank you, ma'am. It's really great session. The scientific data, really appreciable, ma'am. One question is there in the chat box that can we use powder with mixing with water, because it's quite difficult to do Undvartan as a dry powder with dry powder. Dr. Sarita is asking. Yes, ma'am. Usually, yeah. Am I audible now? Yes. Please continue. Yeah. Actually, it is very Udvartana. If the patient already I told, if it is not advisable to add the water, because it will not exert the effect of the churna on the keel. So better you can add the slight tila taila, or if it is not if you don't want to add the tila taila, if it is not possible, so you may go for the takra. So takra can be added for the Udvartana as a solvent. Achha. Okay. Yes, ma'am. Yes, nice solution. Definitely. Takra can be added. Yeah. Is there any question, doctors? You can unmute yourself and ask directly. In Rasayana, after Panchakarma in Rasayan Chikitsa, what we can take? Gugula can be used for the long term in obesity, or according to the dhatu, there is one kruta also that can be used as a rasayana, like Gugulu Tiktakam kruta, that can be used for the rasayana in obesity patient. It is as a shamana dose.
or like Pipali Rasayana, or there is a Triphala Rasayana, Amalaki Rasayana that can be used in the obesity patient. Yes, yes, definitely. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you very much. I think there are no such any more questions. Really, it was a great session. I think Panchakarma is the soul of the obesity treatment. Yes, yes. I think one more question is there from Dr. Poonam. Modifications in Lekhan Basti. Yeah. Pittach Pradhan. Yeah, ma'am. Please. Pitta Yeah, Pradhan yeah, obese patients me. Yes. Yeah. Yeah. In Lekhan Basti, when there is like in that Avapa, you can minimize the dose of Avapa if it is a Pitta Pradhan patient, or you can add on Dhanyamla, because it is having the Rukshana effect, but it is the Shita in Sparsha, or it is Pittahara. So that can be, that modification can be done to avoid the complications in Pitta Pradhan patient if you plan the Lekhana Basti. The next question is by Dr. Sarita Jain. Time for Udvartana. Ideally, it depends on the weight of the patient. If the weight or area of the patient, if the patient is of 105 kg, the Udvartana may take more than 45 minutes or more than 1 hour for the, or more than 1.5 hours for the one patient, one therapist, with one therapist. If there are 2 therapists or 4 therapists, it may take 45 minutes to 1 hour. Okay, so like whole area should be covered or should be done Udvartana. That is most important. We cannot standardize the time for Udvartana. Okay, yeah, duration it is like for 7 to 14 days we usually do. Okay, but till getting the Samyak Rukshan Lakshana, you can continue the Udvartana. Okay, are you clear, Dr. Sarita Jain? Yeah, okay. So there is one message from Vaishali Gadekar ma'am. How many Churna Bastis we plan? Which Churna we take? Usually in obesity, according to the Utlesha Avastha or according to the Kapha Avastha, we can give the Churna Basti with Hingvashtak Churna or Shivakshar Pacha Churna or simple Triphala Churna or Shatapushpa Churna. So it can be given for maximum 3 days. After that, the patient will have irritation in the rectum. So you can plan for the 3 days. Then again, you can give some Anuvasana with Ruksha Taila like Katvar Tail or mustard oil or some Tila Taila with small dose. Then again, you can continue. Okay. So, one more question is there, ma'am, regarding the Udvartana. What will be the Abhyanta Chikitsa? Only Pachana or anything additional you can suggest? Yeah. Like during this Udvartana, Abhyantara also you can give the Rukshana therapy, or like you can give the Varunadi Kashayam, you can give the Hingvashtak Churna, you can give the Triphala Churna. So the ultimate what you expect from your Chikitsa is the Rukshana. So you can internally also you can give the Pachana with Tiktakatur Kashaya Rasa. That can be used. So mainly like according to your season, according to the prakriti or availability of medicine, routinely what I usually give the Sudarshan Dhanavati or Samshamanivati with the Udvartana or whatever Kashaya is available in our hospital, which is having most Ruksha property. That I will usually give in the obesity patient. Okay, if Triphala Churna is available, that usually we add in the Deepana Pachana. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you very much. It is a really wonderful session. So again, moving forward, as we are somehow running late, but I think it's a great discussion. One question is there for Dr. Asokan sir. What will be the treatment line of treatment in the second trimester, as the many of the women get fat deposition on the breasts? Yeah, Lepana. Lepana will be the ideal line of treatment. We can apply. What type of Lepana? Triphala, Dashanga, Manjishtadi Churna. So these are single drugs we can make. Triphala with Manjishta, Triphala with Guduchi, Manjishta,
or such other combinations we can make, and we can advise for lepana. And Gada Udvartana is not advisable. So we can give mild Udvartana. It's not advisable to give Gada Udvartana. Yes, yes. We can use the Trikatu Churna or like somehow. Which one? Trikatu Churna, Chandan, or like. No. Trikatu in alpha matra. Yeah. Trikatu in alpha matra can be used. And we can use Chandana Churna, Manjishta, Sariva. Sariva is also having Kshariya Guna. So those who are having Kshariya and Ishad, Lekhana, Varnya, and Lekhana Guna, we can apply. Yes, yes, sir. Thank you very much. Thank you very much. So moving forward with our session, I would like to invite Dr. K. Vidya Ballal, madam, who is Associate Professor in the Department of Prasuti Tantra and working in SDM College of Ayurveda since last 20 years. So madam has completed PG and PhD from the same college and have guided and co-guided a good number of students, which publications also. She has publications. She has given talks on white discharges, on PCOS also. So I welcome Dr. Vidya ma'am. Please continue with your topic, ma'am. Thank you, Shilpa ma'am. At the onset, I would like to thank your foundation, also Ayush Darpan Foundation, for giving me an opportunity to express my thoughts. Could you please share my PPT, please? Yes, yes. And topic is obesity and menstrual disorders. So I think it's a great topic. So please, ma'am. Hope I will give you some justification. Yes, yes, definitely. So I'm sharing the PPTs. Yes, ma'am. Is it visible? Yes. So, good afternoon, everybody. I know obesity has been talked about. We have talked. There was a lot of discussion on obesity from the morning on, from 10:30 onwards. So I'm not going to in detail about obesity, but I will tell you because of obesity, what all menstrual disorders can occur, or what do we face in our daily life, or how can we overcome the obesity in associated with menstrual disorders. So at the end of the session, probably you will have an idea about what obesity is, what are the menstrual disorders that can be associated with obesity, and how do you manage such disorders like menstrual disorders with obesity. So in our clinics, sometimes I have had a patient who is very obese and had no menstruation at all. Since many days, she is not having menstruation at all. So it can be taken as a lifestyle disorder, or it can be taken as a pathological factor also. In her obesity was a lifestyle disorder, which on reducing regulated her menstruation. So people can come to us, or girls can come to our clinic with irregular menstruation like amenorrhea to heavy bleeding also. So we get a range of menstrual disorders from amenorrhea to heavy bleeding also. So coming to the next slide, overweight and obesity is defined. Next slide, please. Next slide. Overweight and obesity is defined as abnormal or excessive fat accumulation that presents at a risk to health. One. Second, we all know that BMI is being considered, and over 25 we consider it as overweight, and above 30 we consider it as obese. So if above 30 or higher, it falls under the obesity range. Now, earlier the WHO considered obesity as just a lifestyle problem. But today, obesity has come to the WHO has come to a conclusion that obesity is classified as a disease proper. So the menstrual irregularities that we have come across, or we will come across with patients, as I told you, is from amenorrhea to menorrhagia. So there can be menorrhagia, there can be polymenorrhagia, there can be oligomenorrhea, there can be dysmenorrhea, or there can be even premenstrual syndromes that can be seen in girls. So there has been studies that has been taken whereby adolescent girls were taken into consideration in a Delhi school, and it was come to a conclusion that there is
the malnutrition one more to be seen in the population of the girls, school girls. And in that malnutrition group also, they found that dysmenorrhea was supposed to be the greater fact for as a menstrual abnormality or a menstrual problem. So as I told you, when coming to complications of menstruation or menstrual problems, it can range from a plain amenorrhea to a case of dysmenorrhea and menorrhagia. Next slide. Now, factors that influence the menstrual irregularities. Next one, please. Factors that frequently influence the menstrual abnormalities would be in the form of hormonal changes. We all know that is why you find that when a menarchal girl comes to you with amenorrhea, that is, as soon as she has come, say for example, 2 days back, I had a patient of mine who told her daughter has had a menarche and she had bleeding for only 1 day. Do we treat her? No, we do not treat her. She is thin, she is short, but we do not treat her. Even if she is obese, I wouldn't treat the patient with who's come at the menarchal age with a menstrual disorder like amenorrhea or maybe spotting for a day, because I wait for 1 year, 2 years for the hormones to balance themselves. There are hormonal changes that is taking place in our body, and it starts from the GnRH, that pulsatile manner that is secreted in the night. So during the night, you find that there is a secretion of the GnRH, which is in the pulsatile manner. And this is the one which regulates the hypothalamo-pituitary ovarian axis, so that there is a release of the FSH-LH and the ovarian sex hormones. And then menstruation takes place. So there are the role of the hormonals, that is the hormonal factors which is responsible for the menstrual irregularities. Genetically, you find that there can be menstrual irregularities that can be seen and run in families. For example, you find that there is dysmenorrhea that is running in family, and serious medical conditions of the patient itself can be another factor which can lead to menstrual irregularities. Lastly, even body mass index, that is BMI, is also supposed to be one great contributing factor for menstrual irregularities. So when you come to the adolescent age, the menstrual irregularities, we know that it can range from plain amenorrhea to a condition where there can be heavy bleeding also. So you find that if it is plain amenorrhea, as I told you just now, if it is plain amenorrhea, then we start the patient, because we know that menstruation should be a cyclic menstruation of 28 days with 3 to 5 days of bleeding. The girls will come saying that there is bleeding. And sometimes there are certain girls who have physical stress or a mental stress, and they get amenorrhea and they neglect that. They don't approach the doctor also. So is it correct? Where do we have to correct them? Especially where do we have to correct them? How we have to educate them? Especially when they have reached the age of adolescent girls, when they have reached the age of menarche, where exactly do we have to correct them? Where exactly we have to educate them? So we have to tell them about the use of napkins or about the use of sanitary napkins, how they can be used, at what regularity it should be changed. So hygiene is also to be maintained, because if hygiene is not maintained, or if the ahara vihara that has been told by our acharyas is not being maintained during this period, it is then that we find that it can lead to other complications that we already see in our classical texts in the form of Yoni Vyapat, Artha Vyapat, and Asagdara. So we have to teach them, we have to educate them as to how they have to face their menstrual problems or menstrual cycles. So we consider it to be regular if there is a normal flow for 3 to 5 days, and one sanitary pad, if it is fully soaked, then we consider it to be about 5 ml of blood. So an average of 5 ml blood is one fully soaked pad. And at an average, in one cycle, there can be almost about 10 pads that can the girl can have. So almost 45 to 50 to 80 ml is considered as normal menstrual bleeding. So we find that the girl will come, or probably during the menarchal age, the girl can come with a heavy bleeding also. So there might be, the girl can, how do you consider it to be heavy? We know, we tell them 2 pads per day, 3 pads per day is considered normal. And if it is there for 3 days, after that it reduces, that also we tell them. But how do we tell them it is heavy bleeding? There are some people who do not even know, who are not even aware of the fact that there can be heavy bleeding, and the bleeding that is going is heavy. So if the girl assumes, or if she by chance had to change her pad about 4 pads per day, and bleeding for more than 4 days or 5 days, then we consider it as a prolonged heavy bleeding. And it is at that time then we have to tell the girl to approach a gynecologist. For example,
I've had a patient who had just had a menarche 1 year back and had severe dysmenorrhea. She had gone to modern doctors and taken her painkiller, but still her dysmenorrhea didn't come. It used to incapacitate her from a day-to-day work. It was a young girl. She was a young girl going to school also. So what happened is they came to us and the pain that she pictured herself was so heavy that I had to ask her to go for a scan. Usually, as I told you previously, in a menarchal girl, for the first 2 years, if there are any menstrual irregularities, even from plain dysmenorrhea to bleeding, we do not give them any line of treatment. But the girl had so much dysmenorrhea that I had to take a scan, and it was seen to be a chocolate cyst. So this indicates the fact that we have to educate even menarchal girls, even educate adolescent girls about the problems of menstruation and what are its consequences later in life. Now, coming to increased pain and cramps, you find that is also, dysmenorrhea is also a fact that can be seen in adolescent girls. And dysmenorrhea is of two types, primary dysmenorrhea and secondary dysmenorrhea, as everybody knows. Primary dysmenorrhea is the girl will be relieved of the pain as soon as menstruation starts. And secondary would be associated with a pathology. Intermittent menstrual bleeding. There are instances where patients come saying that I have had spotting for 3 days and then the bleeding starts. So this will tell you about the functioning of the corpus luteum and how there is the changes that is taking place in the girl. So along with all these menstrual irregularities, there is also a possibility that the lady girl can be having obesity also. So obesity usually leads to, why obesity can cause irregular menstruation is, it leads to dyslipidemia. There will be good amount of cholesterol. There will be high cholesterol in girls who are obese. And this can cause a disturbed steroidogenesis, which manifests in different ways like PCOS. Everybody knows about PCOS. PCOS can be an ovulation, oligo-ovulation, or it can be with hirsutism and with confirmed with an UHG. But you find that in PCOS, sometimes there will be thin PCOS and there will be obese PCOS also. So how do you understand a thin PCOS and how do you understand an obese PCOS? So in an obese PCOS, naturally, when we see the patient herself, we can understand that the girl is having PCOS because she also comes with complaint. The triads of PCOS are something in the form of amenorrhea, oligoamenorrhea, hirsutism, and the scan reports which confirms the PCOS. So in these conditions, what happens is steroidogenesis takes place or disturbed steroidogenesis takes place. So there is dyslipidemia or there is excess cholesterol, and the cholesterol is being, if it is one which leads to obesity, then you find that there is disturbance in the different steroidogenesis that has been formed. You find that there can be excess testosterone being formed. You find that there is also the conversion or the aromatization that is taking place and resulting in the formation of estrone. So in all these conditions, you find that in PCOS also, there are instances where the patient comes with just amenorrhea or even severe bleeding. There is severe bleeding which will take for months together, which will not be brought under control. So that is also seen in PCOS. Menopause, in conditions of menopause, how do you find that there is disturbed steroidogenesis? Is that the obesity is one factor I have told you where there is excess cholesterol, and the cholesterol has been converted into estrone. So the excess estrone helps in, sometimes you find that there might be excess bleeding in the perimenopausal age, or in the menopausal age, there can be a depletion of FSH and LH, whereby you find that the patient can go in for premature ovarian failure. Hypogonadism has already been described. Idiopathic hysterism, as I told you, it is under the influence of the testosterone that is there. Androgen resistance syndrome because of dyslipidemia and hyperinsulinemia, you find that there is androgen resistance syndrome. Conditions like oligo-ovulation, premature corpus luteum. There is a corpus luteum which is secreted, which is usually, as ovulation takes place, the formation of corpus luteum is also there. But the corpus luteum has got a lifespan of 10 days. Now, suppose if there is a chance that it can prematurely undergo demise. So when they undergo premature demise, there can be spotting that can be seen followed by normal menstruation. Or in conditions of repeated abortions, where you find that corpus luteal insufficiency is another factor. Now, coming to the Ayurvedic aspect, you know that Taulia is considered to be a condition where there is a pendulous abdomen, pendulous breast, or pendulous buttock with the accumulation of medas and mamsa. And this is considered to be disappropriate to the growth of the patient. So then it is considered as Taulia. It comes under the Ashtanindita Purusha. It is also included as a Santarpanajanya Vyadhi.
there is imbalance between the energy that has been consumed and the energy that has been utilized. So you find that there is accumulation of fat in the body. And Acharya Charaka says that in Atistula person, excess growth of Medho Dhatu obstructs the channels and thereby other dhatus are malnourished and they are gradually depleted. And due to this, you find depletion of the dhatus. Rasa dhatu has also been depleted. The other dhatus also will be depleted. Its upadhatu like artava dhatu will also depleted. Sometimes it can result in artava drishtis. The nidanas that has been told are there can be aharatmaka nidana, viharatmaka nidana, manasa and others are considered. When you consider the aharatmaka nidana, adhyashana, taking food on top of the previous food that is already been not being digested, atibrahmana ahara, guru ahara sevana, kleshmala ahara sevana, madhura ahara sevana, and will come under the aharatmaka chakarani, which is responsible for staulya. Viharatmaka, we know that avyayama, avyagaya, divasopna, sukasya, all this comes under viharas. But nowadays, under the inclusion of viharas, they have also included under the manasa vikaras. Manasa vikaras, they say that happens, there is no worries at all. The mind is very idle. In all such conditions, obesity can be there. Ideal person is supposed to be a person who can have obesity. But here, now they have included that day-to-day stress as well as binge eating is supposed to be another fact which can lead to a manasika vikara, which can lead to obesity. Now, other factors can be in the form of amarasa, which is in the form of indigestion, snigdha madhura vasti sevana, taila abhyanga, etc. Other nidanas which can be included. Bija dosha is also there. Coming to the samprapti, we all know that nidana sevana, which will cause jataragni mandya. So dhatu poshana of the uttarantara dhatu parinama doesn't take place. So you find there is amotpatti also. There is also avarana that takes place. So because of avarana, there can be arthavadrishti. Or in the other side, when you take that, when ahara rasa is been not depleted, there is sama with rasa, dhatvagni mandya will be there, staulya will be there, rasadrishti kshaya lakshanas will be there, and the upadhatu, that artava shoshana, will also take place. So this is how arthavadrishti samprapti can be taken into consideration. As in our class 6, we know that if we consider the different menstrual irregularities, this can be headed under the 3 different aspects that we usually find. That is Univyapats, Arthavadrishti, and Asrigdara. So when they consider the Univyapats Nidana, they also say that it is Mityahara, Mitya Vihara. Again, Pradushta Arthava, Bija Dosha, Daivacha, all these are considered to be the Nidanas. Now, when we consider the different Univyapats, for example, Udhavarta Univyapata, Vataja Univyapata, Pariputa, Kashtatava, Prakshana, all these resemble towards dysmenorrhea or painful menstruation, where there is the rule of Vata that is to be taken into consideration, and Vatahara line of treatment is being advised. So somewhere like Sneha Sweda, Dasamula Shira, Anuvasana Niruha Basti can be taken. Or another condition would be in the form of an So this is the symptom complex which is seen in Vandyatva, in Yonishosha, where there is suppression of natural urges of menstruation, Chandi Yoni Vyapat, which can be taken as Astani, etc., where there is genetic disorder, Lohita Kshaya, Rajaska, where you find that there is excessive bleeding and Vaivarnata, etc., is seen. Or assessing the Nidana Samprapti Dosha Lakshanas has to be seen, and then understanding them should be. And the topic that can be taken for menstrual disorders is Artavakshaya, where they say that Itochita Kala Adashana Alpatacha Univedana. So that is also a condition which can be taken as hypomenorrhea. And when you take the other factors where there can be the menstrual irregularities from amenorrhea to asrigdara, we can also take certain infections and inflammations. So infections and inflammations like paripluta, pittala univyapit, etc., which also can lead to pelvic endometritis-like conditions. Slashmika univyapit like Khandu, Pichila-Strava, where there can be vaginitis, and Kapahara Aushadhi is the line of treatment. Suppose if there is vaginal secretions and there are itching, then you can consider them to be factors like Upapluta or Acharana univyapit, Vipluta, where even uncleanness of the vagina is all taken into consideration. Now, as I told you earlier, this has already been mentioned. There was one study which was done on a population of a school in Delhi, where the menstrual pattern and problems in association with body mass index among adolescent schoolgirls was done by Monica Singh in 2019. And the result was that out of 210
then out of 210 adolescent girls, 114 were having a BMI less than 18.5, showing undernourishment, while 13 adolescent girls were overweight. That means I just want to highlight the fact that even undernourished girls can have menstrual disorders. So adolescent girls who had a BMI less than 18.5 experienced more symptoms and problems associated with menstrual cycles, which was statistically significant. So not only obesity can come to a condition of amenorrhea probably, but malnourished conditions can come to a condition of severe dysmenorrhea. So dysmenorrhea is supposed to be the most common menstrual problem among adolescent girls. Next, coming to the pathophysiology. Obesity on menarche, as I already told, this has already been discussed in the previous speakers. They told about the role of leptin, which regulates the gonadotrophin surge, initiates the development of pubertal stages. Changes takes place in the body weight and composition. The age of menarche also, obesity is seen at a younger age in obese girls. You find the age of menarche will be very early. Effect of obesity on menopause, as I told you, there is a condition where you find that several years before the menopause sets in, the patient will be having, if the patient is obesity, there will be menstrual irregularities like excessive bleeding or DUB-like conditions can be seen. Now, coming to effect of obesity on hormones, certain hormones will be seen to be increased and certain hormones will be seen to be decreased. So as I told you, there is a conversion, there is aromatization taking place. There is estrogen in the form of estrone that is seen. So estrogen through peripheral conversion of androgens to estrogen, especially androstenedione in adipose tissue by aromatization, estrogen, that is estrone, which is not a potent form of estrogen that is seen. Insulin also, they stimulate the production of androgens in ovarian stromal tissue. Testosterone is also increased because of androstenedione. Reduced one is that sex hormone binding globulin is seen to be decreased because of increased level of circulating free testosterone. Now, when we know that there is conversion of cholesterol to estrogen, peripheral cholesterol is also converted into estrogen. So in obese patient, there is excess cholesterol also. So what happens when there is excess of estrogen? There is excess estrogen which can affect the endometrium of the lady. So you find that there will be an ovulation, but there will be a thick endometrium that can be seen. So the endometrium will be exposed to estrogen for a long time. So the unopposed estrogen that is exposed to the endometrium can cause an hyperplasia of the endometrium, and which can lead also to endometrial carcinoma. Now, cholesterol is a precursor for sex hormone, and the process of aromatization occurs at the levels of the muscles and the adipose tissue. Obese people have more adipose tissue, and the conversion of androgens into estrone may be altered when compared to healthy females. Estrone is biologically less potent when compared to estradiol. This is what is the pathology that lies behind the menstrual irregularities that takes place under the influence of the hormones. So how do you manage such case? So actually, when we come to general principles of treatment is Nidana Parivarjana, Shodhana, Shamana, Rasayana, and Patya. Patya can be done. When you come to Stula Chikitsa, as such, you can go for Nitya Langhana, either in the form of Vamana Virechana according to Vidya Ballal and Deha Ballal, or you can go for Lankana and Rukshana can also be done, or Rukshana Udvartana can be done. So this previously told Udvartana can be done, Ruksha Udvartana can be done with Polakulata Churna, or Trifala Churna Udvartana can be done. Extensive use of styla is also recommended. Samana line of treatment would be like the use of Guru and Apatarpana article, and Lekani Dashamini drugs can also be used. So the Shodhana would be Vatakapahara Bastik and Lekana Bastik can be used. For Pitta, you can go for Virechana, and for Kapha, you can go for Vamana. Shamana would be in the form of Deepana Dravyas, Pachana Dravyas, Artava Janaka and Artava Pravartaka Dravyas, like already told in Artava, they say you can go for Agni Anamsa Dravyana Vidvat Upayogaha, and they say that you can go for Tila, Masha, Rasona, Shatavari, Gugulu, Shatapushpa, all these drugs, Kumari, Haridra, all these are drugs supposed to be Artava Janaka. At the same time, they are lipophilic, they are having the action of, they are all supposed to be hypoglycemic, hypolipidemic, so they can be used for Artavajanic also. Now coming to the Ahara Vargas, that has been told in the form of Patya, that can be Yava and Kodrava. In the Apatya, it can be in the form of Goduma or Navanna, Shali. Shamidanyas can also be used in the form of Mugdha, Rajamasha, Kulata, Masura. Kulata is already included under the drugs of Agneya Dravyana.
Masha and Tila is supposed to be, Masha and Tila is supposed to be apatya. That is actually when it comes to a condition of, it is menorrhagia, it is apatya. But when it comes to amenorrhea, when arthrochia is taken as a condition, then it can be considered as patya only. Shaka vargas like Patola, Vrinaka, and Madhuraphala. Dravar vargas like Takra, Madhu, Ushnodaka, Dugdha, etc. is been taken. Ichtu, Navanita, Grata, and Dadi are supposed to be apatya. And Mamsarata, Rohitamasya, and Anupama Audaka is supposed to be apatya. When it comes to, again, the regimens that has been told, Shrama, Jagarna, Vyavaya, Nitya Lankana, Chintana, Shoka, Krodha are supposed to be patya, while Shitala Jalasnana, Divasupna, Avyayama, Avyaya, Sukhashaya, Nitya Harsha, Chintana are supposed to be apatyas. We also have one concept where there are studies that has been undergone where junk food, the students who take in more of junk food, how it affects their menstrual cycle and their BMI. So it was found that junk foods are containing more of fat substance and sugar substances rather than nutrient factors. So it affects the HPO axis by disturbing the hormonal levels. And they are considered, if you consider under Ayurveda, they can be considered under the Viruddha Ahara, or you can take it as Paryushita Ahara, or Shushka Ahara can be taken. And this is also supposed to be, see, when we consider under one of the factors for Yoni Vyapas, we consider Mithya Ahara and Vihara. So under Mithya Ahara and Vihara, Mithya Ahara we can take as one of the reasons for Yoni Vyapas. So these Aharas like Viruddha Ahara, Paryushita Ahara, Shushka Ahara, all can lead to Arthav Dushtis. Coming to the conclusion, we know that from adolescence onwards, we find irregular menstruation. So menstrual disorders they form the commonest gynecological complaint among adolescents. Advise them, teach them, educate the adolescent girls as to what is to be expected and what is abnormal in them. Unhygienic menstruation is supposed to be the prime cause of menstrual diseases, along with the disturbed mental peace and dietary factors. Lukewarm bath water, nutrient-rich fiber, and easily digestible food with lots of water and rest is advisable during menstruation to avoid the premenstrual syndromes. Excess body strain interferes with the normal downward flow of menstruation, where there is Apanavayu Vaigunyata or Apanavayu Dushti, and which can lead to conditions like dysmenorrhea, etc. During the reproductive age, infertility is supposed to be the main complaint, and infertility, Garbham na gacchati, is coming under the context of all the factors like Yoni Vyapas, Arthavdushtis, and Asragdara. So you find that infertility is one of the main complications. Maybe under the it can be a single factor of PCOS or obesity mixed with PCOS and other complications like endometriosis, oligomenorrhea, ovulation, ovarian dysfunctions, etc. Early perimenopausal age disturbances in the menstrual flow is in the form of menorrhagia. This can be due to any underlying pathology, or it can be due to a disturbed hypothalamo-pituitary ovarian axis. So menopausal age also you find menorrhagia is relevant. There, as I told you, it is relevant in conditions of obese patient, where you find that obesity is one factor because of dyslipidemia, high cholesterol, which gets converted to estrogen or estrone, and heavy bleeding is seen. Postmenopausal disturbances like obesity can again lead to the excess estrogen, and the estrogen supplements provokes the endometrium. So there is thickening of the endometrium. So this can cause endometrial carcinoma. So these are the certain factors which can cause disturbing factors which can cause menstrual irregularities from amenorrhea to menorrhagia during the whole of a lifespan of a lady, maybe from a menarchal age to menopause. So with this, I conclude my talk. I hope I have given justice to whatever has been asked of me. Thank you for giving me an opportunity for voicing my thoughts. Any questions? Thank you, ma'am. Thank you very much. It was really nice. Thank you. There is a question, I suppose, no? Yeah. Is there any questions? Yeah, I think one question is there. PCOD and increased prolactin levels in an unmarried woman aged 26 years. What should be the line of treatment? See, usually what do we do is PCOD, sometimes we go for Udvartana because we give 3 to 7 days of Udvartana and then go for Virechana or Vamana.
rather than going for Vamana, PCOD sometimes what happens is it can be an anovulatory cycle. When we give one Virechana itself, sometimes they go for ovulation and there can be a menstruation. So along with prolactin high levels, I think my option would be Udvartana along with Virechana would be a better line of treatment to deal with that or tackle the problem. Because I have had a girl who had high levels of prolactin and I had given her Virechana, and after that the prolactin level also came down and she was also having normal menstruation for some times afterward. But follow-up she has not done. But for the next few, she would have all male features in her. She had, the breast development was not seen in her. There were small hairs in her. Voice was going towards a male voice. But still after one Virechana, the prolactin level also came down and her menstruation also, she started menstruating regularly. And then you can go for Shamana Aushadhis. Shamana Aushadhis would be in the form of Agneya Dravyans you can give, which can bring in menstruation. Like, for example, Kulatadi Kashaya, Tila Kashaya. See, sometimes it might be something to do with the, Jataragni also. So from the Jataragni, if you go for Agni Deepti Dravyas also, when we do this Panchakarmas, the Agni in the Jataragni and the Dhatu Agni level will be corrected. So then there will be normal transformation of the Dhatus accordingly. So this is how I would opt for a patient of PCOS and hyperprolactinemia. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you very much. When I give Virechana, I give Mritu Virechana. I do not give Tikshna Virechana at all in all such conditions. So actually what happens is a patient won't be fit for Vamana, but at least at the time, but there are instances where I've heard my own colleagues saying that Vamana is better than Virechana. But I give Virechana with the Mritu Virechana I give so that Vata can also be brought under control. At the same time, it can also bring about an ovulation. Yes, ma'am. Ma'am, one question is there that nowadays teenagers are very much suffering from this dysmenorrhea thing. Yeah. So, and clots in the bleeding, as you have just now told about the pads and the menstrual flow. So how to look for that, or is there any? When it is, it is, as I told you, I even had a case of a small girl who had just had a menarche and come within the next 6 months with severe dysmenorrhea. See, when we give some line of treatment, usually we give dysmenorrhea, Vatanulomana type of treatment. For example, I give them Saptasara Kashaya with Hingoshtaka Churna, and I give them Sukumara Kashaya. See, if I wait for 2 cycles, usually it comes down if there is no pathology. If it doesn't come down, that means there is an underlying pathology. Then you have to advise for a scan and then do the repeated treatment as and what is required. Yes, yes. But Saptasara Kashaya is supposed to be the drug of choice for dysmenorrhea. Saptasara Kashaya, okay, ma'am. For oral administration? Yeah, it's for oral. See, for young girls, I don't go for any Panchakarma. I usually start with Shamana Aushadhis. So Shamana Aushadhis, I start with Saptasara Kashaya with Hingoshtaka Churna and Sukumara Krita. This is how I start. So the line of treatment, it should be Vatanulomana. So when it becomes Vatanulomana, the pain will be reduced. Suppose if it is malnourished, then along with that, I will also give something to improve her nourishment. Yeah. Ma'am, some women go for long with this dysmenorrhea thing, like throughout the life. For example, no, there are lots of girls who come to us with dysmenorrhea and with Saptasara. This is supposed to be one medicine which is having a very good effect on dysmenorrhea. So usually within three cycles, the patient will get fully relieved of dysmenorrhea. But in spite of that, it is not relieved, then there might be an underlying pathology. So the underlying pathology has to be understood with the help of an USG, and the treatment will be given likewise. Then I ask them for an admission for Basti. Usually I give them Basti. Yes. Okay, ma'am. Regular Basti, Anuvasan with Niruha? Anuvasana with Niruha I give Dashamula Shira Niruha and Dashamula Taila Anuvasana Basti. Yes, ma'am. Yes. So thank you very much, ma'am. Thank you very much for the great session. Yes. So I think this obesity multi-mirror approach is going well with all the speakers, and it will definitely strengthen the Ayurveda fraternity, and also I think we will also deal the patients very nicely afterwards after this webinar. So some of our questions are also cleared with the great speakers. So now moving forward with this session, I would like to invite Dr. Manisha Suryawanshi, ma'am, who is MBBS and
yoga specialist in Keveldham, Lonavala from Pune, Maharashtra. So I would like to invite Dr. Manisha Suryawanshi. I think yoga has a great contribution in this obesity. Yes. So I invite Dr. Manisha. Are you there, ma'am? Dr. Manisha Suryawanshi. हेलो. हाँ, yes sir. हाँ, इस पे लॉग इन करिए हमको. ठीक है. Yes sir. हाँ, स्क्रीन शो करिए इसमें. अभी आ रही क्या मैडम, आ रही क्या? हाँ हाँ. Yes yes. Okay. Okay. No issue. एक मिनट. हाँ. Yes yes. No issue. हाँ. स्क्रीन शेयरिंग ऑन. दे दिया है. She can share. Yes. Yes. One question is there, ma'am. तब तक हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं डॉक्टर विद्या मैम. दो एक 24. Patient's age is 24 or having menstruation regular, but menstrual bleeding is very less, 2 days. What should be the line of treatment? Yes, ma'am. Yes. Okay, please start. Yes, yes. Dr. Vidya ma'am, are you there? Okay, we will discuss afterwards. Sir, you can start. Yes. Okay. Good afternoon, everybody. Hello. Yes, ma'am. Yes, audible, ma'am. Yes, yes. Yes, yes. Please. Welcome, welcome. Yes, yes. Okay. ओबेसिटी, अभी ओबेसिटी के बारे में बहुत कुछ लेक्चर्स अच्छे से हुए, ऑल फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट, डेफिनेशन एंड एवरीथिंग. तो उसमें न जाते हुए मैं सीधा मेरे योग के इसमें आती हूँ. बेसिक जो योग है प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकली योग हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं दिन भर का, दिन में भी, और बेसिक योग का जो मालूम होना चाहिए, ताकि हर एक इसमें, यानी बेसिकली आयुर्वेदा में सबसे इम्पोर्टेंट जो बोला गया है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, तो उसमें जो बेसिकली ऋतुचर्या और दिनचर्या में मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट योग है, कि जो योग हर एक चीज में हमें यूजफुल होता है. अगर ओबेसिटी के बारे में हम सोचेंगे तो ओबेसिटी का प्रिवेंशन, आफ्टर पंचकर्म, मेंटेनेंस, आफ्टर आप मेडिसिन के बाद सब इसमें हम योग का बहुत अच्छे से एप्लीकेशन कर सकते हैं. तो बेसिकली वो एप्लीकेशन करते वक्त इंस्टेड ऑफ उसे एक्सरसाइज या ऐसे न सोचते हुए, अगर हम योगिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से यूज करेंगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो सबका आजकल अंडरलाइन कॉज है स्ट्रेस, तो वो बहुत अच्छे से रिलीव हो जाता है, ऐसे मुझे लगता है थ्रू आउट वो प्रैक्टिस के इसमें भी. क्योंकि हम साथ में वैद्य संतोष सूर्यवंशी और मैं साथ में प्रैक्टिस करते हैं होलिस्टिक अप्रोच में. मैं वैसे एलोपैथी कुछ करती नहीं हूँ, तो वो हमें देखने को प्रैक्टिकली भी मिलता है कि पेशेंट बहुत अच्छे से और आनंद से पूरा दिन उनका जाता है. तो ये इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है बेसिकली डेफिनेशन जो है योग की. आजकल हमें सबको पता है कि व्हाट इज योग, जो बेसिकली यूज ये इस धातु से आया है. इसका मतलब है यूनियन,
तो यूनियन किसका होता है वो? तो इट्स अ यूनियन ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट या सिंपल योग का मतलब हम हमारे दिन में पूरे ला सकते हैं या पेशेंट को भी समझा सकते हैं। तो वो किस तरह से समझा सकते हैं? तो बेसिकली हमारा जो भी हम करते हैं, तो इसमें अगर हम पूरा यूनियन होके, दैट मीन्स उसको पूरा ध्यान देके करेंगे, तो अपने आप वो मन के साथ हर एक एक्शन हो जाती है, तो वो इसमें आनंद आता है। इसीलिए मैं मेरे पेशेंट को भी बताती हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट हमारा है कि हम कुछ तो कर्म करते हैं या कुछ ना कुछ ज्ञान हो या कुछ भी थिंग हो, हम अगर 100% वहां प्रेजेंट होके करेंगे तो उसका आनंद बहुत अच्छे से आता है। नॉर्मली प्रोफेशनल लेवल पे वो सब जन करते हैं आजकल, ये आईटी इंडस्ट्री हो या और कुछ भी हो, तो उसमें वो 100% वहां पे ध्यान देते हैं, तो उसका आउटपुट अच्छा आता है, उसमें बहुत आनंद आता है। लेकिन हम जो हमारा नॉर्मल रूटीन है उसमें भी वो चीज अगर हम करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम सुबह से लेके सब नहा रहे हैं, तो नहाते वक्त भी पूरा ध्यान अगर हम वो जो भी वाटर है या वो अच्छे से इतना आजकल वाटर मिलता है वो हमारे शरीर पे आके प्रसन्न लगता है, ये अगर ध्यान देके हम नहाएंगे तो अपने आप वो आनंद दिन से ही शुरू होता है। इंस्टेड ऑफ जो हम नहाते नहाते वक्त वहां पे कुकर की सीटी हो रही है या कपड़े क्या डालेंगे, ये सारे विचार जब आते हैं तो वो छोड़ के, यानी उनको रिएक्ट न होते हुए अगेन अपना ध्यान हम नहाने पे लेंगे, तो वो आनंद बहुत आता है। और हर एक चीज का जो योग का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया है, लिव इन अ प्रेजेंट, वो अपने आप क्लियर होता है। सेम थिंग हम खाने में करेंगे, जो भी खा रहे हैं वो पंच ज्ञानेंद्रिय से खाएंगे, उसके ऊपर पूरा निवाले के ऊपर पूरा ध्यान देंगे, तो उसका न्यूट्रिशन भी बहुत अच्छे से हमें मिलता है। और आधा काम ये ओबेसिटी का सबसे इम्पोर्टेंट आजकल जो कॉज है स्ट्रेस रिलेटेड और जो साइकोसोमेटिक सारे कॉजेस है, तो उसके ऊपर बहुत अच्छे से परिणाम आता है। ये हम आजकल प्रैक्टिकल देखते हैं। तो शरीर और मन अगर हमारा एक साथ रहेगा तो अपने आप वहां से बहुत अच्छे से आनंद आता है, उसमें एक प्रकार का जॉय आता है, जो आनंद हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, वो योगिक जॉय बोला है, तो वो अपने आप आता है सिंपल। तो वही आनंद अगर 100% तक जाता है तो वो उसे हम बोल सकते हैं योग का अंतिम स्थिति, या उसे मोक्ष, समाधि या सोल। तो उसका अगर मुझे लगता है कि वही आनंद का अगर हमने ये यूनियन सिर्फ थीम से एक 1% भी प्रैक्टिस करे, कुछ ना करते हुए दिन भर सिर्फ इतना ही कि जहां पे है वहीं पे रहना है। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि ज्यादातर रिएक्ट न होते हुए, जो भी एक तो विचार आते हैं या कोई काम का ये आता है, तो उसको सिर्फ रिएक्ट नहीं होता है, जिसे हम प्रत्याहार बोलते हैं, सिर्फ रिएक्ट नहीं होना है और जहां पे है वहीं पे फिर से आना है। तो अपने आप बहुत अलोंग विथ ओबेसिटी बहुत सारे अंडरलाइन कॉजेस हमारे कम होते हैं, तो ये हमने देखा है। तो इसीलिए मैंने योग का बेसिक मतलब हम प्रैक्टिकली कैसे यूज कर सकते हैं, तो इस तरह से अगर हम कोशिश करेंगे या अपने पेशेंट को भी कोशिश करने के लिए बोलेंगे, तो बाद में फॉलोअप में बहुत सारे पेशेंट वो बताते हैं कि पहले से मेरे विचार बहुत कम आते हैं, इसके वजह से जो घर में जो वुमन हो या कोई हो तो उसमें जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो अपने आप वो कम होते हैं, इंटर कम्युनिकेशन जो होता है वो अच्छे से होता है, तो अपने आप वो सारे कॉजेस कम होते हैं। तो ये योग हम नॉर्मली प्रैक्टिकली अगर यूज करेंगे तो एक बेसिक जो योग बोला है पातंजलि योग सूत्र में, जो जिसे हम अष्टांग योग बोलते हैं, तो वो पूरा का पूरा अष्टांग योग हम हमारे दिन में
हमारे प्रैक्टिकल इसमें यूज कर सकते हैं। तो जो वो अष्टांग योग है उसे बोला गया है, जो सबको पता है हमें, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो यम और नियम हमें पता है, यम इज अ सोशल कंडक्ट, समाज के स्थिरीकरण के लिए जो भी हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं उसे यम बोले हैं, जैसे कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो इस चीज का थोड़ा थोड़ा सा अगर हम प्रैक्टिकली यूज करेंगे तो अपने आप अगेन हमारी मेंटल स्टेबिलिटी अच्छी रहती है। क्योंकि आज ऐसा हुआ है कि ये मॉडर्नाइजेशन और इसमें ये चीज हमें किसी ने बताई भी नहीं है, और हमारे अभी बच्चों को भी कोई बताता नहीं है। तो इसीलिए अगर हम वो थोड़ा सा सिंपल सा अहिंसा है तो एक मन में भी रहेगा, तो हम अपने आप वो हिंसा कम करने लगते हैं, हर एक इसमें कायिक हो, वाचिक हो या मानसिक हो, डिपेंड ऑन। तो अपने आप वो एक स्तरीय अच्छे से मिलता है और वो पूरी ट्रीटमेंट हमारी अच्छी होती है। और दूसरा नियम, ये तो हमें पता है, नियम खुद के लिए जितना हम खुद पर्सनल रेगुलेशन, एक सिंपल सा थीम, सिंपल सा रूल अगर हम रोज यूज करेंगे, एक अभी जो बताया कि खाने के टाइम पे सिर्फ पूरा ध्यान खाने के ऊपर लगाना है, या वो खाना पूरा पंच ज्ञानेंद्रिय से खाना है, दिस इज ऑल्सो नियम। सिंपल छोटे छोटे नियम हम अगर यूज करेंगे तो अपने आप उसका बेसिक न्यूट्रिशन, या हम बोलते हैं कि एक नॉर्मली एब्सॉर्प्शन, जो इनर एब्सॉर्प्शन होना चाहिए वो अच्छे से होता है। अगर हम उसको उसकी तरफ ध्यान देंगे, पूरे हमारे थाली के ऊपर सिर्फ ध्यान देंगे, उसका कलर कितना अच्छा है, उसका सारा कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है, और पूरा हम अच्छे से अगर चबाए, पूरा सलावे के साथ अगर अच्छे से मिक्स होगा तो अपने आप न्यूट्रिशन पूरा अच्छा मिलता है। और जो मल है, जो बेसिकली बोले मलम शरीर से च वैद्य के ना, तो पूरा उसका मल अच्छे से बाहर निकलता है, किडनी द्वारा हो या स्वेद हो या पुरुष हो या मूत्र हो। तो नियम, सिंपल सी बात हमें बहुत अच्छे से, क्योंकि बाकी कॉम्प्लिकेशन या बाकी ट्रीटमेंट तो हर एक यहाँ अभी बहुत सारे अवेलेबल है, इसीलिए मैं सिंपल सारा कुछ बता रही हूँ। तो ये एक सिंपल नियम है। वैसे ही वो जो 5 शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम हम, वो तो हायर नियम हो गए, वो यूज कर सकते हैं। या सिंपल सा नियम, सुबह जल्दी उठना, या ये खाने के टाइम पे पूरा पंच ज्ञानेंद्रिय से उसको खाना। इसीलिए हमारे शास्त्रों में या हमारे पीछे सारे ग्रैंडफादर हो या कोई हो, उन्होंने वो भी प्रेयर का भी इम्पोर्टेंस बोला है। तो वही प्रेयर का इम्पोर्टेंस, एक मिनट या आधा मिनट हम अगर पूरे हमारे थाली को देखेंगे तो अपने आप हमारा क्लेश जो है, बाकी सब पूरा सिस्टम या मेटाबॉलाइजेशन सिस्टम पूरा नॉर्मल आके वो अच्छे से अब्सॉर्ब करेगा। तो ओबेसिटी का अपने आप प्रिवेंशन भी होगा और मेंटेनेंस भी होगा। तीसरी बात है जो आसन, बेसिकली तो आसन जो है अभी ओबेसिटी के लिए बाकी पंचकर्म हो या बहुत सारे ट्रीटमेंट या बहुत सारे जिम हो या डांस हो, कितने सारे बहुत कुछ ट्रीटमेंट है, लेकिन वो सब आयुर्वेद और योग या डाइट, इसके बिना सब अधूरे होते हैं। तो उसको अगर हम अच्छे से जोड़ आसन के माध्यम से देंगे तो वो पूरा उसका जो साइड इफेक्ट होता है वो अपने आप कम होता है। अगर हम आसन जैसे करें, जो आसन का सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसने बोला है, बेसिक डेफिनेशन, स्थिर सुख आसनम। तो एनी पोजीशन और एनी कंफर्ट जिसमें हमें कंफर्ट और स्टेबिलिटी मिलती है, स्थिर और सुख का अनुभव होता है, उसे आसन बोला है। तो वो इस आसन में हम पूरा दिन भर वो आसन हम कर सकते हैं, जो जिसमें भी हम है पोजीशन में। तो शरीर को हमें, अगर हमारा ध्यान अगर हम हमारे साथ हमेशा रखेंगे तो सिंपल सा बॉडी या शरीर बताता है कि थोड़ा सा ये सिंपल ये थोड़ा बैकवर्ड पोजीशन कर लो। तो इसमें अगर हम करेंगे तो अपने आप वो दिन भर का जो
क्या बोलते हैं, स्पाजम होते हैं, मस्कुलर स्पाजम। आजकल बहुत सारे मस्कुलर स्पाजम के वजह से ब्लड सर्कुलेशन हैम्पर होता है, पेन होता है हमेशा, तो वो अपने आप कम होगा। तो स्थिर सुख में मुझे जिसमें भी पोजीशन में मुझे रहना आता है, तो उसमें हम अगर रहने लगे दिन भर, सिंपल फॉर एग्जांपल हम किचन में काम कर रहे हैं और बहुत सारा पेन हो रहा है, पैरों में अगर पेन हो रहा है, तो बीच का काम थोड़ा सा हम नीचे बैठ के कर सकते हैं, लेकिन हमें वो टारगेट ओरिएंटेड या खत्म करना है इस चीजों में, वो हम करते नहीं है, वो वैसे ही हम खड़े रहते हैं। लेकिन इंस्टेड ऑफ हम अगर सोचेंगे कि चलो थोड़ा सा बैठते विद इन अ सेकंड, तो उसमें मेरा आसन हो जाएगा, और उसी के ऊपर मैंने कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या क्या हो रहा है, इसके ऊपर अगर मैंने ध्यान दिया, तो अपने आप ये दिन भर आसन होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ओबेसिटी का जो कॉज है, दैट मीन्स लैक ऑफ मूवमेंट, आजकल वही है, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल या लैक ऑफ मूवमेंट और ईटिंग मोर और इन फ्रीक्वेंसी इज मोर और ईटिंग, और ये यही मूवमेंट, यही अगर हम प्रॉपर विद द हेल्प ऑफ योग दिन भर हम कर सकेंगे, तो अपने आप ओबेसिटी का प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, या जो है वो अपने आप कम होगा। इसीलिए आसन में सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें जितना अच्छे लगता है उतना ही उसमें फोर्स देना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है उसमें एक अवेयरनेस आना चाहिए। दिस इज द अवेयरनेस इज द लास्ट थिंग, या ये आ गई तो सारा कुछ हो जाएगा। तो सिंपल अवेयरनेस अगर हम रखेंगे, और आसन करते वक्त भी हम अभी योग का पूरा प्रैक्टिस हम करते हैं, लेकिन उसमें उसके ऊपर ध्यान नहीं रहेगा तो वो इतना अच्छे से नहीं होगा। इट्स लाइक एक्सरसाइज होगा कि जो हमेशा हम करते रहते हैं, लेकिन वही सिंपल थिंग 1 आवर में या हाफ आवर हम पूरा ध्यान देके, उसे हम जो बोलते हैं माइंडफुल अवेयरनेस, पूरा ध्यान देके करेंगे, तो अपने आप वो बेसिक जो चित्त शुद्धि वो हो जाएगी। क्योंकि योग का अगर हम देखेंगे तो बेसिकली इसीलिए उन्होंने में भी वो बोला है कि योगेन चित्तस्य, तो चित्त शुद्धि के लिए सबसे इंपॉर्टेंट योग बोला है, तो अपने आप शरीर शुद्धि और ये हो जाएगा। इसलिए आसन में ही उन्होंने बोला है स्थिर और सुख। स्थिर इज फॉर फिजिकल और सुख इज फॉर मेंटल। तो फिजिकल एंड मेंटल स्टेबिलिटी हम आसन से बहुत अच्छे से ला सकते हैं। या जिम में हो या कोई जिम का जो जिम करते वक्त बहुत सारे आजकल जिम ही लगाते हैं वेट लॉस के लिए, तो उसमें बहुत सारे मसल इंजुरी होते हैं या स्ट्रेस हैपन होता है, तो उसमें भी अगर हम सिंपल सा थोड़ा सा, या उनको वो बोलते हैं कूलिंग के लिए कुछ करना है, तो इसमें भी हम बहुत अच्छे से उनको आसन एडवाइस कर सकते हैं, ताकि जो साइड इफेक्ट होते हैं उसमें वो ना हो। या पूरी मैं जिम ही पूरा अवेयरनेस फुली करने के लिए बोलती हूँ कि आप सिंपल जो भी वहां कर रहे हो, अगर खुद 100% वहां पे ध्यान देंगे तो अपने आप वो इंजुरी नहीं होती है। उसके बाद जो 4th कॉन्सेप्ट है वो प्राणायाम। तो प्राणायाम भी हम प्राणायाम से भी बहुत अच्छे से एक इसे ब्रिज बोला गया है जो शरीर और आत्म तत्व के बीच का है। तो अपने आप वो भी स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, और आजकल का सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑक्सीजनेशन, वो सेल तक जाने के लिए यूजफुल रहता है। तो प्राणायाम भी बेसिकली वो भी हमें अलग टाइप से लोग करते हैं, लाइक एक्सरसाइज करते हैं। तो बेसिक मीनिंग ऑफ प्राणायाम इज प्राण इज अ ब्रीदिंग एंड आयाम इज अ टू प्रोलॉन्ग। तो दैट मीन्स माइंडफुल ब्रीदिंग। तो प्राणायाम क्यों करना है? नॉर्मली अगर हम प्राण का या ब्रीदिंग का थोड़ा प्रोलॉन्ग करेंगे तो अपने आप हमारा ब्रीदिंग रेट कम होता है, और नेचुरली बोला गया है कि हमारा जितना ब्रीदिंग रेट कम उतना आयु वर्धन। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है। इसीलिए हम अगर सांस को देखते हुए इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन करेंगे तो प्राणायाम अपने आप इटसेल्फ इम्प्रूव करता है, और जो इफेक्ट बोले गए हैं वो अपने आप मिलते हैं। अदरवाइज वो एक्सरसाइज ऐसा ही होता है और साइड इफेक्ट भी उससे हो सकते हैं। तो बेसिक अगर मीनिंग हमें पता होगा कि हमें सांसों को प्रोलॉन्ग या लंबा करने के लिए बोला है,
ना कि फट 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 ब्रीदिंग हम ले रहे छोड़ रहे, ले रहे छोड़ रहे, ये नहीं बोला है। इसलिए हम जितना शांति से प्राणायाम करेंगे उतना वो इफेक्ट बहुत अच्छी तरह से आता है। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट बोला है, चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। तो जितना हम सांस, सबसे इम्पोर्टेंट है सांसों को, मन को पकड़ना इज वेरी डिफिकल्ट। उसे हमें पता है कि बहुत सारे मंकी या पारा, इसकी बहुत सारी उसको कंपेयर किया है। तो मन को सबसे अच्छा मंत्र योग ने दिया है, मन को छोड़ो आप, वो कहीं भी जाए उसका काम ही है वो, लेकिन मन का जो बेसिक कंट्रोलर है उसे पकड़िए, तो वो है प्राण, सांस। हमें पता है कुछ भी अगर बैड थिंग हमें समझे, शॉकिंग न्यूज अगर हमें पता चलती है, तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट होता है ब्रीदिंग पे। तो अगर हम ब्रीदिंग को ही इतना स्ट्रॉन्ग करें तो अपने आप हमारा मन हमारे साथ जुड़ जाता है। इसीलिए हठ योग का फर्स्ट ही श्लोक है, चले वाते चले चित्तम। अगर सांस अगर बढ़ जाएगी तो उसके साथ मन भी भरकटेगा, मन भी इधर उधर जाएगा। तो पहले सांसों को एक साथ ले लो, कंट्रोल करो, अपने आप मन कंट्रोल हो जाएगा। इसीलिए प्राणायाम को पुल माना गया, ब्रिज माना गया है, जो बहिर्योग से, बहिरंग से अंतरंग में आने की सुविधा देता है हमें। तो ये जब हम प्राणायाम में मन पूरा अगर हमारे सांसों के साथ रहेगा तो अपने आप प्रत्याहार स्टेज आती है, जो मैंने डेली यूज में भी बोला कि प्रति इज अपोजिट एंड आहार इज अ फूड। तो ये अपोजिट फूड या अपोजिट फूड किसका करना है, तो ये ज्ञानेंद्रिय का होना चाहिए। तो अपने आप अगर हम वो ज्ञानेंद्रिय को थोड़ा सा अपोजिट फूड देंगे, दैट मीन्स हम अभी सिंपल कुछ देख रहे हैं तो बहुत सारी चीजें हमें दिखती है, लेकिन हम उसके ऊपर रिएक्ट नहीं होंगे तो अपने आप वो जो बेसिक संस्कार है वो ब्रेन में हमारे नहीं जाएगा, तो वो अपने आप प्रिवेंट होगा। तो हमेशा इसीलिए ब्रेन अच्छे से रहेगा, यानी प्यूरिफिकेशन अपने आप हो जाएगा, और फिर हम अंदर आने को, यानी धारणा अपने आप हो जाएगी। अगर हमारे पंच ज्ञानेंद्रिय अच्छे से रहेंगे या वो साइलेंट हो जाएंगे या वो काम एंड क्वाइट हो जाएंगे तो अपने आप हम धारणा की तरफ आते हैं। तो धारणा का भी वही डेफिनेशन, धारणा और ध्यान, ये बेसिकली दोनों को हम इंग्लिश में मेडिटेशन बोलते हैं। तो मेडिटेशन या धारणा और ध्यान, ये दोनों अगर हम अच्छे से थोड़ा टाइम तक भी करेंगे या दिन भर वही चीज मैंने बोली कि हर एक कर्म के ऊपर या हर एक जो भी हम पढ़ रहे हैं ज्ञान, कुछ ना कुछ करते रहते, उसके ऊपर हम ध्यान देंगे तो अपने आप प्रत्याहार रहेगा, हम प्रेजेंट में रहेंगे और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन कम हो सकते हैं। तो धारणा और ध्यान वही चीज है, धारणा थोड़ा सा ऊपर है, ध्यान और डीप हो जाता है। और जब ये धारणा और ध्यान अच्छे से हम करते हैं तो लास्ट स्टेज समाधि बोला है उसे, जैसे प्योर ब्लिस बोल सकते हैं, मोक्ष बोल सकते हैं, समाधि बोल सकते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन बोल सकते हैं, कुंडलिनी जागरण बोल सकते हैं। सभी रिलीजन ने, सभी लोगों ने सेम थिंग इसीलिए बताई है, दैट मीन्स मीनिंग इज द सेम, सिर्फ डिफरेंट वर्ड है, डिफरेंट अलग अलग टाइप का उन्होंने सिर्फ प्रोनाउंसिएशन किया है, अदरवाइज बेसिक थिंग इज वही है, प्योर जॉय, कि जो जॉय में हमें वो फुल ऑफ सिक्योरिटी होती है, उसका कोई कॉज नहीं रहता, ऑब्जेक्ट नहीं रहता। तो ऐसे टाइप का जॉय अगर हमारा दिन में भी, पूरा दिन में भी रहेगा तो हम अपने आप बहुत अच्छे से हेल्दी रह सकते हैं। तो ये बेसिक योग लगता है मुझे, जिसे हम अष्टांग योग बोलते हैं, और यही योग हम प्रैक्टिकली दिन भर यूज कर सकते हैं, और जो भी हमारा पूरा एक शेड्यूल हम हर एक डिसीज में बना सकते हैं अलॉन्ग विथ ये सारा लेके। मुझे लगता है कि योग एज अ टोटली हमें करना चाहिए, ना कि सिर्फ आसन कर रहे हैं या सिर्फ ध्यान कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पूरा योग अगर आप 20 मिनट में भी करोगे
तो उसमें 10-15 मिनट आपके थोड़े आसन होने चाहिए और 5 मिनट जो भी प्रैक्टिसेस है टुवर्ड्स ध्यान या मेडिटेशन, जिसमें प्राणायाम, कपालभाति, ओंकार, ये चीज करनी चाहिए। अगर फिर वो 20 मिनट का हो, आधा घंटे का हो या 1 आवर का हो। तो ओबेसिटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट थोड़े से एब्डोमिनल के ऊपर, यानी वही टाइप के अनुसार गायनाड ओबेसिटी है या एंड्रॉइड ओबेसिटी है, उसके हिसाब से हम थोड़ा और जो कॉन्ट्राइंडिकेशन को देख के पूरा शेड्यूल हम बना सकते हैं। तो ऐसे इस प्रकार का मुझे लगता है कि हम ओबेसिटी में वो सारा यूज कर सकते हैं कि आसन में अगेन सेम थिंग कि वो जो भी मूवमेंट आप कर रहे हो स्लो करो, कंट्रोल करो, विथ फुल अवेयरनेस करो, अपने हिसाब से करो। आगे का कुछ भी कर रहा है लेकिन मुझे जितना होता है उतना ही हम करेंगे, तो धीरे धीरे बॉडी हमें वो करने की अनुमति देती रहती है और अपने आप वो फैट लॉस का हो जाता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सूर्य नमस्कार, लेकिन बहुत सारे ये बैक एक हो या कुछ फ्रैक्चर हो या अंडरलाइन कोई कंडीशन हो तो हमें वो थोड़ा कॉन्ट्राइंडिकेट होता है, लेकिन सूर्य नमस्कार इसमें सबसे बेस्ट है। अगर हमें कोई पेन नहीं है, बाकी कुछ बैक एक वगैरह नहीं है, बाकी कुछ अंडरलाइन डिसीज नहीं है, तो हमारे हिसाब से यानी स्थिर सुख में वो जो भी 12 पोस्चर है अच्छे से, तो अगर हम वो अच्छे से धीरे धीरे करेंगे तो अपने आप वो टो से लेके हेड तक हर एक चीज का उसमें मसाज हो या सर्कुलेशन बढ़ जाता है, तो अपने आप वो फैट लॉस भी होने लगता है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो योग जैसे करना चाहिए, दैट मीन्स माइंडफुल अवेयरनेस, तो अपने आप वो साइड इफेक्ट भी कम होते हैं। अगर सूर्य नमस्कार कोई नहीं कर सकते तो सिंपल वो जो योगिक वार्म अप है, सिंपल पोजिशंस या मूवमेंट होते हैं, हम वार्म अप के हर एक मूवमेंट हम कर सकते हैं, खड़े होके हो या बैठ के हो, जो भी है, जॉइंट मूवमेंट हो या शोल्डर रोटेशन हो या नेक रोटेशन हो, ये अपना नी रोटेशन हो, एंकल रोटेशन हो, ये जो भी चीजें उनके हिसाब से हम दे सकते हैं ओबेसिटी और अलोंग विथ जो भी उसके कॉम्प्लिकेशन हो या उसके अलोंग विथ अंडरलाइन डिसीज हो, वो देख के हम वो सिंपल वार्म अप उनको दे सकते हैं ताकि उससे थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, हम और आसन के थोड़ा लायक हो जाते हैं। तो सिंपल आसन का फंडा है, नेचुरली अगर हम देखेंगे कि कौन से भी आसन कैसे भी करने के बजाय जैसे हमारा पूरा पोस्चर या जो नेचुरल हैबिटेट है या जो हम जैसे बनते हैं कि नॉर्मली हम बच्चे जब होते तो फर्स्ट थिंग इज वो ऑन बैक आ जाते हैं, यानी उत्तान पोजीशन में आते हैं, फिर धीरे धीरे बच्चा पेट के बल पे आने लगता है, फिर सिटिंग में आता है और फिर खड़ा होता है। तो ये 1 ईयर का ये पूरा इज अ नेचुरल उनके आसन होते हैं। सिंपल सी वही बात भी है कि नेचुरल आसन हम कैसे करना चाहिए वो ये कोर्स में हम देख सकते हैं, यानी बच्चा जन्म से 1 साल तक वो जो भी कुछ करता है तो वो भी हम करेंगे अच्छे से तो भी फैट लॉस हो सकता है नेचुरली अगर आसन करेंगे तो हर एक इसका मुझे लगता है कि ओबेस डिजाइन ऐसा होना चाहिए। जो भी आपको आसन देने हैं वो बैक में थोड़े दीजिए, ऑन बैक, एब्डोमेन थोड़े दीजिए, ऑन सिटिंग थोड़ा दीजिए और ऑन स्टैंडिंग थोड़ा हम दे सकते हैं। और उसके बाद कंपल्सरी लास्ट प्रैक्टिस टुवर्ड्स ध्यान, दैट मीन्स प्राणायाम, ओंकार, कपालभाति, जो भी हम मेडिटेशन की तरफ जाने के लिए, क्योंकि मेडिटेशन तो इज नथिंग टू डू और इट्स वेरी डिफिकल्ट, इसीलिए ये प्रैक्टिस हमें लेनी पड़ती है। या नेक रोटेशन विथ अवेयरनेस, जैसे ब्रह्म मुद्रा हम बोलते हैं, तो वो भी हम इसमें ले सकते हैं। तो एक शेड्यूल ऐसा बन सकता है कि एक सूर्य नमस्कार या वार्म अप एक 5-10 मिनट, फिर सीधा बैक पे आके हम उत्तान पादासन, सिंपल ये बेसिक आसन है, जस्ट 1 लेग अप, पवन मुक्तासन, जो इसमें पूरा जो नाम की तरफ से गैस रिलीज या जो पेट के आजकल बेसिकली इंडाइजेशन, अपचन, टोटली जो है वो भी उसमें कवर होता है।
उसका काउंटर पोज हम बोल सकते हैं सेतु बंधासन, दैट मीन्स ब्रिज पोज। जो भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ है वो टोटल स्ट्रेचिंग हो जाएगा। फिर धीरे धीरे ये करने के बाद सर्वांगासन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि जितना थोड़ा हाईएस्ट आसन करेंगे उतना वो ओबेसिटी पे अच्छे से अफेक्ट होगा, लेकिन वो बिल्कुल अपने हिसाब से करना है। और थोड़ा रिपीट भी हम कर सकते हैं, ओबेसिटी के लिए दे रहे हैं तो थोड़ा रिपीट भी कर सकते हैं। और उनके पेशेंट के अंडरलाइन कंडीशन देख के थोड़ा सा कॉन्ट्राइंडिकेशन इंडिकेशन हम देखते हैं। बाद में सर्वांगासन, उसका काउंटर पोज, मत्स्यासन, हलासन, नौकासन, ये सारे आसन हम दे सकते हैं। बाद में ऑन एब्डोमेन पे आके तो बेसिक चीजें वही है, भुजंगासन और अर्धशलभासन, दैट इज वन लेग अप ऑन एब्डोमेन। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन हम धनुरासन में कर सकते हैं। इसमें दोनों अपर पोर्शन भी फ्रंट आता है और पीछे वाला पोर्शन भी बैक जाता है। तो धनुरासन, नौकासन, तो ये चीजें हम एब्डोमेन पे 4-5 आसन दे सकते हैं। बाद में सिटिंग में योग मुद्रा, दैट इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्शन, उष्ट्रासन यानी बैकवर्ड बेंडिंग, केमल पोज, जानु शिरासन, दैट इज नी हेड पोज। दिस इज अ प्रीवियस प्रैक्टिस ऑफ पश्चिमोत्तानासन। जानु शिरासन के बाद थोड़े दिन के बाद पश्चिमोत्तासन ऐड कर सकते हैं, दैट इज टोटल फॉरवर्ड ऑन लेग। अर्ध मत्स्येंद्रासन, पर्वतासन, गोमुखासन इज अ जॉइंट केयरिंग आसन। एक ही आसन में पूरा हम जॉइंट के लिए टोटल सर्कुलेशन या टोटल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। उत्तान मंडूकासन, मार्जरासन, तो ये मैंने लास्टली किया है क्योंकि मार्जरासन अगेन हमारे बैक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। बैक को हर एक इसमें रिलीज करता है, तो ये जो थोड़ा हेवी आसन करने के बाद लास्टली मार्जरासन दे सकते हैं। उसके बाद फिर स्टैंडिंग में हम पूरा दे सकते हैं। तो स्टैंडिंग में वैसे अगर सूर्य नमस्कार किए हैं तो वो स्टैंडिंग का हुआ ही है, लेकिन वो एक जस्ट योगिक वार्म अप का जैसा मैंने किया था। अगर नहीं दिए हैं तो इसमें ये आसन हम पूरा दे सकते हैं। वृक्षासन, साइडवर्ड बेंडिंग चक्रासन, पादहस्तासन, ताड़ासन, वीरभद्रासन, उसके प्रकार, त्रिकोणासन, एक पाद अंगुष्ठासन आसन, तो ये सारे आसन हम स्टैंडिंग में दे सकते हैं। उसके बाद अच्छे से शवासन ले सकते हैं। अगर बहुत, मैं 2 प्रकार से शवासन लेने के लिए बोलती हूँ। एक तो पूरा आसन, ये पूरे सारे आसन नेचुरल टाइप से होके, एंड दैट मीन्स वो ऑन बैक, एब्डोमेन, सिटिंग और स्टैंडिंग में होने के बाद सीधा शवासन ले सकते हैं। क्योंकि शवासन में भी, शवासन इज आजकल बहुत इंपॉर्टेंट आसन है मुझे लगता है। एक 5 मिनट या 3-4 मिनट कंपल्सरी शवासन लेना ही है, ताकि इंजुरी ना हो। और हर एक इसमें हमारा अवेयरनेस टो टू हेड, हम खुद को देखते हैं तो अपने आप बॉडी हमसे बोलती है, और वो अवेयरनेस बहुत अच्छे से होता है। उनका बॉडी के हर एक पार्ट का रिलैक्सेशन बहुत अच्छा होता है, जो हम कभी भी हमारे शरीर की तरफ देखते नहीं। इसलिए शवासन कंपल्सरी देना है, क्योंकि अगेन वो भी है इज अ स्ट्रेस मैनेजमेंट। और अगेन दिन भर के जो भी काम होते हैं उसके वजह से जो स्पाजम होते हैं वो अच्छे से रिलीज होने के लिए आजकल शवासन की बहुत नीड है, ऐसे मुझे लगता है। इसलिए कुछ शवासन आफ्टर आसन के बाद दे सकते हैं, या आफ्टर आसन थोड़ा सा रिलैक्स होके हमें ये लास्ट प्रैक्टिस करके एंड में भी रिलैक्सेशन हम दे सकते हैं, ताकि पूरा आसन और ये सारा होने के बाद। लेकिन दोनों अपने अपने हिसाब से हम वो शवासन ले सकते हैं। इसीलिए बाद में फिर शवासन के बाद अच्छे से वही पोजीशन में पूरा रिलैक्स होके अच्छे से वो लास्ट प्रैक्टिस, दैट मीन्स हमेशा मैं ऐसे बोलती हूँ कि जब हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक एक प्रैक्टिस करते वक्त एक बार अगर हम अच्छे से आंख बंद करें तो वो लास्ट में ही ओपन करना है।
ना कि हम प्राणायाम एक कर रहे फिर ओपन आइज कर रहे फिर कुछ कर रहे। इंस्टेड ऑफ दैट वो एक सलग से अच्छे से, अगर 45 मिनट हम ये सारा आसन करते हैं तो लास्ट 15 मिनट हमें ये शवासन और इसमें देना ही चाहिए। दैट मीन्स 1/3 टाइम शुड बी गिवन फॉर दैट। तो उसमें फिर प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये जो बेसिक प्राणायाम बोला है, इसलिए थोड़ा सा अनुलोम विलोम प्राणायाम इसमें करना चाहिए क्योंकि उसे नाड़ी शुद्धि प्राणायाम बोला है। तो जो भी हमारे बोले 72,000 नाड़ियां, तो अपने आप उसकी शुद्धि अच्छे से हो जाती है। और उसके बाद स्पेसिफिक प्राणायाम या उसे हम आपके आयुर्वेद के हिसाब से व्याधि प्रतिनिक प्राणायाम बोल सकते हैं, तो वो भस्त्रिका हम उसमें ऐड कर सकते हैं। कपालभाति और भस्त्रिका, भस्त्रिका इज अ टाइप ऑफ कपालभाति है, तो भस्त्रिका इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर थोड़ा रोक के अच्छे से मेडिटेशन के बजाय ओम चैंटिंग, प्रणव मंत्र या ओम रिसाइटेशन, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट आज के इसमें शवासन और ओम चैंटिंग। ये आज के कलयुग में या इसमें हम 10-15 मिनट भी करेंगे तो सो कॉल्ड स्ट्रेस हमारा हर एक इसमें कोई ना कोई है तो वो निकल सकता है। तो लास्टली कंपल्सरी 10, 20, 21 जो भी हमें अच्छा लगता है वो ओम चैंटिंग या ओम रिसाइटेशन करके शवासन में जा सकते हैं। ओम चैंटिंग एंड शवासन इज अ वेरी गुड मेथड फॉर मेडिटेशन, हम ऐसे बोल सकते हैं। इसका जो उल्लेख है वो शिव संहिता में आया है कि पार्वती बोलती है शंकर से कि आपको तो सब कुछ आप कर सकते हैं, आप बहुत ग्रेट योगी हो, लेकिन हमें घर का वगैरह एज अ वुमन बहुत काम होता है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो उस दरम्यान उन्होंने ये ओम चैंटिंग एंड आफ्टर दैट शवासन, ये दो ही इसमें एक अच्छा सा मेडिटेशन बोला है। तो ये भी हमारा इसमें हो सकता है। और अलॉन्ग विथ अब हम आयुर्वेद के साथ में प्रैक्टिस करती हूँ, तो पंचकर्म और बाकी प्यूरिफिकेशन होते रहते हैं। और इन एडिशन ओबेसिटी में फिर शटक्रिया का भी हम उल्लेख करते हैं या कर सकते हैं पूरा अच्छी तरह से। दैट मीन्स कपालभाति, जलनेति और धोती, ये बेसिकली 3 सबसे इम्पोर्टेंट शटक्रिया में ओबेसिटी के लिए हम कर सकते हैं, ताकि एडिशन में या अच्छे से इम्प्रूवमेंट उनका हो सके। तो ओके, तो इतना बोल के मैं रुकती हूँ। और सबको आयुष दर्पण टीम और डॉक्टर शिल्पा में इन सबको मैं पूरा अच्छे से धन्यवाद देती हूँ। और अगर कुछ है क्वेश्चन वगैरह तो पूछ सकते हैं। Very nice, Manisha ma'am, very nice. Really proud of you because आप MBBS होकर भी मुझे लगता है integrative approach. So I congratulate both of you, Dr. Santosh sir also, because integration का definition घर से ही उन्होंने शुरू कर दिया है, आयुर्वेद एंड एलोपैथी। Yes, yes, right. अभी ओबेसिटी का बहुत हो गया लेक्चर टोटली। आपको सुन के कभी ऐसा नहीं लग रहा है कि आप MBBS से हो? ये अभी वो इतने साल प्रैक्टिस करके वही दिमाग हो गया। Yes, yes, definitely. बोलते सुनते। I think मुझे डॉक्टर संतोष सर का ज्यादा ये करना चाहिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज उन्होंने आपको इतना मोल्ड किया है। सो थैंक यू वेरी मच मैम। जस्ट ब्रीफली बताइए प्रेगनेंसी में हम लोग किस प्रकार से, अगर जैसे कोई आजकल के जो है ज्यादा ये रहता है ना कि लाइक प्रेगनेंसी में वेट ज्यादा ना बढ़े, सो वी केयर फॉर दैट मच। यस, प्रेगनेंसी में भी पूरा मैं करवा के लेती हूँ फॉलोअप के द्वारा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम बोलते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कुछ नहीं करना चाहिए वगैरह, लेकिन मैं ऐसे नहीं देखती। पेशेंट को पूरे अच्छे से देख के उनका सब अंडरलाइंग जो भी थिंग है वो देख के उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ट्राइमेस्टर तीनों इसमें हम पूरा योग अच्छे से दे सकते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे इम्पोर्टेंट अगेन है ओम चैंटिंग, प्रणव मंत्र, क्योंकि जो अ, उ, अ, म, ये 3 शब्द का जो हमारा पूरा इसमें अच्छे से दैट मीन्स चक्र के लेवल पे इम्पैक्ट होता है और हर एक चक्र एक्टिवेट होता है। इसीलिए हम बोलते हैं विश्व निर्मिति भी
जो ओम से आई है, इसलिए ओम का हर एक रिलीजन में अलग अलग टाइप से आमीन हो या आमेन हो, क्रिश्चियन मुस्लिम में, या हमारा ओम हो, या ज्ञानेश्वरी में उनका सब कुछ ओम का आता है। इसीलिए सबसे फर्स्ट 3 मंथ में सबसे इम्पोर्टेंट मैं करवाती हूँ टोटली ओम साधना, ओम चैंटिंग। और आइडियली वो कैसी करनी चाहिए, पूरा उसका वाइब्रेशन की तरफ पूरा ध्यान, वो घंटा नाद, ये बेसिक थीम है। हम शंकर के मंदिर में अगर घंटा बजाएंगे तो वो कैसा नाद तैयार होता है, वैसे हमारे शरीर में वो नाद तैयार होना चाहिए। तो ऐसे हिसाब से मैं ज्यादातर वो ओम चैंटिंग देती हूँ, तो उससे बहुत स्ट्रेस भी रिलीज होता है और शरीर भी रिलैक्स होता है। और उसके बाद कंडीशन देख के इसी शेड्यूल में सिर्फ एब्डोमेन के ऊपर से ज्यादा आसन नहीं देने हैं, सिंपल, या जस्ट उत्तान पादासन, 1 लेग अप करना है तो दूसरा लेग फोल्ड करना है, तो सिंपल सिंपल मॉडिफिकेशन करके, और उनके हिसाब से मैं उनको बहुत एजुकेट करती हूँ कि स्थिर सुख आसन, तो वो कोई कुछ भी करे, आपको जो फील करता है उतना ही करना है। तो 20 डिग्री भी ऊपर पैर उठा तो भी वो बहुत है। तो उसके हिसाब से यही शेड्यूल में मैं एक 10-15 आसन देती हूँ, और उसके बाद फिर ये सारा प्राणायाम, अनुलोम विलोम और ये ओंकार। तो सबसे मुझे लगता है एज ए संस्कार मीन्स, तो उसमें ओंकार प्रणव साधना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत सारे रिसर्च भी हुए हैं, और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ सुन रहे माताएं। तो मैं वो बिलीव करने के बजाय खुद को करने के लिए बोलती हूँ, ताकि वो वाइब्रेशन उनके बच्चे भी सुन ले, वो वाइब्रेशन कुछ वे से वो बच्चे तक जाए, ताकि वो भी अच्छे से रिलैक्स हो जाए। तो फिर सेकंड ट्राइमेस्टर में थोड़ा नौशिया वोमिटिंग वो जब थोड़ा सेटल होता है, तो फिर हम थोड़ा और एडिशनल ऐड करती हूँ। तो मार्जर आसन उसमें सबसे बेस्ट है। मार्जर आसन, सिंपल ट्विस्टिंग, क्रोकोडाइल पोस्चर से, उसमें भी सिंपल ट्विस्टिंग है, बैक एक बहुत अच्छे से रिलीव होता है उसमें। अगर हम फर्स्ट इसमें से क्रोकोडाइल, ट्विस्टिंग, सिंपल ताड़ासन, वृक्षासन, ऐसे सारे आसन करेंगे तो बैक एक जो अनडायग्नोस या अनस्पेसिफिक जो बैक एक होता है वो बहुत अच्छे से रिलीव होता है बाद में। फिर लास्ट इसमें उसमें उनमें उनको ज्यादा थोड़ा चक्की चालन, वो ज्यादा जैसे अब पुराने इसमें हम बोलते थे पानी ये करना, तो ये सारे मूवमेंट थोड़े ज्यादा देके देती हूँ, और उसके हिसाब से कुछ हो तो फोन करने के लिए बोलती हूँ। तो बहुत अच्छे से अलॉन्ग विथ हमारे जो मासानुमासिक बात रहते हैं उनके साथ, तो बहुत अच्छे से फिर उनका सारा होता है, गर्भ संस्कार हो या प्रेगनेंसी का योग हो, टोटली। यस मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मेनी मोर सेशंस ऑफ यूएस, बिकॉज आप आयुर्वेद को बहुत अच्छा कोरिलेट करती है ऑन द थिंग। सो थैंक यू वेरी मच, नाइस, थैंक यू, नाइस विथ यू, nice time with you. So thank you. Moving forward with our session, I would like to invite Dr. Avanti Nitsure. So जैसे कि हमने सवेरे से हम लोग पूरे जो वुमेन्स की जो ओबेसिटी है उसको डिस्कस कर रहे हैं, बट आई थिंक कि इन द child obesity is also a burning issue, and so I would like to invite Dr. Avanti, and I call upon Dr. Anjana ma'am for the introduction of Dr. Avanti Nitsure ma'am. Dr. Anjana ma'am, are you there? Yes. जी मैम, नमस्कार मैम। जी मैम, नमस्कार। एक मिनट में। जी मैम, नमस्कार। मैं आपने जैसे बताया मैडम के बारे में, मैडम जो है एमडी है, आयुर्वेद संहिता में है, और मैडम जो है प्रैक्टिसिंग कर रही हैं आयुर्वेद की, प्योरली आयुर्वेद की प्रैक्टिसिंग कर रही हैं, और पुणे में कर रही हैं। पिछले 10 साल से लगातार मैडम आयुर्वेद की सेवा कर रही हैं। और मैडम जो है स्पेशली नारी परीक्षा और डाइट एंड लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा उनकी स्पेशलिटी है। और मैडम की जो प्रैक्टिस है वो मैडम आहार कल्पना के आधार पर और उसके जो बिहार कल्पना के आधार पर और नारी परीक्षा के आधार पर पेशेंट को बहुत अच्छे से समझाती हैं और बहुत अच्छे से उसका ट्रीटमेंट कर रही हैं। वेलकम मैम, आइए आप प्लीज। जी
Yes, ma'am. Dr. Avanti, please continue with your session. Child obesity. I'm looking forward for a nice session from you. Yes, yes. Yes, नमस्कार. पहले मैं सबको नमस्कार करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ शिल्पा मैडम को और जोशी सर को और पूरी आयुर्वेद दर्पण की टीम को कि मुझे यहाँ पे बोलने का अवसर आपने दिया। अब और लेक्चर की शुरुआत करने से पहले मेरे गुरु वैद्य संतोष सूर्यवंशी सर जी और आयुर्वेद के श्रेष्ठी जो जिन्होंने आज तक यहाँ तक आयुर्वेद को पहुँचाया है, वो सब गुरु श्रेष्ठी, उनको वंदन करके मैं लेक्चर की शुरुआत करती हूँ। आयुर्वेद स्थूल्य चिकित्सा के बारे में, जो बालकों की स्थूल्य चिकित्सा है या बालकों के स्थूल्य चिकित्सा का विचार है, वो ग्रंथों के साथ साथ ही मेरे चिकित्सा के अनुभव पर इस विषय का विवेचन मैं आपके सामने रखने वाली हूँ। बालक स्थूल्य चिकित्सा, बालक स्थूल्य विचार। स्क्रीन दिख रही है ना मैडम? स्लाइड दिख रही है? हेलो हेलो जी मैडम, बोलिए मैडम। जी हाँ, स्लाइड दिख रही है ना? हाँ जी। पहला विचार मैं आपके सामने रख रही हूँ, स्थूल्य की संप्राप्ति। तो स्थूल्य की संप्राप्ति में सबसे पहले क्षुधामांद्य या अग्निमांद्य हम बोल सकते हैं। अग्निमांद्य में दो प्रकार ग्रंथों में आए हैं, क्षुधामांद्य और जरण शक्ति का मांद्य। क्षुधामांद्य है तो आपको सबको मालूम है, भूख ही नहीं लग रही है, पर किसी किसी को स्थूल्य में ऐसा रहता है कि बहुत ज्यादा भूख है, अति क्षुधा है, पर जरण शक्ति उनकी कम हुई होती है। तो जो भी आप खाते हो वो पचन नहीं कर पाते हैं क्योंकि जरण शक्ति नहीं है। क्षुधा है पर जरण शक्ति नहीं है। और कोई पेशेंट में कभी कभी पेशेंट में क्षुधा का भी मांद्य है और जरण शक्ति का भी मांद्य है। तो इससे क्या होता है, हमारे जो सूक्ष्म पचन है या भौतिकाग्नि है, तो वो भी मंद हो जाते हैं, सूक्ष्म पचन मांद्य आ जाता है। पूरा धातु पोषण है, उसमें भी मांद्यता आती है। मेद धातु को छोड़कर अन्य धातु पोषण की क्रिया मंद हो जाती है। मेद का भी मांद्य ही होता है, उसका भी पोषण नहीं हो पाता है। वजह की मेद की वृद्धि होने लगती है, मेद धातु की संचेती होने लगती है। ये शॉर्ट में मैंने स्थूल्य की संप्राप्ति बता दी है, क्योंकि आगे जाके क्षुधा, पचन और मेद संचेती पर ही ये सब स्थूल्य विचार आधारित है। तो इस तरह संप्राप्ति आगे जाती है, पैथोलॉजी आगे जाती है मेद स्थूल्य की। अभी हम जब स्थूल्य का विचार स्पेसिफिकली बालकों में करते हैं तो 3 पॉइंट्स उसमें आते हैं। डायरेक्टली हमारे पास बड़े बालक आए, पेशेंट आए, तो उनका विचार अलग तरीके से है। पर जब हम स्थूल्य का विचार करते हैं तो गर्भ संस्कार के साथ ही अगर हम स्थूल्य का विचार करेंगे तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट भी उसमें आएगा। हम स्थूल्य को उसी जगह पे रोक सकते हैं कि आगे जाकर वो बालक स्थूल्य का शिकारी ना बने। तो उसमें गर्भ संस्कार और सूती का परिचर्या, ये विचार महत्वपूर्ण है। गर्भ संस्कार के बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, वो अभी का टॉपिक नहीं है, पर उसमें भी गर्भिणी को जो आहार देने वाले हैं हम, तो वो अग्निमांद्य ना करने वाला या मेद संचेती ना करने वाला आहार है। उसमें गर्भ संस्कार में गर्भिणी की जो परिचर्या है या विहार है, जीवन शैली है, उसमें भी पर्याप्त प्रकार का विहार होना चाहिए, व्यायाम होना चाहिए कि जिससे स्थूल्य वृद्धि ना हो। तो इसका कैसे बालक पर परिणाम होने वाला है? हम जो संस्कार बोलते हैं, गर्भ संस्कार शब्द में ही संस्कार आया है, तो हम स्थूल्य का संस्कार नहीं करेंगे। गर्भ संस्कार में ही जब गर्भ वृद्धि होने वाली है पेट में, तो ही स्थूल्य का संस्कार उस पर नहीं होना चाहिए। ये हम प्रिवेंटिव मेजर में कर सकते हैं
गर्भ संस्कार में उसका विचार करना महत्वपूर्ण होता है। दूसरी आगे की बात है कि सूतिका परिचर्या। जब डिलीवरी के बाद सूतिका होती है उसकी परिचर्या, क्योंकि वो जो काल है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जो मातृदुग्ध बच्चे पीते हैं, माता का दुग्ध सेवन बच्चे करते हैं, तो मातृदुग्ध के साथ साथ ही स्थौल्य का विचार होना चाहिए, क्योंकि उसमें अगर गुरुता है, माता का पचन अच्छा नहीं है, उसमें स्थौल्य विकार की ये हुई है, तो बच्चों में वो दुग्ध के साथ आने ही वाला है। वो दुग्ध बच्चों को आसानी से नहीं पचने वाला है, डाइजेशन उनका अच्छा नहीं होने वाला है, और फिर मेद संचेती हो सकती है, क्योंकि वो गुरु गुण बढ़ाने वाला होता है बच्चों के लिए भी। हम ये विचार तो हम हमेशा करते हैं कि दूध माता ने कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया तो बच्चों को उनके पेट पर भी असर होता ही है, पेट दुखना या ऐसे शिकायतें मिलती भी है। तो वैसे ही चीज हम स्थौल्य का विचार करते हुए पेशेंट्स में करनी चाहिए। और फिर तीसरा पॉइंट आता है कि जन्मोत्तर बालक स्थौल्य। जो पेशेंट्स, जो बड़े बच्चे हमारे पास आते हैं, तो उनके लिए हम स्थौल्य की मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं या क्या चीजें किस दृष्टि से उसका विचार हमें करना चाहिए। संस्कार की बात और एक है गर्भ संस्कार में कि जेनेटिकली हम जो बोलते हैं कि सब ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, तो ये कुछ हद तक हम गर्भ संस्कार में अगर स्थौल्य का विचार करेंगे तो कुछ हद तक ये जेनेटिकली ट्रांसफॉर्मेशन, हेरिडेटरी या संस्कार जो भी हम उसको बोलेंगे, पर उसका हम अवरोध कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे मातृज भाव में आया है कि माता के सब आहार विहार का परिणाम गर्भ पे होता ही रहता है, वैसे स्थौल्यकारक आहार विहार लिया तो आगे जाके स्थौल्य की शिकायत बालक में दिख सकती है। फिर जन्मोत्तर बालक के स्थौल्य का क्या विचार है, तो पहला विचार आता है उसमें दुग्ध विचार। दुग्ध विचार में भी दो बातें हैं, एक मातृ दुग्ध जब तक सिर्फ दूध पर बालक है, दुग्ध के सेवन पर है, और दूसरा विचार है कि बाहर का जो दूध हमारे आहार में आता है वो। तो दूध के बारे में थोड़ा सा सत्यता और मिथ्यता हमें जान लेनी चाहिए। पहली बात है कि मातृ दुग्ध, तो पहले 6 महीने माता का ही दुग्ध सेवन बालक के लिए आइडियल है, अच्छा है। दूध के सिवा कुछ भी 6 महीने से पहले खाने को नहीं देना है। पूरे 6 महीने तक बालक दुग्ध सेवन ही करने वाला है माता का। अगर वो दूध पूरा नहीं हो रहा है, माता का दूध कम पड़ रहा है, तो पहले माता पर हमें चिकित्सा करनी चाहिए कि वो दूध कैसे बढ़ सकेगा। आयुर्वेद में तो आपको सबको मालूम है, इसके लिए बहुत अच्छे योग है कि हमें ज्यादातर मातृ दुग्ध अच्छी तरह से बढ़ सकता है वो योग से। तो पहली तो बात यह है कि वो क्यों बढ़ नहीं रहा, इसीलिए माता को चिकित्सा देनी चाहिए अगर नहीं है तो। अगर पर्याप्त मात्रा में दूध माता का है तो कोई गरज नहीं है कि बाहर का दूध बच्चे को दे। बहुत लोगों का ये मिसकंसेप्शन है, गैर समझ है कि बाहर का दूध थोड़े पहले से ही देने से अच्छा है कि उसको आदत हो जाती है, तो ऐसा नहीं है। माता के दूध में वो सब संस्कार है, प्रेम है, ममता है, तो वो हर तरीके से बच्चों के लिए सही है। इसलिए मातृ दुग्ध बहुत महत्वपूर्ण है। और वो भी मातृ दुग्ध कैसा होना चाहिए, तो बहुत ही गुरुता गुण नहीं है उसमें, और पूर्ण स्वस्थ माता का दुग्ध होना चाहिए, तो वो बालक को ही स्वस्थ ही बनाने वाला है। दूसरी बात है कि ये मातृ दुग्धोत्तर हमें दूध देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये क्या है। अगर हमने बाहर के निसर्ग में देखा, पशु पक्षियों को देखा,
तो क्या दूसरे पशु पक्षी अपने माता के बिना किसी और का दूध पीते हैं? ये विचार हमें पहले करना चाहिए, क्योंकि कोई भी पशु पक्षी हमारे माता के बाद दुग्ध सेवन नहीं करता है। तो 6 महीने के बाद जब बच्चे थोड़ा थोड़ा आहार लेने लगते हैं, अन्नप्राशन करने लगते हैं, और माता का दूध 2-2.5 साल तक आता है। पुराने जमाने में तो उससे भी ज्यादा दिन तक माताओं ने बालकों को दूध सेवन करवाया है। तो वो जो एटलीस्ट 1-1.25 वर्ष तक तो माता का दूध आता ही है। तो वो मातृ दुग्ध के बाद कोई भी पशु पक्षी बच्चों को दूध नहीं पिलाता है। क्यों? क्योंकि उसका शरीर फिर खान पान के लिए तैयार हो जाता है। जब तक बच्चा अपने आप खान पान नहीं ढूंढ सकता है, खा नहीं सकता है, तब तक ही मातृ दुग्ध। उसके बाद धीरे धीरे दूध कम होने लगता है और बच्चा आत्मनिर्भर हो जाता है। तो उसको खाने की दूध की सच में जरूरत है क्या? और दूसरा प्रश्न ये है कि हमारे घर तक आज जो दूध पहुंचता है वो सच में इतना प्योर है क्या? और ऐसा दूध अगर हम बच्चों को देंगे तो उनको क्या अच्छा परिणाम दिखेगा या बुरा दिखेगा? तो ये सब प्रश्न है। इस पर बहुत ज्यादा वक्त नहीं है ज्यादा विवेचन करने के लिए, पर मैं मेरे पेशेंट को खुद बताती हूँ कि अगर दूध लेना है तो उसके भी कुछ नियम हैं, उसके साथ उसको पीना चाहिए। आपकी पचन शक्ति का अंदाजा उसमें चाहिए। क्षुधा मांद्य या अग्नि मांद्य बिल्कुल भी ना होना चाहिए, तभी वो दूध बच्चों को पचता है, डाइजेस्ट हो पाता है। नहीं तो जो भी आता है वो स्थूल्य के रूप से मेद संचित होता जाता है। तो इस दुग्ध आहार को पर्याय भी है। पेशेंट के मन को, माता पिता को बहुत फिर प्रॉब्लम आता है कि अरे दूध नहीं लेंगे तो और क्या खाएंगे। तो दुग्ध आहार को अच्छे पर्याय भी है हड्डियों के लिए, या जो दूध मेनली जिसके लिए हम बच्चों को देते हैं, कैल्शियम वगैरह वगैरह। तो हड्डियों के लिए हमारे पास पर्याप्त ऑप्शंस है, पर्याय है। आयुर्वेद जैसे ग्रंथ में आहार में इतनी वैरायटी दी हुई है कि हमको प्रश्न ही नहीं आना चाहिए। तो ऑलिव है जिसे चंद्रचूर बोलते हैं, उसकी खीर, उसके लड्डू हम दे सकते हैं। डिंक के लड्डू दे सकते हैं। शेवगा, शिगरू, ड्रम स्टिक वो आहार में रख सकते हैं, अर्थात बड़े बच्चों के। तो ये सब हम दे सकते हैं। ड्राई डेट्स, खारीक, कोबरा, अभी तो संक्रांति हो गई, तिल, गुड़ और तिल की वड़िया, लड्डू, ये सब पर्याय है। वो पर्याप्त मात्रा में हड्डियों के लिए, बोन्स के लिए, शरीर के लिए बहुत अच्छा पर्याय है। तो ये हुआ दुग्ध विचार। अब आगे जाके बालक की क्षुधा तथा आहार। हम हमेशा माताओं का एक कहना होता है, माता पिता का, ये खाता ही नहीं है, बच्चा खाता नहीं है तो वो पीछे लग जाते हैं कि चलो 4 बार खाना ही है, बच्चों को 4 बार खाना ही है। मैं हमेशा बोलती हूँ 1 गिलास भर दूध पी लीजिए आप, और फिर आप देखिए आप कितना खा सकते हैं। तो सुबह का दूध, उसके बाद खाना, फिर कुछ ना कुछ। दिन भर में बच्चे खाते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। तो ये क्या, ये क्षुधा के परिमाण में खाना है, क्षुधा के मात्रा में खाना है? नहीं। सुबह भूख लगती है, सुबह दूध पिया तो सुबह की भूख वहां पे ही खत्म हो जाती है, फिर क्षुधा मांद्य में ही पूरा भोजन खा लेते हैं, उसके बाद बच्चों में भूख लगना ही कम हो जाता है। तो आहार कैसा चाहिए, कब खाना है? तो बच्चों, मैं हमेशा एक बात पेशेंट को बोलती हूँ कि माँ ने बच्चों के पीछे नहीं लगना है, बच्चों ने माँ के पीछे लगना है कि मुझे खाना दो, खाना दो, खाना दो। तो अपने आप बच्चे बैठकर भी खाते हैं, अपने हाथ से भी खाते हैं, वो भी समस्या दूर भाग जाती है। तो जब भी अगर क्षुधा अच्छी है तो ही बच्चे खा सकते हैं। इसीलिए अगर कोई खा नहीं रहा
तो क्षुधा वर्धन के लिए पहले दवाई देनी है। इससे स्थौल्य में कैसे इसका संदर्भ है, तो अगर हम ज्यादा से ज्यादा ठूस ठूस के खाना भरेंगे तो ऑफकोर्स उसमें मेद संचेती बढ़ने वाली है, क्योंकि स्थौल्य की संप्राप्ति, उसमें अग्निमांद्य आने वाला है, पचन नहीं होने वाला है और फिर मेद की संचेती बढ़ने ही वाली है। तो हमें कुछ डब्बे में खाना नहीं भरना है, बच्चों के भूख से के हिसाब से खाना देना है। अगर भूख कम है तो पहले भूख बढ़ाने का प्रयत्न करना है। दूसरी चीज है कि घर का खाना। अभी तो बाहर के खाने में इतना इंटरेस्ट बढ़ गया है बच्चों का, क्योंकि भूख नहीं लगती है, बाहर का खाना चटपटा रहता है, ये कुरकुरे वगैरह पैक फूड तो और भी उसमें कुछ अट्रैक्टिव बहुत स्वादिष्ट वगैरह रहता है, चटपटा रहता है, भूख ही नहीं है तो वो चटपटा खाने का मन करता है। जैसे हमको बुखार में वगैरह भूख जाती है तो सादा नहीं खाना अच्छा लगता है, वैसे ही बच्चों का है। अगर भूख ही नहीं है तो वो सब बाहर का खाना अच्छा न लगने लगता है और फिर वो साइक्लिक ये बढ़ने लगता है संप्राप्ति कि बाहर का खाना खाए, चीज खाए, ये वो खाए, तो और भी स्थौल्य की मात्रा बढ़ जाती है, मेद संचेती बढ़ जाती है और डाइजेशन का उसी समय पूरा खात्मा हो जाता है। तो घर में निर्मित जो खाना है, खाद्य है, हमारा 2 वक्त का भोजन है, वो बहुत अच्छी तरह से अगर बच्चों को दिया जाए तो उसी में उनकी पूरा क्षुधा का समाधान होता है, तृप्ति होती है। तो और एक चीज है, ये तो जन्मोत्तर स्थौल्य के बारे में हुआ, खाने के बारे में, पर जब हम सूतिका परिचर्या में या वो शिशु बालक में देखते हैं जो बहुत छोटे बालक रहते हैं, तो उनका खाना प्रथम कब शुरू करना है, काश्यप संहिता में जात संस्कार कर्म के अध्याय में खिलस्थान में आया है। इस 6ठे महीने के समय पर अच्छी विधि पूर्वक उनका खाना शुरू करना है। कैसे करने को बोला है, तो एकदम लघु आहार से, फल के रस उसमें है, उसमें पेया, मंड, पेया, विलेपी, यवागु, कृतयुष, अकृतयुष, ये सब के साथ अगर हमने उनको खाने की शुरुआत की तो जैसे अग्नि बढ़ता जाता है वैसे खाना बढ़ता जाता है। जैसे पचन शक्ति, जरण शक्ति बढ़ती जाती है, वैसे खाने का गुरुत्व बढ़ता जाता है। जैसे पेया, मंड, विलेपी के बाद फिर लापसी जैसा भात, चावल और उसके बाद चपाती, रोटी, भाकरी जो भी है वो शुरू कर सकते हैं। तो वो जो प्रथम आहार भक्षण है, पहले समय में, पहले जब बच्चे आहार शुरुआत करते हैं उसी समय हमें ध्यान देना है कि उनका अग्नि बढ़ते जाना चाहिए, ना कि क्षुधा मांद्य उसी से शुरुआत होना चाहिए। नहीं तो प्रथम आहार में ही क्षुधा मांद्य शुरू हो जाता है तो आगे जाके स्थौल्य निर्मिति हो सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मैंने जैसे बोला कि माँ बच्चों के पीछे लगती है, तो भोजन या कोई भी खाना ये कुछ शक्ति है या भोजन एक सेलिब्रेशन है। भोजन ये शक्ति नहीं लगनी चाहिए बच्चों को, भोजन ये सेलिब्रेशन लगना चाहिए, उत्सव लगना चाहिए। जैसे पहले जमाने में, पहले यानी बहुत पहले नहीं, एक 30-40 साल पहले भी जब भोजन किया करते थे, सब फैमिली मेंबर्स, कुटुंबीय एकत्र आके खान वान का अच्छी तैयारी करके पंक्तियों में भोजन करते थे। सब भोजन की चीजें एक साथ लेके भोजन करते थे। तो ये क्या है, भोजन उत्सव है। इसीलिए मैंने भोजन उत्सव उसको बोला है कि भोजन का सेलिब्रेशन हर बार होना चाहिए। तो वो भोजन खा के, जैसे अभी मनीषा मैडम ने बोला कि भोजन में वो तृप्ति, समाधान, योग ही होना चाहिए। भोजन उत्सव या भोजन योग की तरह दिन भर में तृप्तिकारक, समाधान पूर्वक होना चाहिए। इससे क्या होगा, जो भोजन उत्सव के साथ करेंगे
उसका पचन भी अच्छी तरह से होने वाला है। और फिर पचन अच्छा है तो आगे जाके स्थूल्य के तरफ संप्राप्ति नहीं जाएगी, मेद संचिति नहीं होगी। जब क्षुधा है तब भोजन अच्छी तरह से भोजन उत्सव के साथ होना चाहिए। अपने जो भोजन की तैयारी है, अच्छा गरम गरम खाना परोसना, ये सब चीजें जो अपने अष्टो आहार विधि विशेषायतन है वो अच्छी तरह से फॉलो होने चाहिए। अपने आप घर के खाने की प्रीति बढ़ जाएगी, बच्चों के मन में प्रेम आएगा, वो खाने के साथ बहुत प्रेम पूर्वक वो खाना हो जाएगा, तो बाहर की खाने की वासना ही नहीं रहेगी, बाहर के खाने का जो अट्रैक्शन है वो रहेगा ही नहीं, और भोजन की सख्ती ही भी करनी नहीं पड़ेगी। बच्चे अपने आप हाथ से खाना खाएंगे, नहीं तो मोबाइल देखते देखते टीवी की बच्चा खाना नहीं खा रहा तो चलो मोबाइल दे दे, टीवी लगा दे, ये करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वो भोजन उत्सव के तरह भोजन खाना आहार करेंगे तो हर एक पंच ज्ञानेंद्रिय से वो भोजन का आस्वाद लेते हैं। उसके बाद आने वाला समाधान, उसके बाद आने वाली तृप्ति, ये दिन भर में रहती है। बच्चों की चिड़चिड़ाहट भी बहुत कम हो जाती है, और इससे अच्छी तरह से पचन होने से स्थूल्य भी नहीं, स्थूल्य की संप्राप्ति आगे नहीं जाती है। आगे है मुक्त क्रीड़ा, मुक्त खेल। खेल विचार बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हम एक तकरार, कंप्लेंट हमेशा रहती है, अरे हमारा बच्चा बैठता ही नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है। क्या ये प्रॉब्लम है? नहीं, बच्चे एक जगह बैठेंगे तो प्रॉब्लम है। बच्चे का तो स्वभाव है कुछ ना कुछ करते रहने का, उनका तो कुतूहल हर समय जगा हुआ रहता है, तो बच्चा हमेशा खेल के स्वभाव में ही रहता है। वो तो सहजता पूर्वक उनका स्वभाव है, नैसर्गिक स्वभाव है। अगर आप कौन से भी पशु पक्षियों को देखें, खाना पीना हो गया तो उनका स्वभाव क्या है? भागदौड़ करना, कूदना, हम उछल कूद करना, यही स्वभाव। तो बच्चों का इनोसेंस ही उसमें है, उनका सहज स्वभाव ही वही है कि मुक्त खेल। वो उनका खेल जब आप रोक देंगे तो उनमें सब पैथोलॉजी, सब आज व्याधियों की संप्राप्ति आगे चलते रहेंगे। मुक्त खेल क्यों बोला है, मुक्त क्रीड़ा क्यों बोला है? नहीं तो हम अभी एक जिम लगा दी, एक आधा क्लास लगा दिया तो बच्चों का खेलना हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। उनको 10 बच्चों को एक साथ ग्राउंड में जाने दीजिए, उनको अपने आप डिसाइड करने दीजिए कि क्या खेलना है। जैसे मुक्त खेल है, लुका छुपी है, भाग दौड़ है, ये सब पूरा हमारे जमाने, हम जब छोटे थे या उसके पहले वाले जो खेल थे वो उनको खेलने चाहिए, मट्टी में खेलना चाहिए। ये सब मुक्त खेल है। तो मुक्त खेल में क्या होने वाला है? उनके मन में पूरा खेलने का समाधान आने वाला, तो अलग से व्यायाम की या किसी चीज की जरूरत नहीं है, अपने आप व्यायाम होता है उसमें। तो खेल का विचार बच्चों के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ज्यादा संदर्भ ग्रंथों में इसका नहीं आया है, पर अभी इस काल में चिकित्सा के दौरान ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पुराने जमाने में तो बच्चे खेलते ही रहते थे। अभी हम घर में है, बंदिस्त है या फ्लैट कल्चर है, सब एक जगह पे है, तो इसमें खेल का विचार बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या कर सकते हैं इसमें? निसर्ग के सानिध्य में जाना, उसमें अभी एग्रो टूरिज्म वगैरह बहुत हमें दिख रहा है, या टेरेस गार्डन जैसा भी हम कुछ हमारे खुद के घर में कर सकते हैं, जिसमें कृषि का, थोड़ा खेती का, ऐसे वो भी हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि जिसमें अपने आप व्यायाम भी हो जाता है और बच्चों को खुशी भी मिलती है। गिरी भ्रमण यानी ट्रेकिंग, हमारे आसपास के गढ़ किले टेकड़ियां वगैरह हम वीकेंड जब भी
मिलता है समय पेरेंट्स को, तो हम बोल सकते हैं उस तब भी आप लेके जा सकते हैं। ये मुक्त खेल का परिणाम क्या है? जिसमें स्थौल्य है उसमें संप्राप्ति भंग होने लगता है, बच्चों की भूख, आहार सब उसमें भी सुधार आता है। और जिनको और प्रिवेंटिव ये भी एक उसमें बात है कि मुक्त खेल से स्थौल्य की संप्राप्ति होने ही नहीं पाती। और उसके बाद थोड़े बड़े बच्चों को 8वीं 10वीं में जब बच्चे जाते हैं तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अभी 10वीं में भी है तो परीक्षा ये वो छोड़ के भी थोड़ा सा समय खेलने के लिए भी चाहिए ही चाहिए। तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से फिर दूसरे खेल का कोचिंग भी लगा सकते हैं। इसीलिए खेल का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट स्थौल्य में बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा है। और ये सहज खेल लेके जो खेल का स्वभाव लेके जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वही खेल का प्लेइंग हैप्पीनेस और प्लेफुलनेस उसमें बड़े होने के बाद भी वैसा ही रहता है। तो बाकी टेंशन्स ये जो हम देखते हैं कि सुसाइडल टेंडेंसी वगैरह बच्चों में, वो भी उसमें नहीं आती है और वो बहुत अच्छी तरह से सहजता के साथ उनका विकास हो जाता है। अब लास्ट पॉइंट है कि स्थौल्य की चिकित्सा। ये सब करते समय पहले स्थौल्य का जो संप्राप्ति है वो भंग करना है। तो दीपन पाचन चिकित्सा बहुत उसमें इम्पोर्टेंट है, भूख बढ़ने की, और पाचन चिकित्सा है पचन शक्ति बढ़ने की। हमको ग्रंथ में जो योग है, द्रव्य है, शुंठी है या ओवा है, अजवायन है या मुस्ता है, ये सब चीज़ें इकट्ठे करके उसके योग से दीपन पाचन चिकित्सा हम कर सकते हैं। में त्रिफला जैसे मेदघ्न औषधि भी उसमें दे सकते हैं। और कृमिघ्न चिकित्सा, विडंगारिष्ट वगैरह हम कृमिघ्न चिकित्सा के लिए दे सकते हैं। बच्चों में कृमि की चिकित्सा बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे बाकी रोगों में, व्याधियों में महत्वपूर्ण है, वैसे ही स्थौल्य की चिकित्सा में भी कृमिघ्न चिकित्सा महत्वपूर्ण है। अब बालक आहार विहार का जो विचार मैंने पहले बताया वो बच्चों तक पहुंचना चाहिए। ये सब बच्चे कैसे करेंगे? अगर वो विचार बच्चों के मन तक पहुंचेगा तो हर एक बच्चा अच्छी तरह से परहेज करता है, आयुर्वेदिक दवाई भी लेता है और सब अच्छी तरह से फॉलो करता है। तो बच्चों के साथ संवाद ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे बच्चों के माता पिताओं के साथ संवाद इम्पोर्टेंट है, उनको ये सब अवेयरनेस आना चाहिए। वैसे ही बच्चों के साथ का संवाद भी महत्वपूर्ण है। बच्चों को क्या समझता है? नहीं, बच्चों को सब समझता है। उनका तो बहुत कुतूहलपूर्ण स्वभाव रहता है। तो उनके मन तक पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी, ये वैद्यों की जिम्मेदारी है कि ये हर एक विचार उनके मन तक पहुंचना चाहिए। तो बच्चे अच्छे तरह से ये फॉलो करते ही हैं। बच्चों के साथ संवाद करना है तो उनकी भाषा में हम उनसे बोल सकते हैं, उनको सहजता से समझेगा ऐसी तरह से बोल सकते हैं। ये एक समोपदेशन का ही भाग है कि बच्चों के साथ अच्छी तरह से संवाद होना, उनका अवेयरनेस बढ़ना, तो वो सहजता के साथ ये सब चीजें कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण के साथ हम अगर बच्चों को, उनके माता पिताओं को, हर रुग्ण को, बड़ों को या बच्चों को, किसी को भी स्थौल्य के बारे में बताएंगे तो एक समाज के तरफ समाज में भी एक बदलाव आने वाला है, प्रबोधन होने वाला है। और ऐसे प्रबोधन के दृष्टि हम आयुर्वेद के नजरिया माध्यम से एक समाज को दे सकते हैं और अच्छी तरह से स्थौल्य की चिकित्सा कर सकते हैं। धन्यवाद।
हेलो 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 प्रसन्ना हेलो काय झालं काय जी अवंती मैम जी। हेलो हाँ जी मैम बहुत अच्छा आपका प्रेजेंटेशन था, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन अच्छा किया आपने। जी मैम जो पूरा ये आया ना सुनाई जी मैम बहुत अच्छे से आया, पूरा आया। अच्छा अच्छा मुझे लगा कुछ तो भी ब्रेक हो गया। किसी को भी क्वेश्चन पूछना है तो वो डायरेक्ट पूछ सकता है माइक ऑन करके। जी मैम से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्ट। जी कोई क्वेश्चन नहीं है। एक्चुअली मुझे लग रहा है ना शिल्पा मैम का शायद नेट प्रॉब्लम आ रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम इश्यू है कोई। मैडम अभी है नहीं यहाँ, आ रहे होंगे, नेटवर्क इश्यू में कोई दिक्कत होगी। अवंती मैम ने बहुत अच्छे से बताया पूरा जो है चाइल्ड ओबेसिटी के बारे में, कि कैसे कैसे कितने अच्छे से पूरा आयुर्वेद का उन्होंने जो तो शास्त्रोक्त वर्णन आया है बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। और नेचुरल से सही बात तो यही है कि अगर स्टार्टिंग से ही हम लोगों ने ओबेसिटी को कंसंट्रेट कर लिया और ओबेसिटी को देख लिया तो हम लोग को बाद में ये प्रॉब्लम्स नहीं आती है जो हमारे पास टीनेज गर्ल्स में पीसीओडी, और जिसको हम लोग अभी सुबह से पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। तो इसीलिए जो है उसको हम लोग बहुत अच्छे से ट्रीट भी कर सकते हैं, या हम सबसे बेहतर है स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण, उसके आधार पर ही हम उसको रोक सकते हैं। तो इसके अलावा अभी आगे हमारे एक स्पीकर, मैं अभी बात करती हूँ शिल्पा मैम से, एक सेकंड प्लीज। हाँ मैम आपने बोला वो सही है। अगर पहले से ही ये सब नजरिए से हम देख सकते हैं तो प्रिवेंटिव मेजर इस के हिसाब से भी हम स्थूल्य को पहले ही रोक सकते हैं। जी अवंती मैम अभी आ रहे हैं मैम, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है, नेटवर्क प्रॉब्लम हुई है, मेरी बात हो गई है, अभी मैडम आ रहे हैं। तब तक आप कुछ और बताइए इसी के बारे में। जैसे जनरली जो ये कुमार कल्याण घृत है, या फिर समटाइम्स जैसे हम अपने बच्चों में लेखनीय द्रव्य का तो यूज बहुत ज्यादा कर नहीं पाएंगे, तो समटाइम्स अगर जैसे हमारे जो औषधियां हैं, बाल चतुर्भुज रस है, कल्याण कुमार कल्याण रस है, इसका थोड़ा सा इंडिकेशंस और थोड़ा सा ट्रीटमेंट और थोड़ा डोसेस के बारे में थोड़ा सा बताएंगे मैम आप प्लीज। एक्चुअली कैसा है, मैं मेरे खुद का अनुभव शेयर करती हूँ कि अगर बच्चों को ये सब बातें अच्छी तरह से समझ में आई और उनको उनको उनके भाषा में या उनके हिसाब से अगर ये सब हमने बताया, पचन क्या है, क्षुधा क्या है, ये सब चीजें, तो सच में उनको उनका भी अवेयरनेस बहुत बढ़ जाता है। और ये बाहर का खाना वगैरह ये सब चीजें हम प्रिवेंट कर सकते हैं, खुद ही उसके तरफ मोड़ते नहीं। और ये कुमार भद्र रस या कुमार कल्याण वगैरह है, वो तो उसकी तो मात्रा हम के हिसाब से डिसाइड करते हैं। मेरा ज्यादा से भर काष्ठौषधि पर रहता है, तो मैं वही ज्यादा यूज करती हूँ घृत, और इसमें मैं ज्यादातर देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है अगर हमने ये सब लाइफस्टाइल और ये चीजें फॉलो की तो।
मैंने मेरे लेक्चर में आहार का विवेचन करते समय उसका क्या टाइमिंग है, उसकी पद्धति कैसी चाहिए, इस पर ज्यादा विवेचन नहीं किया, क्योंकि वो हम मेरे गुरु संतोष सूर्यवंशी सर जी है, उनके पास उनके लेक्चर में सुनने वाले हैं। तो वो आपको और अच्छी तरह से उसकी जानकारी होगी, वो फॉलो किया तो सब व्याधियों में आपको जरूर ही ये मिलता है, यश मिलता है चिकित्सा में। थैंक यू मैम, थैंक यू। शिल्पा मैम आप आ गए, मैं आपको होस्ट बनाती हूँ। जी मैम। हेलो हेलो मैम, सुन पा रही हैं आप? शिल्पा मैम आप सुन पा रहे हैं? मैम यस 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 आइए, वेलकम मैम। यस यस, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अवंती। एक अच्छा संदेश आपने दिया है इस सेशन के माध्यम से। बिल्कुल आज की जो समस्या है इसको बहुत ही अच्छे से आपने पकड़ लिया है, और मुझे लगता है हम सभी वैद्यों को भी इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो मूविंग फॉरवर्ड विद द सेशन, आई वुड like to invite Dr. Nilesh Londhe sir. So welcome Dr. Nilesh Londhe sir, please continue with your session. सर इज फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र। निर्विकार आयुर्वेद के नाम से उनका एक अपना खुद का आयुर्वेद अस्पताल है, आयुर्वेद का ओपीडी है, और सर वो चलाते हैं काफी अच्छे से। ओबेसिटी एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के बारे में आज सर का लेक्चर हम लोग सुनने वाले हैं। तो वेलकम सर ऑन दिस प्लेटफॉर्म डॉक्टर नीलेश लोंढे सर, प्लीज। गुड इवनिंग ऑल। आज का जो आज सुबह से हम ओबेसिटी 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 ये टॉपिक पे जो डिस्कशन कर रहे हैं या ये टॉपिक के जो लेक्चर्स ले रहे हैं, उसका अहम बात जो है, अगर हम आयुर्वेद के बारे में सोचते हैं तो मेदो रोग बहुत, अभी हम आगे जाके ये देखने वाले हैं कि मेदो रोग कितने बीमारियां पैदा कर सकता है। एक जगह पे तो ऐसा वर्णन है कि मेदो रोग के वजह से हर बीमारी पैदा होती है। तो वो कैसी होती है, मतलब मेदो रोग इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, वो हम आगे जाके अपने लेक्चर्स में देखने ही वाले हैं। अगर ये सिंपल डिसीज को हमें अगर पूरा दिन देना पड़ता है, वो भी चर्चा के लिए या लेक्चर्स के लिए, तो इसका अहम बात यहीं पे ही डिसाइड होती है। मुझे जो टॉपिक दिया गया है वो है ओबेसिटी एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अगर हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के बारे में, मेरी पहचान मैडम ने थोड़ा सा कर दिया है, मैं थोड़ा सा और बताता हूँ। मेरा नाम नीलेश नवनाथ लोंढे है। मेरा एमडी संहिता में हुआ है और मैं अभी एटोइम्यून डिसीज पे पीएचडी कर रहा हूँ। मेरा खुद का निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटल करके 15 बेड का आयुर्वेद हॉस्पिटल्स है, वो जो रजिस्टर्ड है। यहाँ पे कैशलेस एचडीएफसी आर्गो का कैशलेस फैसिलिटी है, उसके साथ साथ बाकी सब कंपनियों की रिइम्बर्स होता है। पिंपरी चिंचवड़ का ये पहला हॉस्पिटल है जहाँ पे आयुर्वेद की कैशलेस फैसिलिटी है और इंश्योरेंस होता है। हमने अभी एक 50 बेड का लोकमान्य करके आयुर्वेद हॉस्पिटल्स चलाया है, वो भी अभी कुछ दिनों में रजिस्टर्ड हो जाएगा। वैसे हमारे जो आयुर्वेद के कुछ ग्लोबल आयुर्वेद प्रैक्टिशनर एसोसिएशन है, महाराष्ट्र आयुर्वेद सम्मेलन है या आयुर्वेद व्यासपीठ है, इनसे मैं जुड़ा हूँ। हमारी खुद की एक अविरत श्रमदान करके एनजीओ है जो ट्री प्लांटेशन एंड कंजर्वेशन पे काम करती है। अगर मेटाबॉलिक डिसीज का ये फोटो अगर आप देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा, तो ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे मेटाबॉलिक डिसीज के वजह से बीमारी नहीं होती है। हमसे सर से पांव तक चले जाए तो अगर हम सर में देखते हैं तो कैटरैक्ट है, स्ट्रोक है, इडियोपैथिक हाइपरटेंशन है, डिमेंशिया है। अगर उसके नीचे थोड़ा हार्ट में आ जाते हैं तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज है। बाकी पूरे बॉडी का अगर सोचते हैं तो डायबिटीज है, डिस्लिपिडियम है, हाइपरटेंशन है। पैंक्रिया के बारे में सोचेंगे तो पैंक्रियाटाइटिस है। कैंसर के बारे में सोचेंगे तो ब्रेस्ट का, यूटेरस का, सर्विस का, कॉलन का। पैर के वेन्स के बारे में सोचेंगे तो फ्लेबिलाइटिस है। स्किन के बारे में सोचेंगे तो स्किन के कुछ डिसऑर्डर्स जो है, जो जनरली फंगल इन्फेक्शंस है, वो ज्यादातर ओबेस पेशेंट्स में ज्यादा दिखते हैं। जॉइंट्स के बारे में से सोचेंगे तो ऑस्टियोआर्थराइटिस है या गाउट है।
गायनाकोलॉजिकल कुछ एबनॉर्मलिटी है जैसे इनफर्टिलिटी है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, गॉल ब्लैडर के कुछ डिसीज है, या उसमें लिवर का जो लिवर फैटी लिवर जो है या नॉन अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस बोलते हैं, उसकी वजह भी कहीं पे तो भी ओबेसिटी है, या पल्मोनरी जो कुछ डिसफंक्शंस है जिसमें स्लीप एपनिया या हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। मतलब अगर हम हर एक स्रोतस में, हर एक धातु में सोचेंगे तो ओबेसिटी और मेडिकल डिसऑर्डर एक के वजह से दूसरा, दूसरे के वजह से तीसरा, ऐसा होते जाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है वो इसी को ही अगर हम थोड़ा सा और देखते तो इम्यून सिस्टम जो है, या डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, इन्फ्लेमेशन है, कैंसर है, एटोफेजी है, स्ट्रेस है, हार्ट डिसीज, लिपिड प्रॉब्लम्स, हाइपरटेंशन, इसको थोड़ा सा और डेमेंशिया, कैंसर, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम्स, नॉन अल्कोहलिक फैटी डिसीज, ये सब मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह पे फैट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब अगर होता है तो ये सारी बीमारियां निर्माण करता है। अगर हम आगे जाते हैं तो थोड़ा अभी सब लोगों ने ये बताया है, फिर भी मैं थोड़ा इसके ऊपर और गौर करना चाहता हूँ कि अगर हमें कोई भी डिसीज समझना है तो उसका रूट कॉज समझना पड़ेगा, और रूट कॉज समझना है तो उसका हेतु क्या है। अगर अभी आगे जाके आप देखेंगे तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो मेदोवृद्धि के वजह से होती है, और वो जो बीमारियां हैं वो बिना मेदोवृद्धि के भी होती है, मतलब उसकी उसकी खुद का हेतु है, खुद का लक्षण है और खुद का उसका व्याधि संप्राप्ति है। लेकिन बहुत सारी बीमारियां जो है वो, जैसे अपन बोलते हैं रोगा सर्वापि मंदो न होता, मंद अग्नि हो गया तो सब बीमारियां हो सकती है, उस हिसाब से अगर जाएंगे तो मेदोवृद्धि के वजह से भी बहुत सारी बीमारियां होती है। लेकिन उसका डायग्नोसिस करते वक्त हमने ये सोचना है कि ये जो बीमारी हुई है इसका वजह मेदोवृद्धि है, ना कि इसकी वजह और कोई उसका हेतु है, ना ये अलग बीमारी है, ये मेदोवृद्धि के वजह से होने वाली बीमारी है। मेदोवृद्धि का अगर हम निदान देखते हैं तो अव्यायाम है, दिवासेत्न है, रेशम आहार है, मधुर अन्न रस है, ये स्पेशली प्राय स्नेह मेद प्रवर्धते ऐसा बोला हुआ है। इसमें सिर्फ हमें अभी अगर हम देखते हैं तो लोग पनीर जो है, चीज जो है, मतलब स्नेह द्रव्य जो है या नॉनवेज जो है, ये ज्यादा लोग अभी खा रहे हैं। उनको अभी ये पता नहीं चलता कि इसके वजह से जाके मुझे आगे कुछ बीमारियां होने लगी है। तो हम अगर प्रॉपरली, मैं दिख रहा हूं ना यहाँ पे, कोई तो मैसेज आ रहा है, दिख और सुन पा रहा है ना सब? यस यस सर, क्लियरली, यस। ओके, विल कंटिन्यू। अगर हम देखते हैं तो ये जो मतलब श्लेष्म आहार को अभी बहुत सारे वैद्यों ने ये बताया कि श्लेष्म आहार में क्या क्या ले सकते थे, लेकिन अभी अगर हम देखते हैं तो सब जो मिल्क पनीर जो है, या अभी जो ज्यादातर लोग हम देखते हैं तो पनीर का सेवन अति करते, तो उसके वजह से भी ये मेदोवृद्धि जो है वो दिखाई देती है। मेदो रोग की संप्राप्ति सबको पता है, फिर भी मैं थोड़ा सा उस पर गौर करता हूँ, क्योंकि अगर मैं वहां के जो स्रोतस है वो स्रोतस मेद के वजह से अगर अवरुद्ध होते हैं और आगे के धातु और पीछे के भी धातु बनने में तकलीफ होती है या बनने में कोई रुकावट आती है, तो उसके वजह से ये मेदो रोग होता है। मतलब उसके जो टिश्यू चैनल्स है वो सब ब्लॉक हो जाते हैं, और ब्लॉक होने के वजह से ये बीमारी जो है वो बढ़ती जाती है। मेदो, अगर हम, आपने सबने सुना है रोगा सर्वापि मंदोग्नो, लेकिन मेदो रोग में एक और चीज रहती है, वो है कि अग्निरुद्धि। इसको बहुत अपने माधवकार है या कुछ अपने ग्रंथोकार है, इन्होंने अच्छी तरह से इसको समझा है कि ये जो अग्निरुद्धि होती है वो कैसी होती है और क्यों होती है। तो अग्निरुद्धि का वजह जो है, जब स्रोत से ब्लॉक हो जाते हैं तो जो कोष्ठ में जो वायु रहता है उसका संचरण बढ़ जाता है और अग्नि की रुद्धि होती है, फिर जो भी हम खाते हैं उसका जो कन्वर्जन है वो मेद में ही होता है। उसके लिए एक अच्छा चरक में उसको लिए अच्छा एक एग्जाम्पल दिया है। अगर जंगल में आग लग जाती है तो वो सिर्फ आग जो है वो सिर्फ वहां पे जमा हुआ कचरा या वहां पे जमा हुआ पाला पचड़ा नहीं जलाती, वो पूरे वृक्ष को जलाती है, वहां पे जीव जंतु को जलाती है, वहां पे जो प्राणी रहते हैं उनको सबको जला देते हैं। मतलब एक आग लग जाती है छोटी सी, लेकिन वो पूरे जंगल को खाक कर देते हैं और उसमें प्राणी है, पौधे हैं, बड़े वृक्ष है, इन सबको जला देती है।
उस हिसाब से चरक ने बताया है कि मेदो रोग में ये अग्निरुद्धि और वात प्रकोप ये दोनों पूरे शरीर को जला देते हैं और पूरे शरीर को खाक कर देते हैं। इसलिए ही ये मेदो रोग इतना सोचना हमें जरूरी है। उसको आगे अगर देखेंगे कि मेदो रोग के अगर लक्षण हम देखते हैं, तो अभी सब वैद्यों ने बताया, फिर भी मैं एक बार बताता हूँ कि मेदो रोग के अगर लक्षण देखते हैं तो ये सब जो लक्षण जो है मेदो रोग के, क्षुद्र श्वास है, तृषा है, मोह है, स्वप्न कृष्टता है, साध है, क्षुत है, स्वेद है, दौर्गंध्य है, अल्प प्राण और अल्प मैथुन। इसमें जो अल्प प्राण जो है वो अगर हम सोचेंगे तो मतलब उसका लाइफ स्पैन ही है या उसकी ब्रेथ है वो शॉर्ट हो जाती है। और ओवरऑल अगर ये लक्षणों में देखते हैं तो बॉडी का जो नरिशमेंट होना चाहिए वो कहीं पे नहीं होती, और बॉडी का नरिशमेंट ना होने के वजह से हर एक धातु का क्षय होता रहता है, और जितने धातु का क्षय हो जाएगा उतने धातु के जो कार्य है, प्रीणन है, जीवन है, ये जो अपने धातु के कार्य बताए हुए उसमें कहीं ना कहीं बाधा आ जाएगी, और ये जो बाधा है वो हमें शरीर को ठीक रखने के लिए तकलीफ दे सकती है। मेदो धातु के अगर हम उपद्रव देखते हैं तो प्रमेह पीड़िका है, ज्वर है, भगंदर है, विध्रदी है, वात रोग है। सिर्फ इसको उपद्रव नहीं, भगंदर एक अलग भी बीमारी दिखती है, ज्वर अलग बीमारी दिखती है, प्रमेह पीड़िका एक अलग बीमारी दिखती है, लेकिन ये सब बीमारी में हमें ये देखना है कि इसकी वजह मेदो रुद्धि है क्या। ये क्यों देखना है? क्योंकि अगर हम जब तक उसके रूट कॉज को नहीं जाते हैं तब तक ये बीमारी कभी ठीक नहीं होती। अगर हम प्रमेह पीड़िका में के बारे में ही देखेंगे या भगंदर के बारे में देखेंगे, हम भगंदर का पेशेंट आता है, उसको हम दवा देते हैं, लेकिन दवा देने के बाद उसको कुछ दिन के लिए अच्छा लगता है, वापिस वो भगंदर आ जाता है या उसका रिकरेंस हो जाता है। तो उसमें हमें ये देखना है कि कहीं पे उसका अग्नि का ज्यादा रुद्धि तो नहीं हो रहा है, कहीं पे उसका वात प्रकोप तो नहीं हो रहा है, और उसका ये अग्नि रुद्धि और वात प्रकोप होने की वजह कहीं पे मेदो रोग तो नहीं है। ऐसा अगर हम जब तक सोचेंगे नहीं तब तक हम भगंदर ठीक नहीं कर पाएंगे। कितनी भी हमने भगंदर की नित्यानुलोमन दिया या उसकी हीट कम करने का या बॉडी की उष्णता जो की कितनी भी कोशिश की, फिर भी उसका हम ठीक नहीं कर पाते। या कोई कोई ज्वर के भी केसेस आते हैं ओबेसिटी को लेके, तो उसमें वो ज्वर का निदान क्या है, उसका हेतु क्या है, वो अगर हम जब तक मेदो रोग उसका वो मेदो रोग का उपद्रव स्वरूप करके ज्वर आया है, ये अगर जब तक हम समझेंगे नहीं तो जो रिकरेंट ज्वर होने वाला है या बार बार ज्वर जो आने वाला है उसके बारे में हम ट्रीटमेंट पूरी तरह से नहीं दे सकते। विध्रदी के भी बहुत सारे केसेस देखते हैं, अभी ज्यादातर कुछ केसेस जो रहते हैं, अभी स्तन विध्रदी के केसेस ज्यादा हम देखते हैं, तो उनका वजह कहीं ना कहीं पे मेदो रोग होता है। और ये हम अगर दिमाग में नहीं रखेंगे क्योंकि इसका वजह मेदो रोग है, तब तक हम उसकी अच्छी चिकित्सा नहीं कर पाएंगे क्योंकि रूट कॉज को हम ट्रीट नहीं करें। यहाँ पे सबसे बड़ी बात बताई है कि वाता रोगाना मान्यता, मतलब सब वात रोग मेदो रोग से हो सकते हैं। अभी वात रोग तो हम क्षयज भी देखते हैं या खुद वात प्रकोपक हेतु के वजह से भी वात रोग देखते हैं, या आम वात में कुछ कंडीशंस ऐसी है जहाँ पे अग्नि आम वात अगर हम सोचेंगे, दोनों स्रोतोरोधजन्य वात रोग इसके बारे में हम सोचेंगे तो दो चीजें हमारे सामने आ जाती है। एक होता है आम वात और दूसरा होता है स्रोतोरोधजन्य वात व्याधि। ये दोनों में डिफरेंस क्या है ये हमें जल्दी पता नहीं चलता, लेकिन इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि वो आदमी की अग्नि जो है वो तीव्र होती है। हम डिफरेंशिएट कैसा करेंगे, उसके लिए एक मतलब एकदम सिंपल क्लिक ऐसी है कि उसका अग्नि अच्छा होता है, मतलब वो खाते रहता है और फिर भी उसको स्रोतोरोधजन्य वात व्याधि के सब लक्षण दिखते हैं। आम वात में यही बात अलग होती है। आम वात में अग्नि उसका मंद होता है, पूरा उसका भूख चला गया होता है और वो अग्नि मंद होने के वजह से उसको आमवात हुआ रहता है। फिर वो केस में हमें पहला जो है उसका अग्नि मतलब आमवात के केस में पहला उसको हमें अग्नि बढ़ाना है और फिर वात की चिकित्सा करना है। लेकिन मेदो रोग जन्य वात व्याधि में हमें पहला जो ट्रीटमेंट प्लान करना है वो पहला उसका वात को कंट्रोल में रखना है ताकि वो अग्नि को संदुक्षण ना ज्यादा दे, और फिर अग्नि को संदुक्षण ना दे दिया
तो फिर हम जो वात श्लेष्म हर चिकित्सा या श्लेष्म मेदो हर जो चिकित्सा है वो करें। इसमें ये डिफरेंस है, पहला वात को देना है या पहला आम को देना है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस हमें पता चलना चाहिए। हम जितना सूक्ष्म लेवल पे सोच रखेंगे उतना हमें बीमारी में ट्रीटमेंट में बहुत आसान हो जाता है। हम आग्नेय किसी के पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें दिखता है कि इसका भूख तो अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी उसको आम वात दिख रहा है, तो इसका क्या वजह है? फिर भी उसको वात व्याधि दिख रहा है, तो हम ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। और पेशेंट स्थूल दिख रहा है, तो हमें ये जरूर सोचना है कि ये जो वात व्याधि हुआ है उसकी वजह मेदो रोग है, ताकि हमें के उसको ट्रीटमेंट करने के लिए आसान हो जाए। यहाँ पे कुछ मैंने वात व्याधि के कुछ लिस्टिंग दी है। वात व्याधि सोचेंगे तो नानात्मक जो वात व्याधि है ये सब वात में आती, ना कि सिर्फ आम वात में इसको सोचना है। बाकी भी जो अर्दित है, अभी अर्दित हम अगर थोड़ा इंग्लिश में देखेंगे या एलोपैथी सिस्टम्स में देखेंगे तो अर्दित में ज्यादातर फेशियल पाल्सी जो होती है वो कैरोटिड आर्टरी में ब्लॉक होने के वजह से वहां पे, मतलब कैरोटिड आर्टरी का ब्लॉकेज बढ़ने के वजह से वहां पे जो ब्लड सप्लाई होना चाहिए ब्रेन को वो नहीं होता है और उसके वजह से वो अर्दित होता है। तो इसका मतलब क्या है कि उनके जो टिश्यू चैनल है उसमें कहीं ना कहीं पे ये फैट डिपॉजिट हो रहा है और वो फैट डिपॉजिट होने के वजह से उसका मार्गावरोध बन रहा है और मार्गावरोध बनने के वजह से उसको फेशियल पाल्सी बन रही है। इसका मतलब जो अर्दित जो है उसकी वजह उसका स्रोतोरोध है। अगर जब तक हम ये स्रोतोरोध नहीं निकालेंगे तब तक हम अर्दित की चिकित्सा अच्छी नहीं कर पाएंगे। तो मैंने जो बताया कि अर्दित की चिकित्सा करनी है तो स्रोतोरोध के बारे में भी हमें सोचना है, ना कि सिर्फ अर्दित वात रोग है और उसको सिर्फ स्नेहन स्वेदन कराओ इससे ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो उसका स्रोतोरोध ऐसा अगर हम सोचते हैं तो फिर हम उसके रूट तक ट्रीटमेंट कर सकते हैं और अच्छा उसका ट्रीटमेंट होने के वजह से उसमें हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। रिजल्ट्स तो सभी को मिलते हैं, लेकिन रूट कॉज को ट्रीट करेंगे तो रिकरेंस नहीं होता है और दूसरा जो है उसका अपुनर्भव जो है या बार बार वो बीमारी होना वो नहीं होता है और उसका अपुनर्भव चिकित्सा भी हम कर सकते हैं। अगर हम संप्राप्ति पे और एक बार गौर दे तो हमारे ऐसा ध्यान में आएगा कि ये जो मेदो रोग की जो बीमारी है इसमें बाकी धातुओं के क्षय होते हैं और सिर्फ मेदो वृद्धि होती है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बाकी धातुओं के जब क्षय होते रहते तो उनके क्या लक्षण है और उस पर क्या हमें चिकित्सा करना चाहिए। रस क्षय का वजह जो है वो रूटीनली हम अगर देखते हैं तो रस का पोषण ना होना, मतलब आहार ही उतना नहीं लेना जिससे उसका रस का पोषण हो जाए। लेकिन ये जो मेदो रोग जन्य रसक्षय जो है उसका वजह जो है कि रस तक पहुंचने वाला जो चैनल है वही ब्लॉक हो गया है। उसका ब्लॉक होने का वजह मेद है, मेद के वजह से वो रस वह स्रोतों का ब्लॉक हुआ है और उसके वजह से रस का पोषण नहीं हो रहा और उसके वजह से ये रस में सब लक्षण दिख रहे। अगर हम एलोपैथी सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन देखते हैं तो उसमें हमें यह ध्यान में आएगा कि ओबेसिटी और हार्ट डिसीज ये एकदम नजदीक वाले दोनों बीमारी है। जैसे हार्ट के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, पहले एलोपैथी डॉक्टर्स उसके बताते हैं कि आप आपका लिपिड प्रोफाइल करके लो, आपका वेट आप कम करो तो आपकी बीमारी चली जाएगी। इसका मतलब क्या है? तो हमें अगर हमारा रस जो है, हमारे हृदय रोग की जो सब बीमारी है हम या मेदो रोग के लक्षण अगर हम देखते हैं उसमें सब जो लक्षण है वो हार्ट रिलेटेड ज्यादा लक्षण है, जैसा कि क्षुद्र श्वास है, स्नोरिंग है, शॉर्ट्स ब्रेथ है। ये अगर हम हार्ट के बारे में सोचते हैं या अल्प प्राण है, ये जो लक्षण जो है वो सब लक्षण अगर हम सोचते हैं तो वो कहीं ना कहीं पे हार्ट रिलेटेड ये लक्षण सब आ जाते हैं। और हार्ट की जो बीमारी है उसके जो स्रोतोरोध जन्य हार्ट अटैक जो रहता है, मतलब उसके जो चैनल्स ब्लॉक होने के वजह से जो हार्ट अटैक आता है वो चैनल ब्लॉक क्यों हुआ है तो मेद वहां पे बढ़ गया है। तो मेद क्यों बढ़ गया है तो उसकी वजह उसका निदान है। जो निदान अगर हम परिवर्जन कर लेते हैं तो फिर या स्रोतोरोध जन्य चिकित्सा हम कर लेते हैं, स्रोतोरोध निकालने वाली चिकित्सा कर लेते तो हार्ट पे भी अच्छा काम कर सकते। मतलब सिर्फ हम मेदो रोग पढ़ के भी बहुत सारी बीमारी में अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं और उसके रूट कॉज को हम अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। रस के बारे में हमें इस तरह से सोचना है, या रक्त का क्षय हो जाता है तो
अगर हम देखते हैं कि उसकी रक्त क्षय होने के वजह से उसकी त्वचा जो है वो रुक्ष होती जाती है, वो म्लान होता है, वो आदमी जो है उसको ताकत नहीं रहती, वो थका हुआ मतलब दिखता है इतना बड़ा लेकिन उसमें ताकत नहीं रहती। उसकी सबकी वजह जो है क्योंकि उसका रक्त धातु ही अच्छा नहीं बन रहा, तो उसका जो जीवन जो कार्य है वो कहीं ना कहीं पे वो डिप्रेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए जो रक्त का क्षय का जो लक्षण है वो सब उसमें दिखने लगेंगे। रक्त क्षय पांडु या उसका पित्त प्रकोपक आहार विहार इसके वजह से हुआ पांडु, उसके वजह से भी ये सब लक्षण दिख सकते हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि ये पेशेंट्स में, हमारे पास आए हुए पेशेंट्स में उसकी वजह मेदो रोग जन्य रक्त क्षय नहीं ना, ये हमें देखना चाहिए। क्योंकि उसका अग्नि अच्छा है, मतलब तीव्र अग्नि है, उसका श्रुतरोध है और फिर उसको रक्त क्षय हो रहा है, तो ये भी हमें देखना है। बहुत सारे केस हम अगर देखते हैं तो उसमें हमें ऐसा मिलता है कि आदमी अट्टा कट्टा रहता है लेकिन उसका हीमोग्लोबिन बहुत सारा कम रहता है, तो उसका वजह है वो मेदो रोग जन्य। फिर वहां पे सिर्फ हम रक्त का क्षय जो है रक्त रुद्धि करके नहीं ठीक कर सकते। जब तक हम उसका श्रोतरोध नहीं निकाल लेते, जब तक हम उसका श्रोतरोध दूर नहीं करते, तब तक हम रक्त की रुद्धि नहीं कर सकते, उसका क्षय भर के नहीं आ सकता। तो हमें ये भी देखना है कि हमारे रस क्षय में, रक्त क्षय में कहीं ना कहीं पे श्रोतरोध तो रीजन नहीं है। मासक क्षय के जो लक्षण बताए हुए, स्पीक, ग्रीवा, उदर, यहाँ पे शुष्कता होना, मतलब वहां के मसल्स शुष्क होना और वहां पे फैट जम जाना, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। मतलब वहां के अगर मसल्स शुष्क हो जाते हैं तो उनका कार्य हानि जो है वो भी कम हो जाएगा, और जितना कार्य हानि कम हो जाएगा उतना उनका जो ताकत है, मतलब मांस का जो धारण जो कार्य है वो कहीं ना कहीं पे हमें कम दिखाई देगा, और उसके वजह से बीमारियां बढ़ती रहेगी। मतलब आदमी तो बड़ा दिख रहा है लेकिन उसकी मसल्स में ही ताकत नहीं है, ऐसा हम ज्यादातर देखते हैं। हम जो ओबेसिटी के पेशेंट्स हैं उनको पूछते हैं क्या 2 बाल्टी पानी आप उठा के 4 स्टेप्स चढ़ सकते हैं क्या, तो वो तुरंत नहीं बोलता है, हमें इतना नहीं होता है। तो इसका मतलब है उसका मांस का क्षय होने शुरू हो चुका है। और वो फिर जब तक हम, बहुत सारे लोग हम देखते हैं का क्षय अच्छा रखने के लिए वो प्रोटीन्स ज्यादा खाते हैं, फिर वो स्निग्ध ही पदार्थ खाते हैं, और वो स्निग्ध पदार्थ खाने के वजह से उल्टा उनका मांसक्षय भर के आने के बजाय उनका फैटी बढ़ते जाता है और वो और वीक होते जाते हैं। तो ऐसे केस में हमें उनको पहले ये बताना है कि आपको पहला जो श्रोतरोध जो है मेदजन्य उसको निकालना है, फिर आप नरिशमेंट के लिए मांस वर्धक जो हुई है जैसा उड़द है या मांसरस है, ये चीजें आप खा सकते हैं। ना कि आप सिर्फ पनीर खा के या स्प्राउट्स खा के, जो आप सिर्फ स्निग्ध पदार्थ जो है वो खा के आपका मांस का क्षय आप भर के नहीं ला सकते। बहुत सारे लोग अभी ओपीडी में आते हैं, हट्टे काटे रहते हैं और बोलते हैं हमें अभी ताकत नहीं है तो हम अंडा खाएंगे या हम पनीर खाएंगे। तो उनको हमें ये समझाना पड़ता है कि आप पहला श्रोतरोध दूर करो, फिर आप ये बाद में जाके आपका अग्नि संतुलित जब होता है तब आप जाके ये कर सकते हैं। बहुत सारे केस में हमें अस्थि क्षय दिखता है। अस्थि के जो उपधातु है, केश है, लोम है, नख है, श्मश्रु है, उसमें भी पतन दिखता है, या अस्थि क्षय के वजह से ये भी हम ज्यादातर देखते हैं। तो इसका वजह हमें श्रुतरोध है ये जानना है, क्योंकि मेदो रोग जन्य अस्थि क्षय है, ये भी हमें पहचानना चाहिए, और उसको श्रोतरोध नष्ट करके ही वो अस्थि का क्षय हमें भर के लाना है। मज्जा क्षय के बारे में अगर हम देखते हैं तो जो हमारे अस्थि जो है दुर्बल हो जाते हैं, और मज्जा जो है वो क्षय होने की वजह से वात रोग और बढ़ जाता है, तो ये हमें अच्छी खासी दिखता है। तो इसको भी श्रोतरोध जन्य मज्जा क्षय ऐसा ही सोचना चाहिए। बहुत सारे फैट मेटाबॉलिक वाले लोग जो आते हैं वो क्लेब्य ये लक्षण लेके आते हैं, और वो क्लेब्य के लिए हमारे ज्यादातर वैद्य है तो वो डायरेक्टली ऐसी दवा देते हैं कि उसका क्लेब्य तुरंत दूर हो जाए। लेकिन वो जो वाजीकर द्रव्य है वो कब उसको काम करेंगे, जब तक हमारा मेदो रोग का श्रोतरोध जब तक उसका नहीं चला जाता है तब तक वो क्लेब्य वाजीकरण जो द्रव्य है वो नहीं काम करे। क्योंकि हमने डायरेक्टली वाजीकरण द्रव्य दिया और फिर उसमें अगर हम वाजीकर जो द्रव्य है वो अगर देखते हैं तो वो स्नेह प्रधान सब द्रव्य है,
तो ऐसे स्नेह प्रदान अगर हम द्रव्य देंगे तो उसको मेदो रोग और बढ़ता जाएगा, ना कि उसके शुक्र तक ये हमारा स्नेह पहुंचेगा, ना कि उसको क्लेब्य में फायदा मिलेगा। वैसा ही दौर्बल्य है, मुखशोष है, पांडुत्व है, ये सब या श्रम जो है, ये सब चीजें जो है वो शुक्र तक हमारा जो नरिशमेंट है वो स्रोतोरोध मेदो रोग के वजह से जो स्रोतोरोध होता है उसके वजह से नहीं पहुंचता है, और उसके वजह से वो जो शुक्र क्षय होता है। मेदो रोग में ऐसा बताया गया है कि ये मेदो रोग कभी कभी आदमी को जानलेवा भी हो सकता है। इसका वजह है जैसा ही दोषों का क्षय होता, जैसा ही ये धातुओं का क्षय होता है वैसा ओज का भी क्षय होता है। कभी कभी हार्ट अटैक की वजह से लोग एक्सपायर हो जाते हैं, या मेंदु में स्ट्रोक होने की वजह से लोग एक्सपायर होते हैं। ये अलग अलग जो रीजन, या डायबिटीज के कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने के वजह से लोग एक्सपायर होते हैं। तो इनका सबका जो वजह है वो जो है वो स्रोतोरोध जन्य मेदो रोग है। उनका नरिशमेंट में कहीं ना कहीं पे ये बाधा आता है, और नरिशमेंट नहीं होती, इसके वजह से ये लोग मृत्यु को भी अपना लेते हैं। इसलिए मतलब जितना सिंपल ये मेदो रोग दिखता है इतना नहीं है। हमें स्रोतोरोध के बारे में सोचना है, और ये स्रोतोरोध के बारे में जब तक हम नहीं सोचेंगे तो ये सबका क्षय होने ही वाला है। तो हर एक क्षय के पीछे हमें वो क्षय की वजह जानना है। ये क्षय की वजह मेदो रोग तो नहीं है, ये क्षय स्रोतोरोध तो नहीं है, ये जान के ही हमें ट्रीटमेंट करना है, ना कि तुरंत ब्रूहन चिकित्सा देना है। इसमें पहले कुछ रुक्षण देना है, कुछ पाचन देना है, और उसके बाद ब्रूहन देना है। कभी भी कोई पेशेंट क्षय का आता है, शुक्र क्षय का या मज्जा क्षय का आता है, तो तुरंत ब्रूहन चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। उसके पहले उसको रुक्षण देना है, पाचन देना है, फिर जाके उसके जो मतलब रुक्षण और पाचन की वजह से उसका स्रोतोरोध निकल जाएगा, और उसके बाद फिर उसको चिकित्सा में ज्यादा फायदा हो जाएगा, उसका ब्रूहन अच्छा होगा। नहीं तो फिर आपके जो ब्रूहणीय द्रव्य है उसके वजह से उसका फैट ही बढ़ेगा और उसको कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए हम चिकित्सा करते वक्त हमेशा इसको ध्यान में रखना है। सुश्रुत में मेदोरुद्धि के कुछ लक्षण आए हुए हैं। अगर हम मतलब सोचते हैं अच्छी तरह से, ग्रंथि है, रुद्धि है, गलगंड है, अर्बुद है, मेदोदोष्ट प्रकोप है, मधुमेह है, अतिश्वेत प्रभृति, ये सब मेदो दोष के रुद्धि के वजह से होने वाली बीमारी हैं। अगर हम अभी थोड़ा सा एलोपैथी को मिमिक करना चाहते हैं या एलोपैथी के बारे में सोचना चाहते हैं तो डायबिटीज और ओबेसिटी इसका अच्छा रिलेशन है, कैंसर इसका अच्छा रिलेशन है, थायराइड और ओबेसिटी इसका अच्छा रिलेशन है, या हर्निया और ओबेसिटी उसका अच्छा रिलेशन है, या कुछ ग्रंथि मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज जैसा, या स्तन ग्रंथि, इसमें भी हमें मेदोरुद्धि के वजह से निर्माण हुए ये बीमारी है। कोई भी मधुमेह का पेशेंट हमारे पास आता है और हम तो सिर्फ उसको मधुमेह नाशक चिकित्सा, उतना उसमें फायदा नहीं होगा। या कैंसर का कोई पेशेंट आता है, या थायराइड का कोई पेशेंट आता है, या कुछ हर्निया का कोई पेशेंट आता है, तो उसमें हमें ये देखना है कि उसकी वजह मेदो दोष तो नहीं है, क्योंकि ये जो बीमारियां ये अलग अलग भी दिखती हैं। हम ज्यादातर अगर थायराइड के बारे में सोचते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि सिर्फ ओबेसिटी की वजह से थायराइड आता है या होता है, लेकिन हम अभी देखेंगे तो कुछ लोग ओबेस भी नहीं रहते लेकिन उनको भी थायराइड हुआ रहता है, क्योंकि इसके कुछ स्टडी हुए हैं कि सिर्फ ओबेसिटी इज नॉट वन ऑफ द रीजन। लेकिन हमें मेदोरुद्धि के बारे में सोचते वक्त या मेदोरुद्धि के जो लक्षण है उसके बारे में सोचने के टाइम पे हमें यह सोचना है कि इसके थायराइड की वजह ओबेसिटी तो नहीं है, तो फिर हम ओबेसिटी को अगर क्योर करते हैं तो उसका थायराइड अपने आप क्योर होता है। हम ओबेसिटी को क्योर करते हैं तो उसकी रुद्धि कम हो जाती है। हम ओबेसिटी को ट्रीट करते हैं उसकी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज कवर्ड हो जाता है, उसका मधुमेह में अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। कुछ कुछ हम अगर देखते हैं अभी अगर जगन्नाथ दीक्षित सर का डाइट देखेंगे, या कुछ अभी लोग जो है कि डाइट के ऊपर हमारा अभी हम शुगर को पूरा कंट्रोल करते हैं, ऐसा जो लोग देखते हैं, तो वो जो सब लोग रहते हैं तो वो मेदोरुद्धि जन्य मधुमेह के रोग रहते हैं। तो फिर मेदोरुद्धि उसका जो रूट कॉज है वो अगर ठीक होता है तो वो मधुमेह जो है या उसका प्रमेह जो है वो अपने आप ठीक हो जाता है, ऐसा देखते हैं। लेकिन हर एक केस में ऐसा नहीं होता है। तो हमारे मेटाबॉलिक डिसीज में मतलब हर एक मेटाबॉलिक डिसीज में हमें ये सोचना है कि इसकी वजह मेदो रोग है क्या।
और मेदो रोग है क्या नहीं ये सोचने के लिए दो चीजें अच्छी बताई है, उसका अग्नि अच्छा होना चाहिए और वात प्रकोपजन्य उसको लक्षण दिखनी चाहिए। उसकी संप्राप्ति पे अगर हम वापस जाएंगे तो हमें ये ध्यान में आएगा कि मेदो रोग डायग्नोस करने के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये पेशेंट्स में उसकी संप्राप्ति कैसी हुई है, फिर उसमें लक्षण क्या क्या है, उसके हिसाब से हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं। अभी ये सब हुआ तो फिर मेदो रोग की चिकित्सा के बारे में, मतलब मैंने बताया कि हर एक व्याधि के चिकित्सा के बारे में सोचते वक्त हमें मेदो रोग को सोच के ही उसका मतलब उसका हेतु वैसा है क्या, उसके लक्षण वैसे थे क्या, और उसके वजह से उसके उपद्रव, उसके रुद्धि लक्षण, कुछ धातुओं के क्षय लक्षण वो उसी के वजह से आए क्या, ये अगर हमारा एक बार पक्का हो गया तो फिर हम ट्रीटमेंट के बारे में अच्छा सोच सकते हैं। मेदो रोग का जो चिकित्सा सूत्र है वो क्या है, अगर उसके ऊपर थोड़ा और गौर देंगे तो पहला मैंने बोला कि वाताघ्न अन्नपानानि, मतलब वातघ्न द्रव्यों के अन्नपान उसको जाना ही चाहिए, और फिर श्लेष्मो मेदो हरानी चाहिए, क्योंकि जब तक वात का संदूषण कम नहीं होता तब तक उसका अग्नि ठीक नहीं होगा, और जब तक अग्नि ठीक नहीं होगा तब तक उसका मेदो रोग बढ़ते ही जाएगा। इसलिए उसको ठीक करते वक्त पहले हमें देखना है कि वातघ्न चिकित्सा के साथ साथ हमें श्लेष्मो मेदोहर चिकित्सा करना है, और फिर उसके लिए दो गुण जो है हमें सबसे अच्छे यूज करने होते हैं, वो है रुक्ष और उष्ण। रुक्ष जो गुण है वो श्लेष्म के विरुद्ध है, और उष्ण जो गुण है वो वात के विरुद्ध है, या दोनों के विरुद्ध है। तो ये दोनों की मदद लेके, रुक्ष और उष्ण ये गुणों की मदद लेके हम सब मेदो रोग की चिकित्सा कर सकते हैं। मतलब रुक्षण और उष्ण ऐसी चिकित्सा देने के बाद वो पेशेंट्स का स्रोतरोध चला जाएगा, और स्रोतरोध चला जाने के बाद फिर वो जो बीमारी है उसका व्याधि प्रत्यनिक द्रव्य भी हमने यूज किया तो भी वो बीमारी ठीक हो जाती है। फिर यहाँ पे बस्ती है, उद्वर्तन है, ये सब जो ट्रीटमेंट्स है उसमें आ जाती है। ये सब अगर ये बीमारी अगर हम सब जो क्षय है या स्रोतरोध है या रुद्धिजन्य लक्षण है इसके बारे में अगर हमें द्रव्य संग्रह रखना है हमारे पास, तो क्या क्या द्रव्य संग्रह रख सकते हैं। तो ये जो सब गुडुचि है, मुस्ता है, त्रिफला है, तक्रारिष्ट है, माक्षिक है, विडंग है, नागर है, क्षार है, अम्लकक है, ये सब जो या बिलवादी पंचमूल है, ये या शिलाजतु जैसा रसायन है, अग्निमंथ जैसा द्रव्य है, प्रियंगु है, ये जो सब द्रव्य है इसके बारे में हमें सोचना है कि कहीं पे भी बीमारी इसके वजह से दिखती तो इनका हमें पहला सोचना है। मतलब अम्लक अगर शीत गुण का भी हो गया तो फिर भी वो मेदो रोग में बताया हुआ है। इसका मतलब हमें विद्रदी जैसी चिकित्सा करना है या भगंदर जैसा चिकित्सा करना है तो हम अम्लक के बारे में सोच सकते हैं, यवा अम्लक के बारे में सोच सकते हैं। तो हर एक बीमारी में इसके परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस करके वो बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं। मतलब पहले वहां पे स्रोतरोध निकालना है, फिर वो बीमारी के बारे में हमें सोचना है। नहीं तो फिर हम भगंदर है और वो मेदोरोध वृद्धि के वजह से है और तुरंत हम सब उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य देने उसको शुरू कर देंगे तो फिर उसको वो भगंदर ठीक होने के वजह उसको तकलीफ ही ज्यादा देगी। तो यो युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा जो बोली है या युक्ति चिकित्सा जो बोली है या योजना जो बोली है वो इसी के लिए बोली है। उसका भगंदर मेदो रोग के वजह से है, लेकिन हमें द्रव्य यूज करते वक्त ऐसे द्रव्य यूज करना है जो मेद को भी कम करे और भगंदर को भी अच्छा करे, तब जाके वो बीमारी ठीक होती है। नहीं तो हम अगर उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य ज्यादा देंगे तो वो उसकी भगंदर की बीमारी बढ़ती जाएगी और वो मेदो रोग उसका बाजू में रह जाएगा लेकिन भगंदर की तकलीफ हो जाएगी। तो इसलिए हमें बीमा ट्रीटमेंट के बारे में सोचते वक्त ये जो द्रव्य आए हैं, मुस्ता है, गुडुचि है, त्रिफला है, ये जो बैलेंस ड्रग जो है आप अगर इसमें देखेंगे तो सब त्रिदोष शामक ऐसे ही ड्रग ज्यादा है इसमें। तो ये जो बैलेंस ड्रग है वो हम ज्यादातर उसमें यूज कर सकते हैं ताकि उसमें हमें रिजल्ट्स अच्छे मिले और उसका स्रोतरोध निकाल के हमें वो बीमारी को ठीक हो सके। इसमें अगर सब जो धान्य जो अगर देखेंगे तो वो तृण धान्य ये ज्यादा आए हुए, या कुलत्य है, चना है, मुंडक है, कुद्रव है, ये जो सब अभी आप देखेंगे, नाचनी है, ये सो जो धान्य है वो मतलब हल्का धान्य जितना यूज करेंगे तो उसके वजह से आपको ज्यादा से ज्यादा मतलब इसमें वातग्न प्लस श्लेष्म मेदोहर ऐसी चिकित्सा जितनी अच्छी हो जाए
उतना ये बीमारी में अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। उसको जो अनुपानार्थ जो है अरिष्ट का कुछ यूज करने को बोला है, तो जो अरिष्ट जो है वो ज्यादा उष्णता निर्माण नहीं करते लेकिन बैलेंस करते। कौन से बीमारी में कौन सा अरिष्ट यूज करना है ये भी हमें ये मेटाबॉलिक डिसीज के बारे में सोचते वक्त यूज करना है, ना कि हर एक किसी में कॉमनली हमें यूज करना है। जो उसका वेट कम करना है तो चलो विडंगारिष्ट ही दे देते, ऐसा नहीं होगा। कहीं पे हमें द्राक्षारिष्ट यूज करना है, कहीं पे हमें अश्वगंधारिष्ट भी यूज करना पड़ता है। तो मतलब उसकी बीमारी को मतलब अभी शुक्र क्लेब्य में देखेंगे तो बाबा हम वो मांस मेदो रोग जन्य अगर क्लेब्य रहेगा तो उसको हम अश्वगंधारिष्ट जैसे दवा दे सकते हैं। उसके वजह से उसको उसका जो मेदो रोग का अवरोध है या श्रोतरोध है वो भी निकल जाएगा और अश्वगंधा वहां पे जाके उसका अच्छा काम करेगा। ऐसा भी हमें इसके बारे में सोचना है। आपको तो बाकी सब लोगों को पता है कि व्यायाम जो है या मन की जो चिकित्सा है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, उसमें ट्रीटमेंट प्लान हम ऐसा रख सकते हैं कि पहला हम निदान परिवर्जन जो है, तो अभी सब लोगों ने इसके बारे में बोला है, फिर भी जो निदान परिवर्जन जो है जिसके वजह से हर एक पेशेंट में इसका निदान अलग आएगा। किसी में पनीर आएगा, किसी में दिवा स्वाप आएगा, किसी में अव्यायाम आएगा। जो कुछ भी निदान है उसका, जो कुछ भी वजह है वो पहले हमें उसे रोकना है। उसके बाद में आहार के बारे में हमारे जो गुरु है संतोष सूर्यवंशी सर वो अच्छे अभी बताएंगे, लेकिन फिर भी आहार जो है, जो संतुलित आहार बोलते हैं, वो अच्छा संतुलित आहार लेते हैं जिसके वजह से स्निग्ध प्रमाणात यूज नहीं हो और संतुलित हो। उसमें भी आप अगर उसके मेदो चिकित्सा में कौन से धान्य यूज ज्यादा करना है, कौन से तृण धान्य कौन से यूज करना है, इसमें वो जो बताया है वो आहार में अगर हम ज्यादा रखते हैं तो उसका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जल्दी ठीक होने के लिए फायदा हो जाएगा। एक्सरसाइज में ही बहुत सारे लोग चलने को बोलते हैं, लेकिन हम तो ज्यादातर लोगों को चलने के बजाय जॉइंट्स मूवमेंट्स है या योगासना है। योगा के बारे में भी मनीषा सूर्यवंशी मैडम ने बताया कि कौन से योगा अच्छा ज्यादा करना है। तो कुछ योगा है, कुछ जॉइंट्स मूवमेंट्स है, कुछ पीटी एक्सरसाइज है। ऐसा अगर हम करते हैं तो उसका फायदा जो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जल्दी ठीक होने के लिए फायदा होता है। माइंड की चिकित्सा भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। इसमें मतलब चिंता, ये जो लोग रहते हैं मेदो रोग के, वो चिंता नहीं करते, उनको चिंता करने को बोला हुआ है। चिंता मतलब उनको क्या बोलते हैं, जो जरूरी चीज है वो करने के लिए जो उसके पीछे जो सोच होनी चाहिए वो अगर सोच होती है, मतलब हमें मेदो रोग के वजह से ये डायबिटीज हुआ है, इसकी भी उन्होंने चिंता की तो फिर भी उनका वेट लॉस होके उनका मेदो रोग चला, उनका प्रमेह या डायबिटीज चला जाएगा। फिर उसके बाद शमन औषधि मैंने अभी बताया 1-2 मिनट पहले कि हमें कौन से द्रव्य ज्यादा यूज करना है और मतलब उसका कौन सा उपद्रव कौन से कंडीशन में पेशेंट है और उसके साथ साथ कौन से औषधि देना है, ये हमें मेदो रोग के बारे में सोचना पड़ता है। शोधन में हम वमन दे सकते हैं, विरेचन दे सकते हैं, बस्ती दे सकते हैं। कौन से बस्ती देना है, कौन सा वमन करना है, विरेचन करना है, इसके बारे में बहुत सारे मेरे जो अभी जो साथी हैं उन्होंने इसके बारे में बताया है। फिर भी एक सुश्रुत में एक लेखन बस्ती आया हुआ है या लेखनीय गण का भी बहुत सारे लोग लेखन बस्ती देते हैं। तो ये दोनों जो लेखन बस्ती जो है वो हम शोधन चिकित्सा में यूज कर सकते हैं। या ज्यादातर अगर ऊर्ध्व जत्रुगत रोग रहेंगे तो वमन दे सकते हैं, अधो जत्रुगत रोग रहेंगे तो विरेचन दे सकते हैं। मतलब कहाँ पे मेदो रोग ने श्रोतरोध किया है वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर पेशेंट को सिर्फ मेदो रोग है इसलिए हम वमन देने जाएंगे तो पेशेंट को तकलीफ होगी, लेकिन वो मेदो रोग ने उसके वो पेशेंट में सचमुच जो ऊर्ध्व जत्रुगत रोग किया या मेदो रोग है क्या, ये अगर देखेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि स्पेसिफाइड ट्रीटमेंट जितना हम करेंगे उतना रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। उसके बाद है रसायन एवं वाजीकरण चिकित्सा। मगर मेदो का जगह श्रोतरोध निकल जाता है तो वो श्रोतरोध निकालने के लिए उनको ऐसे रसायन रखना है कि जो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का श्रोतरोध निकालते रहेंगे और उसका अपपुनर्भव नहीं हुए देंगे। इसलिए मेदो रोग में सबसे श्रेष्ठ जो रसायन है वो शिलाजित रसायन बताया हुआ है कि वो, और दूसरा जो है वो गुड़ुचि रसायन। ये दोनों गुड़ुचि रसायन और शिलाजित रसायन जो है वो दोनों ही हमें अपपुनर्भव चिकित्सा के लिए या मेदो रोग को वापिस ना होने
मदद करेंगे। इसलिए गुडुचि जैसे रसायन या शिलाजित जैसे रसायन से ये हम इसमें यूज कर सकते हैं, ताकि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो है लॉन्ग टर्म के लिए चले जाएंगे। मुझे लगता है कि बेसिक जो है कि हमने उसके बारे में क्या सोचा है कि ट्रीट द कॉज नॉट द इफेक्ट ओनली। मतलब उसका अगर रसक्षय है या कोई धातु की रुद्धि है, कोई अर्बुद है, कैंसर है, उसके पीछे पहले डिसीज को देखो और फिर उसके बाद उसका कॉज देखो। उसका कॉज अगर मेदो रोग रहेगा तो पहले मेदो रोग को मतलब स्रोतोरोध कैसा दूर हो जाए ये पहले देखो और फिर चिकित्सा करो। ये मेरे इसका अभी लेक्चर का जो टेक होम मैसेज है, ट्रीट द कॉज नॉट द इफेक्ट। मतलब कॉज अगर आप ट्रीट करते हो तो इफेक्ट अपने आप ट्रीट हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो हम 2 मिनट में लेते हैं। धन्यवाद। और मेरा लेक्चर यहीं पे खत्म हुआ। सबने बड़ी पेशेंस से मुझे सुना है। मैं सिर्फ यहाँ पे ट्रीटमेंट बताने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक दृष्टि देने आया हूँ, जो दृष्टि बीमारी को अच्छी तरह से समझे और उसके बाद ट्रीट करें। क्योंकि क्लेबे के लिए पेशेंट आ रहा है, हम उसको मकरध्वज खिला रहे, उसको अश्वगंधा खिला रहे और रिजल्ट कुछ नहीं आ रहे। जब तक हम वो क्लेबे का वजह नहीं देखते, वो क्लेबे का वजह अगर मेदो रोग है और मेदो रोग की वजह उसका स्रोतोरोध है, जब तक स्रोतोरोध नहीं निकालेंगे और वो स्रोतोरोध निकाल के फिर रसायन या वाजीकरण नहीं देंगे, तब तक उसको रिजल्ट नहीं आने वाले। इसलिए ट्रीट द कॉज नॉट द इफेक्ट। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस थॉट। एक्चुअली हेतु पे विचार करना चाहिए, बड़ी अच्छे से आपने बताया है। सो कुछ क्वेश्चन है वैद्यों के, तो वो बताइए। एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि इसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे, बीएमआई के बारे में और बीएमआर के बारे में। लाइक मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है ये। और ये एक्चुअली आयुर्वेद के हिसाब से लाइक स्थूलता में हम लोग मेदो धातुअग्नि की मान्यता को हम लोग देखते हैं ना, धातुअग्नि मान्यता के हिसाब से सोचते हैं। बट कहीं जाकर मॉडर्न साइंस उसको लाइक बीएमआई के कैलकुलेशंस और इतना आपका बीएमआई बड़ा है तो ओबेसिटी है, ऐसे कुछ होता है। तो ये थोड़ा हम कैसे कोरिलेट करते हैं? एग्जैक्टली। बीएमआई कोरिलेट कहने के पहले उसके पीछे मैं एक थॉट देना चाहता हूँ। बहुत सारे पेशेंट्स देखते हैं, लेकिन उसका लक्षण, मेदो रोग के जो लक्षण दिए हैं हमारे शास्त्र में, वो पेशेंट में हमें पहले देखना है। बहुत सारे लोग फिट रहते हैं, उनको ना श्रम श्वास रहता है, ना स्वेदाति स्वेद प्रवृत्ति रहता है, ना दुर्गंध रहता है, और उसका बीएमआई बढ़ा हुआ रहता है। फिर वो आदमी बीएमआई कम करने के लग जाता है और बीएमआई कम करते करते उसका क्षय हो जाता है। तो उसके बॉडी में पहले, मतलब आयुर्वेदिक वैद्य ने पहले ये देखना है कि उसके बॉडी में जो बॉडी में मेदो रोग के कुछ लक्षण है क्या। अगर मेदो रोग के लक्षण हो गए तो ही उसको बोलना है आप वेट कम करो। अभी हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि हमारा बीएमआई बढ़ा हुआ था और हमने ट्रीटमेंट लिया, मैंने डाइट किया या हेवी एक्सरसाइज किया, उसके बाद वो क्षय के लक्षण लेके आता है। उसके बाल झड़ रहे होते हैं, झुर्रियां आई हुई थे, सैगिंग हुआ रहता है। फिर ऐसा वेट कम करके कोई मतलब का नहीं। तो पहले ये देखो कि उसका बीएमआई, मतलब बीएमआई ये जो इंडियन ओरिजिन नहीं है, बीएमआई इज ओरिजिन फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, बराबर है। तो वो बीएमआई हमारे लोगों को सेम कैसा होगा, हर एक का हाइट वेट, मतलब यही जापान में अगर आप हाइट वेट लेंगे तो उनका बीएमआई अलग रहेगा, यूरोपियन कंट्री में अलग रहेगा। इंडियन कल्चर्स में ही देखेंगे तो महाराष्ट्र की हाइट वेट अलग रहेंगी, हरियाणा पंजाब की हाइट वेट अलग रहेंगी, केरला की हाइट वेट अलग रहेंगी। तो उसके ऊपर हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये बीएमआई इसके लिए नॉर्मल नहीं है। तो वैद्यों को मुझे रिक्वेस्ट है कि आप उसको लक्षण देखो, ऑब्जर्व करो, सचमुच उसके अति स्नेहन के हेतु हो रहे क्या, उसके वजह से उसको तकलीफ कुछ हो रही क्या। बहुत सारे वो लोग देखते हैं वो पे बीएमआई करते हैं या नजदीक के जहाँ पे बीएमआई की मशीन सभी तो जिम में लगी हुई रहती है। हम गार्डन में भी घूमने जाएंगे तो वहां पे एक लड़का वो ऐसा खड़ा लेके रहता है और वो फिर करेगा और बोलेगा आपको हर्बल लाइफ लेना पड़ेगा, ये XYZ आपको दवा लेनी पड़ेगी और आपका बीएमआई ज्यादा है, आपके इसमें फैट है। जो अच्छा आदमी रहता है वो अच्छा 10-15 किलोमीटर रनिंग कर सकता है, फिर वो बीएमआई के पीछे भागना शुरू कर देता है और बाद में दिखता है कि वो 15 किलोमीटर जो रनिंग कर सकता था वो 2 किलोमीटर भी रनिंग नहीं कर पा रहा,
क्योंकि उसने उसका धातु का क्षय, ना कि उसने उसका फैट का क्षय करके लिया। इसलिए हमें पेशेंट को आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना है। मैंने मेरे स्लाइड में आप देखे होंगे, मैंने एलोपैथी के पहले ओबेसिटी एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर देखे। आप सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर देखो, वो आयुर्वेद में वर्णित है, एवरीथिंग इज इंक्लूड इन आयुर्वेदा। लेकिन उसका वजह हम मेदो रोग होना चाहिए, क्योंकि ये अलग अलग बीमारी है ना। कैंसर ही अलग बीमारी, आदमी लकड़ा कुकड़ा दिख रहा है और हम बोल रहे हैं कि ये ओबेसिटी की वजह से इसको कैंसर हुआ, ऐसा नहीं बोल सकते। उसकी मेदो रोग के निदान थे क्या, उसके मेदो रोग के लक्षण थे क्या, और उसके बाद उसको कैंसर हुआ कि ये हमें देखना चाहिए, तब जाके हम उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कर सकेंगे, ऐसा मुझे लगता है। यस सर, वेरी ट्रू, वेरी नाइस थॉट। बिल्कुल हमें सभी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में, और हेतु को हमें खोजना होगा, यही वैद्य का काम है एक्चुअली। हेतु परिवारजन बेस्ट चिकित्सा है। तो आगे बढ़ते हैं, वी आर एट द एंड ऑफ दिस सेशन, सो आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर संतोष सूर्यवंशी सर फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र। संतोष सर के काफी स्टूडेंट्स ने अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है, ये गुरु के लिए बहुत ही एक बड़ी बात होती है, और सर का भी मैं बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करना चाहूंगी। डॉक्टर संतोष सूर्यवंशी सर को आप सभी जानते हैं, और जैसे कि सर एक अलग इससे चलते हैं, अलग जज्बे से काम करते हैं। नेचुरल फील्ड या खेती से जुड़े, या उनका जो स्वग्राम उन्होंने डेवलप किया है, आई थिंक अभी सर स्वग्राम में ही दिख रहे हैं। तो स्वग्राम में हूँ अभी क्योंकि टाइम होके चला गया ना। यस यस, थोड़ा सा लेट हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। सो एक अलग विषय के साथ यहाँ पर मैं आमंत्रित करती हूँ, औषध सेवन, आहार सेवन काल और स्थूलता। सर के बारे में खास ये है कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिसेस प्रतिभाताई पाटिल को विश्वकर्मा की ट्रीटमेंट दी थी, तो एक हॉनरेबल पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और आहार सेवन काल, मुझे लगता है ये बड़ा अलग विषय भी है, तो हम कुछ अलग से आपसे सुनना चाहेंगे। तो वेलकम सर। हाँ नमस्ते। सॉरी, एक्चुअली मैं बहुत देर तक रुका रहा था क्लिनिक में, लेकिन टाइम हो गया इसलिए मैं निकल आया यहाँ से। तो अभी मैं सोग्राम में ही हूँ। ओके, देन विल स्टार्ट। आवाज आ रहा है ना ठीक तरह से? यस सर, यस, आवाज तो आ रही है। ओके, तो विल स्टार्ट। पहले मैं आयुष दर्पण और मैडम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरा 2-3 बार अच्छे से ये संभाषण रखा है। अभी एक्चुअली मैं चाहता था कि संभाषण हो जाए, लेकिन ये ऐसी बातें है कि यहाँ संभाषण ये ऑनलाइन की वजह से नहीं हो पा रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं। आज बेसिकली सुबह से जो भी लेक्चर्स चल रहे हैं, सुबह से जो भी कॉन्वर्सेशन चल रहे हैं, उसमें हमने आयुर्वेद की पूरी परिभाषा, आयुर्वेद का पूरा ट्रीटमेंट, पंचकर्म थेरेपी से लेके हर चीजों का हमने पूरा डिस्कशन किया है। और इन सब डिस्कशन और इन सब चीजों को अगर देखते हैं हम, तो कुछ चीजें ऐसे हैं जो हमें आज अलग तरीके से देखनी होगी। जैसे कि लास्ट जब से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर शुरू हुआ है, और लास्ट कुछ सालों से कृतक प्रज्ञा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो जैसे हमने साइंस और टेक्नोलॉजी का भरपूर मात्रा में प्रयोग करते करते हम जैसे आगे आ रहे वैसे ही हमारे बीमारियों का भी बहुत अलग तरीके से और बहुत ही अलग ढंग से हेतु सेवन हो रहा है। आज तक हम मेदो रोग का निदान सेवन करते थे कि खान पान ज्यादा खाना या अव्यायाम वगैरह वगैरह, लेकिन आज मैं जो बातें बताने जा रहा हूँ थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक है। इट्स अ टोटली डिफरेंट। और ये अगर ये पहले तो आयुर्वेद ग्रंथों में बहुत साल पहले बता के रखा है, लेकिन इसका सही में ब्यौरा अगर देखेंगे हम, तो वो कितना सटीक रूप से पहले ग्रंथों में या वैद्य हमारे ऋषि मुनियों ने बता के रखा है, ये हम देख सकेंगे। अभी हम इस चीज के लिए तैयार होना चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम बढ़ रहे, इस
ये मेदो रोग है, ओबेसिटी और ओबेसिटी रिलेटेड एनी टाइप ऑफ डिसीज, ऑल दीज आर रिलेटेड टू, अभी वैद्य नीलेश जी ने सब मेटाबॉलिक की चीजों में बातें बताई, थोड़ा योग के बारे में भी हो गया, और सुबह से हमने मॉडर्न साइड से भी देखा कि मेदो रोग का क्या है, लेकिन एक अलग ढंग से, बहुत ही अलग ढंग से हम अभी बात करेंगे। जैसे कि वी ऑल आर रैप्ड विथ केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स एंड कॉस्मेटिक्स एंड बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे घर के पेंट है, हमारे आजू बाजू हर तरफ जहां भी हम पैर रखते हैं, जैसे कि एयर कंडीशन कार में बैठते हैं, एसी घर में बैठते हैं, और जिस रोड पे चलते हैं, जिस हवा में रहते हैं, हर चीज में we are wrapped with chemicals, we are wrapped with pesticides, fertilizers and all plastics and all these are very very saturated material जो नेचर में डाइजेस्ट नहीं हो पाता, वो हमारे शरीर में माइक्रो लेवल पे एब्जॉर्ब हो रहा है। जैसे कि that is absorbed by our skin, that is absorbed by our guts, that is absorbed by our total inhalation यानी respiration and all these things, ये सब चीजों की वजह से, ये सब चीजों की वजह से ये पूरी तरह से हमारे बॉडी में माइक्रो लेवल पे डिपॉजिट हो रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट वहां स्थान संश्रय होके बहुत सारी बीमारियों का, बहुत सारे डिसीज के सिम्टम्स और साइंस आने लगते हैं। ऐसा है। इसके पहले मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं, जिसमें फर्स्ट थिंग इज दैट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, दैट इज फर्स्ट थिंग है कि हम खाना नहीं खा रहे, इसकी वजह से हम ओबेस होते जा रहे हैं, मेदो रोग के शिकार होते जा रहे हैं। आप सोचेंगे हम खाना नहीं खा रहे, यस आई एम डेफिनेटली, मैं आपको प्रूव कर सकता हूं कि हम खाना नहीं खा रहे। खाना खाने का मतलब क्या है, ये इसलिए खाना तो हमारा संतर्पण करने वाला है, खाने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा खाना पहले हमारे पुरखों को नहीं मिलता था। हमारे खाने में दाल है, चावल है, सब्जी है, रोटी है एंड पनीर है, चीज है, घी है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल्स है, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। हमारे पास संतर्पण जन्य चीजों के लिए इतना खाना है, लेकिन वो खाना हमें अपतर्पण जन्य बीमारियों को तैयार कर रहा है। आप सोचेंगे ऐसा उल्टा कैसे बोल रहे हैं, तो मैक्सिमम आज की ओबेसिटी है विच इज संतर्पणोक्त अपतर्पण है। जैसे कि हम दिखते बड़े हैं, दिखते ओबेस है, लेकिन अंदर से पूरी तरह से हम माल नरिश्ड है। हम ये पहले मैंने बोला केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये एब्जॉर्ब होके हमारे बॉडी में बहुत सारी जगह पे स्थान संश्रय करके, व्यक्त होके, भेद करके अनेक तरह के डिसीजों का निर्माण कर रहे। वैसे ही हम खाना न खाने की वजह से, यानी कि हम ऐसी सिचुएशन में खाना खाते जब बॉडी को जरूरत नहीं होती है। अभी देखिए कि हमारे बॉडी में जो महाभूताग्नि है, उसे हम सिंपल भाषा में हार्मोन्स कहते हैं। हमारा 24 घंटे का कल का व्यवहार देख के, कल का, परसों का और हमारे पूरे लाइफ का व्यवहार देख के हमारी बॉडी पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात ये तैयार करती है कि हमारे बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है कि हमें एस्टिमेटेड लाइफ जितना मिला है, हमें एस्टिमेटेड लाइफ कितना मिला है, इसका शुक्र शनि जीव संयोगे जब होता है, तब वो एस्टिमेटेड लाइफ यानी हमारे एक्सपायरी डेट पक्की होती है। और इस एक्सपायरी डेट को तक जीताने के लिए, जैसे कि समझो मेरे एक्सपायरी डेट 80 है, तो 80 साल तक जीने के लिए हमारे हार्मोन्स 24/7 काम करते हैं। हमारा महाभूताग्नि 24/7 काम करता है। तो वो क्या करता है कि वो पूरी तरह से
हिसाब रखता है कि हमारे बॉडी में 80 साल जीने के लिए धातु पोषण है क्या नहीं, कुछ बीमारियां है या धातु पोषण नहीं हुआ है, तो उस सब चीजों को हमें कुछ भी करके ठीक करना है और धातुओं का पोषण करके आगे जाके हमें मजबूती तैयार करनी है। और उस मजबूती तैयार करने के लिए हमें रोज कितना खाना खाना चाहिए और कितना खाना हमारे बॉडी को जरूरी है, इसका पूरा हिसाब होने के बाद हमारे एंजाइम्स यानी कि धात्वाग्नि को कन्वर्जन के लिए प्रवृत्त किया जाता है। और उस धात्वाग्नि को प्रवृत्त करने के बाद वो धात्वाग्नि रॉ मटेरियल के लिए हमारे एसिड्स यानी हमारे जाठराग्नि को न्योता देते हैं, इनवाइट करते हैं कि हमें रॉ मटेरियल एनालिसिस करके दे दो। वो रॉ मटेरियल इतना अच्छा होना चाहिए ताकि हम हमारे बॉडी का नरिशमेंट कर सके, सप्त धातु वर्धन कर सके। तो क्या होता है इसमें, एक सिंपल स्टोरी है, बॉडी की अपने एक सिंपल स्टोरी है। वो रोज 24/7 हमारी बॉडी सप्त धातु निर्माण में लगी रहती है। उस बॉडी का मन उसके लिए सायभूत रहता है और उसका आत्म तत्व भी उसी के लिए बना है। हमारे बॉडी मन आत्मा यानी शरीर मन आत्मा को बिल्कुल नहीं चाहिए होता है कि हम राष्ट्रपति है या हम कुछ मैनेजर है या कुछ बड़े पोस्ट पे। उसको चाहिए होता है कि हम हमारा खुद का पोषण करें, हम हमारे खुद की एनर्जी को अच्छे तरह से मेंटेन करें ताकि हम 80 साल 90 साल 100 साल तक जीते रहे। हमारे पुरखों ने कभी इस चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अगर कॉम्प्रोमाइज किया तो उन्होंने नेचुरल डेथ को इनवाइट किया और वो पूरी तरह से उसके ऊपर निर्भर थे ताकि वो हमारे बीमारियों को लेके कभी जीते नहीं थे। इसलिए बिकॉज ऑफ दैट एट द एंड ऑफ लाइफ दे हैव नो मेडिसिन, दे हैव नो डिसीजेस, नथिंग। तो ये जो है हमारे महाभूताग्नि, धात्वाग्नि और जाठराग्नि, ये तीनों की तैयारी होते होते सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद सूर्योदय के बाद तुरंत भूख लगती है, इतनी जोर से भूख लगती है। उस भूख को अगर हम चाय, ब्रेकफास्ट या आधे अधूरे चीजों से कंप्लीट करते हैं तो that all are absorbed with our acids, hormones and enzymes, and that all are converted into high level metabolic disorder, acidic metabolism, enzyme metabolism और hormonal metabolism। ये तीनों का मेटाबॉलिज्म यानी बायो क्लॉक पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। एंड वहां जहां धातु पोषण करना है, सप्त धातुओं की निर्मित करनी है, दो चीजें होती है, एक पोषण करना होता है और नव निर्मित होती है। उन दोनों चीजों को पूरी तरह से डिस्टर्ब किया जाता है। वो दोनों चीजों को पूरी तरह से ब्लॉक किया जाता है या मिथ्या व्यवहार होके वहां जैसे कि खाना आना चाहिए उसके बदले वहां नरिशमेंट आनी चाहिए, उसके बदले आइदर एम्प्टी स्टमक से भूख लगी है लेकिन हमने नहीं खाना खाया तो एम्प्टी स्टमक से वात को वहां लिया जाता है। तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू माल नरिशमेंट ऑफ दैट पार्ट और हम बोलते हैं वहां पेन शुरू हुआ है, वात बढ़ चुका है। वैसे ही हमारा एसिड्स, एंजाइम्स और हार्मोन्स को एब्जॉर्ब किया जाता है और हमारे उस शरीर में हीट बनना, एसिड बनना और एसिडिक नेचर की बॉडी बन जाती है और उसकी वजह से हमारे बॉडी में यूरिक एसिड से लेके बहुत सारी चीजें तैयार होती है। बट इन दोनों चीजों में जब वात बढ़ने लगता है तो हमारा बॉडी सिर्फ फूलता जाता है और हम फील करते हैं हम तो बहुत परहेज कर रहे हैं, हम खाना बहुत हिसाब से खा रहे हैं, कम खा रहे हैं, हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तभी भी हमारे भूख के टाइम हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारे भूख के टाइम हम चाय पी रहे हैं, हमारे भूख के टाइम आधा अधूरा ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, हमारे भूख के टाइम हम गलत चीजें खा रहे हैं। वो सब गलत चीजें गलत बीमारियों का यानी कि वो सब गलत चीजें बीमारियों को न्योता देती है और बहुत ही बुरी तरीके से ऑल मेदो रोग एंड मेदो रोग रिलेटेड
चीजें बनती है। उसी टाइम अगर हम अच्छा खाना देते हैं तो that food is converted into high level nourishment and that is converted into, आप थोड़े से सप्त धातुओं का पोषण होने के बाद थोड़ा मेद वृद्धि होगा तो भी चलेगा, लेकिन वो संतर्पणोक्त यानी व्याधि की निर्मित हो जाएगी, लेकिन संतर्पणोक्त अवतर्पण नहीं होगा। यानी कि हम दोपहर में बहुत अच्छा खा रहे हैं, लेट नाइट खा रहे हैं, बहुत सारे चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम आजकल प्रोटीन शेक ले रहे हैं, बहुत सारा घी खा रहे हैं, बहुत सारे चीज खा रहे हैं, लेकिन ये संतर्पणोक्त फूड हमें अपतर्पण करके पूरे बॉडी में सैचुरेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एसिड्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, गैसेस, अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड मटेरियल, undigested chemicals, unidentified pesticides, fertilizers, lots of body cleansing agent, chemical agent, cosmetic agents, floor cleansing agent, हार्पिक से लेके हर चीज हमें थोड़ी थोड़ी बॉडी एब्जॉर्ब किसी ना किसी तरीके से एब्जॉर्ब करके बॉडी हमारी सिर्फ फूलती रहती है, एक्सपांड होती रहती है और हमें लगता है दिस इज अ केस ऑफ मेदोरोग। बेसिकली दिस इज अ केस ऑफ टोटल मिथ्या और chemical, plastic and pesticides and all lot of things are saturated case, and because of that अचानक से किडनी फेल्यूर, अचानक से डायबिटीज कम उम्र में, अचानक से कैंसर डायग्नोस होता है और लोग बोलते हैं अरे ही इज नॉट एडिक्टेड पर्सन, ही इज, हम बहुत अच्छी तरह से संभालते हैं खुद को, रोज एक्सरसाइज भी करते हैं, रोज बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन ये कोई नहीं पूछता और बताता भी नहीं कि आप सूर्योदय के साथ, भूख के साथ पूरा खाना खाते हो क्या। खाना खाने का मतलब है, अन्न सेवन का मतलब है, आज मेरा टॉपिक है अन्न सेवन। अन्न सेवन का मतलब है जब भूख है तब आपके सलाइवा है, भूख और सलाइवा के साथ हमारे बॉडी में एसिड सिक्रेशन अच्छा है, एसिड सिक्रेशन के साथ हमारे बॉडी में एंजाइम्स अच्छी तरह से सिक्रेट हो चुके हैं और बॉडी कंस्ट्रक्शन के लिए हार्मोन्स भी सिक्रेट हो, इतनी बड़ी चेन अगर है तो दैट इज कॉल्ड एज भूख। और वो भूख, फर्स्ट एपेटाइट ऑफ द बॉडी इज अर्ली इन द मॉर्निंग। वो कब लगे? वो अगर हम अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हैं, यानी बिफोर 6 o'clock उठते हैं, तो हमें प्राकृत भूख का बहुत अच्छे से ज्ञान होता है। बिफोर 7 o'clock और बिफोर सनराइज यू हैव टू कंपल्सरी, आपको क्या करना है? तो कंपल्सरी आपको एक्सरसाइज, फूड, किचन में काम करना, पूरी तरह से पाक क्रिया यानी कि स्वयं पाक बनाना, ये सब चीजें 7 o'clock के पहले करनी है। भूख के समय पेट में भूख है और आप एक्सरसाइज कर रहे, वॉकिंग कर रहे, भाग रहे, दौड़ रहे या खाना बना रहे या कोई भी चीज कर रहे, दैट वो आपको बहुत ही बुरी तरीके से अनेक तरह की बीमारियों का शिकार करेगी। अलोंग विद दैट माल नरिशमेंट हो जाएगा। ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए हमें आगे जाना है। अर्ली इन द मॉर्निंग। दूसरी चीज है, खाना खाने का मतलब है यू हैव टू च्यू योर बाइट थॉरली, यानी आपने स्मॉल बाइट लिया है और उस इतने अच्छे से च्यू करो कि उसका सलाइवा हो जाए, ताकि आपकी टंग उसको रीड में पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइजर्स है, इसमें बहुत सारे, और along with that food lots of good quality of good quality of धातु पोषण मटेरियल in that food। तो उसको डिस्टिंग्विश करे, सार भाग और किट्ट भाग, ये दोनों को डिस्टिंग्विश करे ताकि जल्द को एनालाइज किया जाए। तो हमारे बॉडी में कहीं भी सलाइवा सिक्रेट नहीं होती मुंह के अलावा, और हमारे बॉडी में रस का ज्ञान कहीं भी नहीं होता टंग के अलावा, रसनेंद्रिय के अलावा, और हमारे बॉडी में दांत भी नहीं है कि हमारे जठर में या किसी, तो हमें इतने 32 टीथ दिए हैं,
इतना अच्छा बकल कैविटी दिया है, इतना अच्छा मुंह में टेस्ट दी है, उसका हम यूज करेंगे तो हमारा टंग पूरी तरह से रसनेंद्रिय हमारा पूरी तरह से उस खाने के हर बाइट के हर नैनो पार्टिकल को रीड करेगा, और रीड करने के बाद ब्रेन को बताएगा दिस फूड कंटेन इतना इतना सार भाग है, बाकी किट्ट भाग में विष है विच इज नॉट यानी कि बॉडी को फ्रेंडली नहीं है, उस विष को हमें तुरंत बाहर निकालना है। तो हम निरिंद्रिय यानी इनऑर्गेनिक फूड खाने के बावजूद भी हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करती है, यानी केमिकल फूड को भी पचाने की क्षमता रखेगी, ताकि हम यानी कि इट्स नॉट प्रैक्टिकल पॉसिबल फॉर एवरीवन। मैंने तो खेती की है, मैंने तो बहुत सारे सेंद्रीय और नेचुरल फूड को मैं खा भी रहा हूँ, लेकिन हर एक के बस के आज के जमाने में ये बात नहीं है। तो यू हैव टू च्यू इट थॉरली टिल आपकी टंग ए रीड कर सके, रसनेंद्रिय आपके रीड कर सके, ताकि वो ब्रेन को बता दे कि आपके शिरो हृदय को बता दे कि इसमें गलत क्या है, सही क्या है, ताकि आपके एसिड्स एनालाइज करने के लिए सीक्रेट हो जाए। जैसे कि पेस्टिसाइड की मात्रा खाने में बहुत है, तो आपके लीवर से वैसे एसिड सीक्रेट हो जाएंगे जो ब्रेन ने बताया, रसनेंद्रिय ने बताया है कि इस खाने में बहुत गलत विष मात्रा है, तो उसको एनालाइज कर सके, ताकि वो मल से यानी मूत्र स्वेद और इससे निकल जाए। तो ये सब है। दूसरी एक चीज है पोषण यानी शिरो हृदय और पंच ज्ञानेंद्रियों का पोषण। नवनिर्मित तो हमने देखा है कि पक्वाशय के अंत में होती है, लेकिन पोषण मुंह में होता है। रस धातु या रस में मधुर विपाक अगर नहीं होता, रस धातु नहीं उत्पन्न होता, तो हमारा मज्जा धातु और क्या बोलते हैं कि पंच ज्ञानेंद्रिय और शिरो हृदय का पोषण नहीं होता। अगर हमने थोरली च्यू किया है तो सब लिंगुअली ये उसमें से शुगर जैसे कंटेंट जो ब्रेन को बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब रस धातु, आहार रस या मधुर रस वहां से एब्जॉर्ब होके हमारे शिरो हृदय को और पूरे पंच ज्ञानेंद्रियों को तुरंत तृप्त करता है। आप खाना खाते समय ये प्रयोग करिए कि बहुत अच्छे थोरली च्यू करिए वाटर होने तक, एंड देन ड्रिंक इट, एंड आफ्टर एवरी बाइट 1 सिप ऑफ वाटर ले लीजिए। 1 सिप ऑफ वाटर, हम पानी को ऐसा देखते कि जैसे वो विष है। वाटर कंटेन्स प्राणवायु और ऊर्जा वायु, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डाइजेस्ट आवर कुक्ड फूड। कुक्ड फूड की वजह से हमारे खाने में कार्बन की मात्रा इतनी बढ़ जाती है, और उस कार्बन की मात्रा की वजह से हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हमें उस कार्बन को डिसॉल्व करने के लिए और हमारे एसिड्स को डाइल्यूट करने के लिए, डाइल्यूशन के बाद ही हमारा जाठर अग्नि काम करता है। यानी डाइल्यूशन का मतलब है पूरी तरह से सिर्फ पानी। वाग्भट जी ने स्पष्ट रूप से अष्टांग हृदय में बताया है कि खाने के पहले पानी नहीं पीना चाहिए, खाने के बाद भी नहीं पीना चाहिए, लेकिन उन्होंने गुड हेल्थ के लिए, सड़ पातर या अच्छे हेल्थ के लिए उन्होंने बताया है कि आफ्टर एवरी बाइट 1 सिप ऑफ वाटर। कितना पानी पीना चाहिए? जैसे टंग, सिर्फ इतना छोटा सिप यानी 1 चम्मच पानी पीना चाहिए, ताकि वी रिप्लेस आवर सलाइवा, हमारे कार्बन को हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यानी प्राणवायु और ऊर्जा रूप वायु के साथ पूरे बॉडी में ये कर सके। तो कुक्ड फूड यानी पूरा षड्रसात्मक आहार, यानी पूरा खाने की थाली जो है उसमें दाल, चावल, घी, गुड़ और इमली का यानी कि दाल, ये सब खाने के शुरू में और अंत में भी वही खाना चाहिए, और इन बिटवीन दैट पूरा खाना खाना चाहिए, और वो बहुत शांति से। और खाना गिन के नहीं खाना चाहिए, मैं 2 रोटी खाता हूँ, मैं 1 ही रोटी खाता हूँ, मैं 5 रोटी खाता हूँ। डोंट डू दैट। यू हैव टू च्यू इट थोरोली, और आफ्टर एवरी बाइट 1 सिप ऑफ वाटर आप ये करेंगे तो आपका खाना
ढकार आएगी और आपका खाना पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आपको अच्छे से तृप्ति मिल जाएगी। आपका खाना सिर्फ खाना नहीं जाएगा अंदर, खाने के साथ आपका एसिड्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स सब यूटिलाइज किया जाएगा। तो आपके एसिडिटी एंड इंडाइजेशन से लेके हार्मोनल लेवल तक के प्रॉब्लम, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम रुक जाएंगे। इस तरह से ये पूरा खाना सप्त धातु पोषित करने के लिए 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे नहीं, पूरे 7 to 8 आवर्स लेता है। फिर आपको शाम को अच्छी तरह से भूख लगती है। इन बिटवीन दैट जितनी भी भूख लगती है, तो हमारे बॉडी फ्रेंडली जो फूड है दैट इज कॉल्ड फलाहार। आप फलाहार दिन भर कर सकते हैं। जब भूख है यू हैव टू टेक फ्रूट्स, और इवनिंग को पूरा खाना खा लीजिए जैसे हमने सुबह खाया, पेट भर के। इसको हम खाना खाने बोलते हैं। अगर ये खाना अगर हम खाते हैं तो धातु पोषण होता है। उससे थोड़ा ज्यादा खाते हैं, अध्ययन करते हैं या ज्यादा खाते हैं तो विच इज कन्वर्टेड इनटू रिमेनिंग मेद में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन बीमारियां पैदा नहीं होने देता। लेकिन हम और बार बार खाना खाएंगे, जैसे कि हमें कहा गया है कि एक भक्त यानी रसायन काल में अगर कोई पूरा खाना खाता है ऐसे ढंग से, तो दैट फूड इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू रसायन। उसे योगी कहा जाता है। रसायन एक वक्त 24 आवर्स में एक ही बार आपको खाना पूरे बॉडी को मिल जाएगा। दूसरी चीज है, रसायन काल के बाद दो भक्त सूर्योदय के साथ और सूर्यास्त के पूर्व हम अगर खाना खाते हैं ऐसे, तो हम उपभोगी बन जाते हैं। पहले योगी फिर उपभोगी। उपभोगी यानी हमने खाने के लिए कष्ट किया है, खाना कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, यानी खाना खाने के लिए, पैसा कमाने के लिए हमने कष्ट किए, उसका पूरा भोग लेना चाहिए। उसको उपभोगी यानी उप मीन्स इन्वॉल्वमेंट के साथ आप एंजॉय कर सकते, तो उसको उपभोगी कहते हैं। उस उपभोग से हमारे धातु का पोषण बहुत अच्छी तरह से होता है, तो हम उपभोगी बन जाते हैं। लेकिन हम सुबह भी अच्छा खाते हैं, आफ्टरनून भी दबा के खाते, रात को भी दबा के खाते, शाम को, तो उसको भोगी कहा जाता है। वो भी इतना बीमार नहीं होता, लेकिन उसमें प्योर मेदोरोग का संगठन होता है। और इन सब तरीकों से एक भक्त, द्वय भक्त, त्रय भक्त, इन 3 चीजों के अलावा जो लोग खाना खाते यानी मॉर्निंग टी, फिर ब्रेकफास्ट, फिर डिनर, लंच, फिर हाई टी, फिर हाई ब्रेकफास्ट और रात में लेट नाइट डिनर, तो ये जो है उसको रोगी कहा जाता है। वो दिन भर खाना बनाना और खाना खाना इसमें अटके रहते हैं, और वो लोग बहुत डर के खाना खाते हैं, ये परहेज करते हैं बहुत सारी चीजों को। मुझे एसिडिटी होती है तो मैं ये नहीं खाऊंगा, मुझे पेट फूलता है तो ये नहीं खाऊंगा। हमारा शास्त्र सात्म्य और असात्म्य वाला शास्त्र है। जो शास्त्र विष कन्या बना सकता है, विषों को पचा सकता है, वो शास्त्र अगर सही तरीके से, सही ढंग से खाना खाते हैं तो पूरे खाने को, अन्न को ब्रह्म बना देता है, और कोई भी चीज को पचाने को लायक बना देता है। उसमें अगर आप नेचुरल फार्मिंग का खाना खा रहे हैं, उसमें आप नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं और बहुत सारे एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आप मेदो रोग के परे बहुत ताकतवर बन के, आपका वेट, जो बॉडी वेट है, बहुत अच्छा वेट, जो आपको धातु पोषण वाला वेट है, वो बहुत अच्छा रहता है। इसमें आपके टीथ, आपके बाल और आपकी पूरे अस्थि धातु की पुष्टि होती है, और उसमें लुब्रिकेशन के लिए यानी अच्छी तरह से मेद का भी निर्माण होता है, ताकि आप पोषित रहते हैं। यानी आप अस्थिसार बन सकते हैं, मांससार बन सकते हैं, आप मज्जासार और थोड़ा सा मेदसार भी बनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अभी खाना खाने का मतलब आप समझ चुके हैं। अगर आप इस तरीके से नहीं खाना खाते हैं तो आप कितना भी अच्छा खाना खाओ, वो खाना न खाने की ही बराबर है। इसलिए मैं आपको सबको आह्वान करना चाहता हूं कि आपके घर में आप ऐसा खाना, अगर मॉर्निंग में सब मिल के पंगत यानी कि पूरी तरीके से एक जैसा खाना
अगर पूरी फैमिली खाती है तो उनके विचार भी एक जैसे बनते हैं और किचन पूरी तरह से दिन भर जो चलता है वो भी बंद हो जाता है। उसी खाने को बच्चों को अलाउ करना चाहिए, 2 बार खाओ 3 बार खाओ, जैसे भी चाहे वैसे वो खा सकते हैं, लाइक दैट। ये हो गई खाने की बात। अगर ऐसे नहीं खाते हैं, इस अन्न सेवन के ऊपर ही हमारा पूरी तरह से औषधि सेवन काल रहता है। कोई भी दवाई चल रही हो तो खाना ऐसा ही खाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं खाते तो एक तो खाने का अजीर्ण है, खाने का सैचुरेशन है, अलोंग विद दैट खाने में जो पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर है उसका सैचुरेशन है, अलोंग विद हम अगर अन्न सेवन काल को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं और हम औषधि सेवन काल करते हैं तो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आयुर्वेदिक दवाइयों का भी अजीर्ण होता है। तो बाकी केमिकल वाली मॉडर्न मेडिसिन का क्या होता होगा आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए हम रोज इतनी गलतियां करके रोज शुगर बढ़ा रहे, रोज लिपिड्स बढ़ा रहे, रोज यानी कि माल नरिशमेंट बना रहे हैं और यहाँ दवाई खा रहे हैं। ये क्यों नहीं? रोज आंसर डायबिटीज क्यों नहीं जा रहा है? ब्लड प्रेशर क्यों नहीं कम हो रहा है? मेटास्टासिस क्यों हो रहा है? इन सब चीजों को हम रोज गलतियों से भर रहे हैं और आज गलतियां करते और कल एक्सरसाइज करते, कल मेडिसिन लेते हैं, फिर गलती करते, फिर ये चेन एक चक्रव्यूह बन चुका है। इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए एक तो हमें चाहिए पूरी तरह से खाना खाना चाहिए रोज। और खाना खाने का मतलब अभी आपने देखा है, सुना है, ठीक है। तो मैं अभी आपके कुछ क्वेश्चन या कुछ डिस्कशन होगा तो उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूँ। बहुत कम समय होने के कारण मैंने बहुत फास्ट लिया है। ये शास्त्रोक्त सब्जेक्ट लैंग्वेज में लेने से मैंने वो बोली भाषा यानी कि सिंपल टंग लैंग्वेज में किया है। तो मैडम प्लीज कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप बताइए। Yes, sir. Yes, yes. Thank you, sir. Very simply, but I think it's an important message. So I would like to invite all the doctors to ask the questions. Yes, please. One question is there from Dr. Usha. Can we drink buttermilk instead of water, sir? बटर मिल्क अगर आपने फ्रेश कर्ड का बनाया है, यानी रात को दही लगाया और सुबह फ्रेश कर्ड बनाया है, तो उस फ्रेश कर्ड में अगर आप मेडिसिन पे हो तो बॉइल्ड वाटर डाल के बटर मिल्क करिए। अगर आप मेडिसिन पे नहीं हो, कोई भी वर्ल्ड का मेडिसिन आप खा रहे हैं, तो यू हैव टू टेक बॉइल्ड वाटर कंपलसरी, नहीं तो मेडिसिन का अजीर्ण बहुत ही ज्यादा हो जाता है, वो ध्यान में रखो। तो बटर मिल्क आप सुबह के खाने में, और बटर मिल्क सच में कैसा होना चाहिए, लस्सी जैसा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। बटर मिल्क पानी से थोड़ा ऊपर और लस्सी से बहुत ज्यादा नीचे होना चाहिए। अगर आपको और अच्छे रिजल्ट चाहिए तो अलॉन्ग विथ बटर मिल्क खाने में लेना चाहिए आफ्टर एवरी बाइट। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने सही कहा। और एक ये है डॉक्टर सरिता मैम का, वुडंट ड्रिंकिंग वाटर विथ एवरी बाइट कॉज जठराग्नि मांद्य। बिल्कुल, ये भी बहुत ही मतलब मुझे लगता है बड़ा ही एक विषय है, गहनी विषय है, चिंतनीय विषय है। पानी कितना पीना चाहिए? लाइक हर बाइट के साथ हम लोग पानी पीते हैं तो अग्निमांद्य तो नहीं हो जाएगा? नहीं, इसमें क्या है, अग्नि संदुक्षण के लिए पानी का यूज किया जाता है। जैसे कि एसिड्स जो जठराग्नि है which is work in diluted form, और खाने में क्षार है, तेल है, खाने में कार्बन मात्रा ज्यादा होती है, और उस कार्बन मात्रा को अगर हम डाइल्यूट नहीं करते हैं तो एसिड प्लस यानी जठराग्नि प्लस कार्बन इज इक्वल टू ऐश बन जाता है। उसमें हमें पानी बहुत ही पीना ही नहीं है। एक्चुअली यू हैव टू chew your food and drink your food, ऐसे मैंने बोला है। and chew your water को खाना चाहिए और पानी को पीना चाहिए। सॉरी, पानी को खाना चाहिए और वाटर को ये करना चाहिए, जैसे वाटर को च्यू करना चाहिए, पानी को खाना चाहिए और खाने को पीना चाहिए, ऐसे बोल रहा हूँ। और पानी कितना होना चाहिए? You just rinse your mouth,
यानी एक चम्मच पानी होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, बिल्कुल ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं। ओके, यस सर, डेफिनेटली, बिल्कुल। यस और सर, यस एक चीज बताना चाहता हूँ आपका, हम पानी के बिना खाना बना सकते हैं? पानी के बिना कोई भी चीज असंभव है। इसलिए पानी एकदम सही ढंग से, अगर सही ढंग से हम लेते हैं, एक मिनट, आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं डॉक्टर्स, मैंने हाँ हाँ यस यस, डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं इफ देयर आर एनी सच क्वेश्चंस। यस मैम, यस यस, हाँ प्लीज। इनफैक्ट सर इज एक्चुअली राइट मैडम। नमस्ते सर, बहुत ही अच्छा लगा कि जो आप बता रहे थे कि इन बिटवीन योर यानी कि जब खाना खाते समय थोड़ा थोड़ा पानी ले रहे हैं, दैट इज एब्सोल्युटली शास्त्रोक्त। ड्रिंकिंग वाटर बिफोर एंड आफ्टर इज मना है, बट खाने के बीच बीच में उसको भोजन को बिल्कुल पचाने वाला, जैसे वो ड्रिंक योर फूड वैसा बनाने के लिए बिल्कुल शास्त्रोक्त है, वो तो लिखे हुआ है कि बीच बीच में पानी को लेना चाहिए। तो थैंक यू सर, आपका बहुत ही अच्छा था और इतना प्रैक्टिकली एक्सप्लेन था। जो ये 7 आप बता रहे थे वो लग रहा था बिल्कुल एकदम यही हेतु होते ही है, और बहुत डिफिकल्ट है कि आज के जमाने में लोग बात इसको फॉलो नहीं कर पाते कि जब मैक्सिमम भूख लगी हो तो सच बोलते हैं वो जिम में होते हैं उस समय, या वॉक कर रहे होते हैं। शाम को भी ऐसे होता है कि सूर्य आज तो हो रहा है और उसके बाद भी भोजन हो रहा है, तो ये सारी चीजें बहुत प्रॉब्लम देती है। और कई बार सर ऐसा होता है कि पेशेंट जो है वो, मतलब व्यक्ति जो है वो भोजन पूरा कर रहा है फिर भी धातु जो है उसके नहीं हो रहे, तो स्रोत तो रोज जो जन्य संप्राप्ति है वो भी यही कारण होता होगा कि पेशेंट जो व्यक्ति है वो सही समय पर सही तरीके से भोजन नहीं कर रहा, उसको पता ही नहीं कि ऐसा हो क्यों रहा है। हाँ राइट, हेलो जी सर। हाँ 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 राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और क्वेश्चन क्या है और आपका? थोड़ा सा मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, जैसे मैं भी पढ़ती हूँ बट स्टिल प्रकृति के हिसाब से हमें किस प्रकार से खाना चाहिए? दोष प्रकृति, देह प्रकृति। हाँ, मैंने क्या बोला है आपको कि आप खाने को हाँ, कफ प्रकृति में ऐसे बताया गया है कि जब भूख लगे और प्यास लगे तभी वो खाए या पिए। बाकी तो पित्त प्रकृति में अग्नि तीक्ष्ण होती है तो वो बार बार खाने को, मतलब उसका मन भी करता है, उसको एडवाइस भी किया जाता है। तो ये उसके आंसर उसमें ही छुपे हैं बेसिकली। yes. उसके आंसर उसमें, जैसे कि आपको भूख लगती है, जोर से भूख लगती है, तब खाना खाना चाहिए। और मैंने क्या बोला है कि पहली भूख को आप गलत तरीके से मत मिटाओ। अगर आप पहली भूख को बहुत अच्छे तरीके से खाते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से खाते हैं, तो आपकी दूसरी जो भूख रहती है वो स्मॉल क्वांटिटी रहती है, विच इज रिलीव्ड बाय फ्रूट्स ओनली। वो फलों से बहुत अच्छे से ये होते हैं। और प्यास लगने पर पानी पीना चाहिए बाद में। खाना और पान, खाना खाने का मतलब है खाना यानी अन्न और द्रव, ये दोनों का सही तरीके से मिलन होना चाहिए। जैसे ग्रंथों ने घन पार्ट आधा बताया है, 1/4 पार्ट पानी बताया, और हम अच्छी तरह से च्यू करने के बाद, हर निवाले के बाद एक घूंट पानी पीते हैं तो ढकार जब आती है तो 1/4 पार्ट अपने आप ये वायु संचलन के लिए बॉडी में अपने आप ये हो जाता है। उसमें हमें ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं होती। तो जो समझो वो पित्त का पर्सन है तो उसको बार बार बाद में, उसके बाद जब उसका पूरी तरह से धातु पोषण होने के बाद उसको भूख लगती है तो आफ्टरनून में उसको वो ज्यादा फल खाए। कब प्रवृत्ति के पेशेंट को कम फल खाना है, यानी कि जितनी भूख है उतने फल खाए। और शाम को 5 बजे से 4 बजे से लेके सूर्यास्त के पहले पूरा खाना, यानी दूसरी एपेटाइट अच्छी आती है तो खाना चाहिए। अभी देखिए मेरा खाना अभी शुरू होने वाला है। मैं कब प्रकृति का आदमी हूँ, मुझे लेट भूख लगता है वैसे, फिर भी ठीक है। क्वेश्चन इज देयर अगेन, एट व्हाट टाइम शुड वी टेक द फर्स्ट मील ऑफ द डे? फर्स्ट मील ऑफ द डे विथ फर्स्ट एपेटाइट। एंड फर्स्ट एपेटाइट, आप अगर चाय नहीं पीती, गुनगुना पानी नहीं पीती, प्यास है तो पानी पीना चाहिए सुबह भी, या कुछ नींबू पानी
या ऐसे कोई भी नाटक हम अगर सुबह नहीं करते हैं तो आपको सुबह जो भूख लगती है विच इज फर्स्ट एपेटाइट, वो अग्नि तीक्ष्ण होने की राह देखनी चाहिए। वो रहता है तकरीबन 6:32। हमारे गांव में आज भी लोग 6:30 मॉर्निंग में खाना खाते हैं, और बहुत सारे शिफ्ट ड्यूटी के पेशेंट है। वो मेरे पेशेंट बहुत सालों से 6:30 6 o'clock खाना करके मॉर्निंग इसके लिए चले जाते हैं। ऐसा है, ठीक है। बिल्कुल, तो बिल्कुल सर, हाँ, आपको समझना चाहिए कि 7 बजे 8 बजे 9 बजे 9 बजे इज द लास्ट, यानी कि मधुर रस, मधुर विपाक होना चाहिए। मधुर विपाक के कब कंस्ट्रक्टिव कप का निर्माण कब होए? अगर हम पित्त काल में खाना खाते हैं तो रस धातु की उत्पत्ति नहीं हो जाएगी, डायरेक्ट हमारा एसिडिटी का ही लक्षण दिखेगा। ओके, यस सर, बिल्कुल वेरी नाइस थॉट सर। और बिल्कुल आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है। आज भी गांव में लोग सवेरे 8 बजे नाश्ता मतलब खाना जो भी है पका हुआ वो खा लेते हैं और काम पर चले जाते हैं। तो बिल्कुल, और उनकी सेहत तो हम लोग देखते ही है आज के परिप्रेक्ष्य में। तो रियली नाइस थॉट सर, थैंक यू वेरी मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द होल टीम ऑफ योर ग्राम। और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमें एक बार देखना है, बट जरूर हम लोग प्लान करेंगे एक बार पैंडेमिक चला जाए तो। सो थैंक यू वेरी मच। मोबाइल पे दिखा रहे हैं मैडम, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल आप बिल्कुल थोड़ा जाना 100 ग्राम है देखना चाहते हैं? 100 ग्राम देखना चाहते हैं आप? हाँ बताइए। ये देखिए यहाँ आयुर्वेद हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है। ये पूरी तरह से आयुर्वेद हॉस्पिटल का निर्माण है। यहाँ 5 पंचकर्म यूनिट है और एडमिट पेशेंट के लिए बहुत अच्छी तरह से सुविधाएं हैं। यहाँ की मिट्टी से नीचे गोबर से जमीन बनाई जाएगी और ऊपर आप देख रहे हैं मैंगलोर टाइल्स है। ये खास पेशेंट के लिए कुटी बनाई गई है। ये वेल हाउस है, वेल के ऊपर है। जैसे आप देखेंगे ये कुआं है और कुएं के ऊपर ये बनाया है। यहाँ आगे देखिए कमल कुंड है और बहुत सारी डेवलपमेंट चल रही है। आपको एकदम फास्ट जाके शेत घर यानी कि प्रोडक्शन हाउस और खाना बनाने की जगह, ये सब मैं आपको दिखाता हूँ अगर समय है 2 मिनट। यस सर, बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली, इट्स ये इंटरेस्टिंग। देखिए ये पूरा स्पाइस गार्डन है। यहाँ बहुत सारी स्पाइसेस है। ये पूरी तरह से नेचुरल फार्मिंग से किया जाता है। यहाँ कोई भी इसका यूज नहीं किया जाता, यानी कोई भी फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स आज तक एक बार भी नहीं यूज किया गया। ये देखिए ये पूरा स्पाइस गार्डन है। यहाँ बहुत सारे बिटल लीव्स से लेके हर चीजें यहाँ है। यहाँ ये देखिए ये खपली गेहूं बोलते हैं ना, उसकी खेती है। उसमें गावटी लहसुन है, गार्लिक है। उसमें पुंड्या करके जो पुराने जमाने में यानी शुगर केन का आया है ना, शुगर केन कौन सा यूज करना चाहिए वो उसमें लगाया है, ब्लैक कलर का। यस सर, एक शुगर में आता है ना वो। यस यस, हाँ 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 हाँ, ये यहाँ लगाया है और उसका हम गुड़ भी बनाते हैं। अभी देखिए मैं आपको गुरुकुल की तरफ ले जा रहा हूँ। ये अपना गुरुकुल है यहाँ। ये देखिए ये गुरुकुल है। यहाँ पूरी तरह से आयुर्वेदिक दवाइयाँ से लेके हर चीज यहाँ बनाई जाती है। ये गुरुकुल है। यहाँ खान पान की पूरी व्यवस्था और शिष्य गणों के लिए आयुर्वेद पढ़ने के लिए यहाँ जगह बनाई गई है, ताकि वो यहाँ रह के 24/7 रह के पूरी तरह से ये करें। यहाँ गाय का पूरा, गाय हमारे देसी गाय है यहाँ, आप देख सकते हैं। ये देसी गाय है। ये हमारी नीली गाय है। ये पारू है। वहाँ नंदी भी है, उसका नाम नंदू है। नंदिनी, हरनी, ये सब गायें है यहाँ, ठीक है। ये पूरे रूम्स वगैरह, सीड बैंक और पूरी तरह से अभी काम चल रहा है, फाइनल स्टेज पे है। यहाँ सीड बैंक के लिए ये देखिए सीड बैंक के लिए ये सब चीजें हैं यहाँ ऐसे। और यहाँ गुड़ बनाने के लिए किचन बनाया गया है, ऐसा है।
ये सब गुड़ बनाने की, और यहाँ बॉयलर वगैरह सब कुछ है। यहाँ अभी ये फाइनल स्टेज पे काम चल रहा है। और पीछे सबसे इम्पोर्टेंट पीने के पानी के लिए प्योर, एकदम प्योर वाटर हमारा सोर्स मिला है। उसके लिए पीने के पानी की कुआं भी है, और परस बाग है, सब्जियां उगाई गई है यहाँ बहुत सारी जगह पे। और ये स्टाफ क्वार्टर्स भी एकदम नेचुरली किया है। ये सब यहाँ है। और ये शायद फरवरी या मार्च में गुड़ी पाड़वा के पहले ओपन हो जाएगा सबके लिए। वेरी नाइस सर, सब्जियों का प्लाट। यस यस यस, बिल्कुल, वेरी नाइस सर, बेस्ट, रियली अप्रिशिएबल। सो चले आज इस बहाने हमको ये देखने को भी मिला है सभी हमारे वैद्यों को आज दर्पण के। सो थैंक यू वेरी मच सर। मैं एक दिन चाह रही थी आपको कि बोलूं कि एक बार दिखाइएगा करके, बट अच्छा हुआ आज लेट हो गए तो हमने देखने को भी मिला। सो यस सर, थैंक यू वेरी मच। सो वी आर एट द एंड ऑफ द सेशन ऑफ दिस वेबिनार, और बिल्कुल बहुत ही अच्छा लग रहा है। So now for vote of thanks, I would like to invite Dr. Navin Joshi sir. Yes. Thank you, Yerme ji. This is a very beautiful, very nicely organized program. I am thankful to Santosh Suryawanshi ji for so beautiful visuals. I just watched in Facebook as well as in the Zoom. I am thankful to all the participants who are present here and all the speakers. So that, and I wish that they in future also they will give their knowledge on our platform. Thank you, thanks a lot to Vd Shilpa Yerme ji, as well as the other hosts, co-hosts, as well as all the participants. Thank you. Yes sir, thank you very much all the speakers once again. और जैसे ही हमें समय मिल जाता है तो ओबेसिटी के ऊपर भी हम लोग एक बुक हम लोग निकालेंगे। बिल्कुल आप सभी स्पीकर्स का भी इसमें कंट्रीब्यूशन होगा। जो भी लोग अपना योगदान देना चाहते हैं वो अपने अपने समय के हिसाब से या अपने अपने टॉपिक के हिसाब से भी अपने आर्टिकल्स, चैप्टर्स भेज सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग कई सारे वेबिनार्स के यहाँ पर इसको ये कर रहे हैं, तो इस हिसाब से ये भी हमारा होगा थोड़े दिनों में, थोड़े समय में। सो थैंक यू वेरी मच ऑल। धन्यवाद सभी का, आभार। Thank you, Shilpa ma'am.